साउंड नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। हेलो। हाँ अब आया। हेलो। हाँ
बोलिए। हेलो 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 Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी हेलो 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 This presentation में हेलो चालू करूँ आवाज बंद है नहीं तो Hello. Hello. It is not the beauty of building you should look at, it's the construction of the foundation that will stand the test of time. Hadar, Abhinandan, Abhar, Namaskar, hello, and very good morning to all of you. मैं ममता मानकर आज मुझे सौभाग्य जी सर It is not the beauty of building you should look at, it's the construction of the foundation that will stand the test of time. Adar, Abhinandan, Abhar, Namaskar, and hello, good morning to all of you. मैं ममता मानकर मुझे आज सौभाग्य मिला है आप सभी के बीच इस वेबिनार को संबोधित करने का. Today we all gathered here to celebrate 36th Foundation Day celebration of Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya. कार्यक्रम की शुरुआत एक कोट से करना चाहूंगी कि मेरा भारत महान है क्योंकि मेरे देश की पहचान किसान है. जी हाँ, और इसी समय की खूबसूरती और ताकत के साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपना 36वां स्थापना दिवस मना रहा है. आप सभी को बधाई देते हुए मैं माननीय कुलपति सर, अतिथि कुलपति सर, डीन्स, एचओडी, प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट सभी का स्वागत करती हूँ. कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं डॉक्टर एमपी ठाकुर सर से आग्रह करती हूँ कि वे माननीय कुलपति सर डॉक्टर एस सेंगर सर जी का पुष्पगुच्छ और शॉल से स्वागत करें.
मैं पुनः डॉक्टर एमपी ठाकुर सर से आग्रह करती हूँ कि वे महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर आर एस कुरेल सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर आर आर सक्सेना सर से निवेदन है कि वे डॉक्टर एमपी ठाकुर डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सर का पुष्पगुच्छ व सॉल से स्वागत करें। रजिस्ट्रार सर श्री जी के निर्माण जी के स्वागत के लिए मैं सक्सेना सर से निवेदन करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ और शॉल से सर का स्वागत करें। मैं अभिजीत कौशिक सर से आग्रह करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ व मोमेंटो से आरपीएस चौहान सर का स्वागत करें। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी सर से निवेदन है कि वे डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज डॉक्टर आर के वाजपेयी सर का पुष्पगुच्छ व शॉल से स्वागत करें। मैं पुनः डॉक्टर वी के त्रिपाठी सर से आग्रह करती हूं कि वे डायरेक्टर एंड रिसर्च फॉर्म आईजीकेवी डॉक्टर पी के चंद्राकर सर का स्वागत करें। सक्सेना सर से आग्रह है कि वे डॉक्टर जी के श्रीवास्तव सर का पुष्पगुच्छ व शॉल से स्वागत करें। अभिजीत सर से निवेदन है कि वे एग्री इंजीनियरिंग कॉलेज डीन डॉक्टर विनय पांडे सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सक्सेना सर से निवेदन करूंगी कि वे डीन फूड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एमपी त्रिपाठी सर का पुष्पगुच्छ व शॉल से स्वागत करें। आज का वेबिनार 2 थीम पर निर्धारित किया गया है, जिसमें थीम 1 है इज रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस एंड इमर्जिंग इश्यूज ऑफ आईजीकेवी और दूसरा थीम है मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर रवि सक्सेना सर को मंच में आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Mamta. Good morning to all of you. So this program, already almost all the participants have joined this program, and moreover for the students, for all employees, and for all this, officers, we have created a YouTube live link. So they are watching this. Near about 13,000 people are attending this. तो दिस प्रोग्राम टेक्निकल प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर एमपी ठाकुर सर को फॉर वेलकम एड्रेस। Good morning to all. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to all the participants on the auspicious occasion of 36th Foundation Day of Indira Gandhi Agriculture University, Raipur. It was a great honor for all of us to invite the Honorable Governor and Chancellor of Agriculture University, Ms. Ansuya Uikeji, but somehow she could not make it as she was out from Raipur. We are extremely blessed with the gracious virtual presence of Sri Ravin Chaubeji, Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Government of Chhattisgarh, for accepting our request, invitation, and conveying his online message on completion of 35 years of this university. Sir, we feel greatly honored to have this morning the head of the family and the director, the Honorable Vice Chancellor,
and Director Instruction and Control of Examination, Dr. S.S. Sengar Sahab, who is gracing this event of 36th Foundation Day celebration as chief guest of the function. And under his able leadership and foresighted vision, friends, we have organized several programs like workshop on Chhattisgarh education policy, which was recently held on 1st of January, and mega exhibition was organized. Vishwavidyalaya Aapke Dwar, World Soil Health Day, National Youth Day, within short period of time. Sir, we also welcome Professor R.S. Kuril Sahab, who is the guest of honor during this function, and he is the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University of Horticulture and Forestry. We welcome you, sir, for your gracious presence in this program. I wish to take this opportunity to welcome Sri Chike Nirmamji, who is our registrar, Comptroller Sri R.P.S. Chauhanji, all the directors, deans of constituent colleges, HODs, senior scientists, heads of the Krishi Vigyan Kendras, in charge of the research stations, all the professors, teachers, students, media persons, supporting staff for participating in the 36th Foundation Day of this university, virtually as well as in offline mode. Sir, today we are celebrating 36th Foundation Day of our university. And when we go back to see what this university, what for this university was established on 20th of January 1987, then certainly one has to feel happy that this university, since its inception, is doing well, and I think better than other universities of the country. Sir, before 2016-17, there was no mechanism to judge who is better than others. But thanks to Indian Council of Agriculture Research, that they have developed the mechanism by which now it is possible to judge the overall performance of not only SAUs in the country, but even ICR organizations, even IRIs deemed to be fit universities in the country. And I think we can say that in the last 5 years, our All India ranking varied from 10th to 23rd position in the country among all the agriculture universities, ICR organizations, and central agriculture universities of the country. And even we have performed excellently well than even our parent organization like JNKVB and RVSKVB. And we have really surpassed many of the old agriculture universities of the country. Sir, in the last 35 years, we developed 3 centers of excellence: world-class rice research laboratory, NABL accredited laboratory, modern high-tech agriculture museum, good agriculture college building, good infrastructural facilities, lab facilities, hostel facilities, internet connectivity, IGMIS, etc. But still, I feel very strongly that the infrastructural facilities and the manpower in upcoming colleges needs a lot of improvements. Number of colleges, certainly we have enhanced from 1 to 33, KVKs from 1 to 27, research station from 4 to 8, and manpower enhancement is also there. There is no doubt about it. And to review the progress, what we have done in the last 2 years, a webinar is being organized to review of progress and emerging issues of Indira Gandhi Agriculture University, which has been done in the last 2 years, that is 2021 and 21-22, where some deans, researchers, senior scientists come heads from KVKs, farm activities, financial achievements shall be presented by the concerned officials in a virtual as well as offline mode to make the university authority aware about the progress being made and the difficulties faced to achieve the set target. I once again welcome you all to this event of 36th Foundation Day. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I call upon Dr. R.K.S. Tiwari, sir, Dean, College of Agriculture and Research Station, Bilaspur, for presentation, please.
Okay, Dr. R.K. Tiwari, sir, please. हाँ सर, शुरू करिए. हाँ, अच्छा ठीक है सर, आप चलिए. आपके तरफ से बंद है, हमारी तरफ से खुला हुआ है. आपकी तरफ देखिए. हाँ, सुन रहा हूँ. आवाज नहीं आई. आवाज आपको भेजने तो लोड हो गया. दिख रहा. हाँ, आवाज नहीं आ रही है. आवाज बोलिए. हाँ, आपका माइक खोलिए. म्यूट तो नहीं अंदर. सुन रहा हूँ. अब चालू है. अब चालू हो गई आपकी. बोलिए. गुड मॉर्निंग on behalf of 36 Foundation Vidyalaya, I congratulate you. फिर बंद हो गई है. किसी को कोई बंद कर रहा है क्या? फोन ऑपरेट कर रहा था. देखकर देखिए. हेलो. आवाज नहीं आ रही. हम जरी खोला ना, तीन कुछ खोला था. हाँ, नहीं आ रही. अभी तो आई थी. हाँ, अभी तो आई थी ना. बोलो. अभी खोला था ना आपने. हाँ, नहीं आ रही. दो आवाज इको हो रही है ना. इको दो तो नहीं चला रखते हैं. एक चलाओ ना. इनको नहीं आ रही. दोनों खोले. एक को चलाइए. हाँ, तो दूसरा खोलिए. वहां से बंद कर रखा है आपने. स्क्रीन दिख रही है आपकी. मतलब वॉइस क्लिप चला हुआ. माइक बंद है ना आपका. लाल वाला बटन सुनिए ना. चलिए, आप जब तक तैयार हो जाए. जितेंद्र सिंह, मैं आपको बात करता हूँ. एक मिनट हो गया. हाँ, आई आवाज आ रही. हाँ, बोलिए. ठीक है. ठीक है. हाँ, बोलिए सर. इसमें है क्या? हेलो. हाँ, ठीक है. आ रही. हेलो, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है. अभी आ रही है. Okay. So, before we start up the presentation of the progress report of agriculture colleges across the Chhattisgarh state, let me express our sincere thanks on the behalf of Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya to the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Honorable Agriculture Minister of Chhattisgarh State Government, towards their commitment for the expansion of agriculture education in Chhattisgarh. As we know, agriculture is counted as the chief occupation of the state, and 80% of the population live in rural areas is dependent on the agriculture.
And it is happy to know that in the growth of agriculture sector, growth in agriculture sector has played a significant role in accelerating the agriculture growth. Now, if you see the expansion of the agriculture education in the Chhattisgarh, our university had only one college in 1987, and thereafter the three colleges were started in Ambikapur, Jagdalpur, and Bilaspur in 2001, and later on there were opening of the college in different districts of Chhattisgarh in 2007, 2011, 2012. In Kawarda, Janjgir, Champa, Bhattapara, and then again in 2013, 5 colleges were started in different districts of the Chhattisgarh, like Rajnandgaon, Raigad, Kuria, and 11 colleges again, which was the a big achievement of the Chhattisgarh state. 11 colleges were started between 2018 and 2020 in different parts of the Chhattisgarh state. Today, we have 22 constituent agriculture colleges with a strong network of agriculture education, and that will help in developing the agriculture graduates and postgraduates in the near future, and which will enhance the economy of the Chhattisgarh state. Now, if you see the present status of the infrastructures in constituent colleges of agriculture, that we have got the satisfactory work progress in agriculture building. About 59% of the colleges, they have their own building with infrastructures, equipments, and furnitures. Whereas the government has provided, Chhattisgarh government has provided, the government premises for running of those colleges where the buildings construction works are going on. And those are the 8 colleges where soon we are going to get the new agriculture college building. Now, we have got tremendous progress in the strengthening the education and the quality education providing to the students. And this is the reflection that we have got the 15 of the college, that is 68% colleges have been accredited by the ICR, and remaining colleges, now we are in the process to get the accreditation from the ICR. Now, if you see the strength of the UG students in different agriculture colleges in these 2 years, so there was increasing trend of the students, and that is also with the increase of the seats in different agriculture colleges, and that we have got more number of students in agriculture. And of course, there is a significant increase in the participation of girls students among the student boys and girls ratio. So still we have to increase the intake of the girls students in agriculture, so that can go and reach to the parallel 1:1 rather than 2:1. Now, if you see the PG students, there also we have increased number of the students from 576 to 689, and then here there is a shortfall of the faculty members, and that is only due to the the new colleges where the college post has been set up has been given by the government, and we are in the process of making the filling of those posts in different new colleges, and still we have some lacking in the faculty members, and as well as non-technical staff members in different colleges. Now, if you come to the major achievement, so many milestone achievements of different colleges they have achieved during 2021 and 22, and the main achievement is that 47 students they have got admission in PG courses through ICR, JRF, and more than 60 students they have got admission in different universities through the various exams. Then we have also some of the
achievements, special achievements. One of our students, Ms. Dina Thankalchan of Bilaspur College, she got admission in Germany. As like Priyanka Patel, who got the admission in IRI in New Delhi. So these are the some major achievements. Like 16 colleges, we have a smart classroom, which are equipped with the modern teaching facilities, Wi-Fi facilities, and we are providing quality education to the students. Then, apart of the teaching, different colleges, since they are the research station also, different colleges are also engaging themselves, the faculty members engage themselves for conducting various type of activities. We have a plant health clinic, high-tech nursery, infrastructure, and laboratories equipments for mushroom and production and fruit processing, which have been sanctioned by RKY and HME different colleges. We have got 7 experiential learning units, which have been funded by ICR and which are in operation in different agriculture colleges. I have got the data from the 2 colleges, and from these 2 colleges, we have generated nearly 6.07 lakhs revenue by 2 LP, which are being operational in Bilaspur and Kavarda. Then there was active participation of the faculty members in different colleges, involvement of the teaching faculty in the various research and extension programs. University funded research are being conducted by those teaching faculties. Training are being organized to the farmers by the teaching community. And then the more important achievement is the significant contribution of MSc and PhD student research in the agriculture research. Alone from the Bilaspur, we have got nearly 250 citations in 2021 and 22, and that is the major achievement. And perhaps the Raipur has got many more citations of the student PG research. These are the some infrastructures which we have developed in different and various colleges. Some emerging issues which should be highlighted, and these should be taken for the future course of the action. And the first one, the important one, is the more than 59% post of the teachers are vacant till date, and there is an immense need to fill the post and strengthening the education system. The faculty ratio, of course, we do not have, higher ratio than the national average, which should also be look after that. Then we need to go for strengthening our education, providing coaching and counseling to the students, so that more percentage of UG and PG students, they should go outside of the university for post-graduation and PhD programs. Then experiential learning units are the most important one, which we require with the support of either from the ICR or from the state governments, as well as the incubation centers. Though at the Raipur, we do have a very good system of these experiential learning units and incubation centers. But for the other colleges, we need to have the same types of the model as we established in the Raipur. Then, of course, in all the new colleges, we require hostels, guest house, gymnasium, indoor stadium, canteens, and vehicles for the different colleges, furnitures and vehicles, some of the renovation work, some of the basic works are also required to strengthen the college and to strengthen the quality education. Then the 2 points which I need to submit in this progress report, that we should also take initiative for the inclusion of the basic courses as we are going in the next new education policy, the basic science courses in our system. And there is immense need for the inclusion of agriculture as a core course in all secondary school of Chhattisgarh state, to enhance the participation of the students in agricultural education, as well as they will also get the job opportunity in various schools. Thank you very much. Thank you so much, sir.
for nice presentation. Next, I will call Dr. Jitendra Singh, Dean, College of Horticulture, Rajnandgaon. Kindly upload your presentation and start one. आप अपना तिवारी साहब अपना प्रेजेंटेशन को डाउन कर लीजिए. Thank you, Dr. Saxena. Honorable Vice Chancellor IGKV Raipur, Honorable Vice Chancellor Mahatma Gandhi Horticulture and Forestry University Raipur, Patan, Chhattisgarh, respected deans, directors, registrar, comptroller, faculty members, and students. I am going to present the progress of Horticulture College and emerging issues. This is the progress report of old constituent colleges, that is College of Horticulture Rajnandgaon and College of Horticulture Jagdalpur. Both colleges have been accredited for UG degree program during 2019 and 20. About the strength of UG and PG students, it is summarized here, and total number of students completed their BSc and MSc degree program are also mentioned here. Total 2 students from College of Horticulture Rajnandgaon got placement during 2021 and 1 student got placement during 22 and this current year. 11 research papers have been published by the students of PG degree program from College of Horticulture Rajnandgaon during last year, and during this year total 6 research papers were published by our PG students. A total 11 students qualified NET examination organized by ASRV New Delhi during both the year. Both the college students actively involved in NCC and NSS activities and received BC certificates from NCC, and this is the summary of the NCC certificate received by the students. The College of Horticulture Rajnandgaon also produced breeder seed of coriander variety Sri Chandrasni Dhania 2 and generated revenue 1.5 lakh during last year, and also produced quality planting material of turmeric and fenugreek, and college received an amount of 20 lakhs under Manrega for farm development and production of quality planting material of horticultural crops. The Rajnandgaon College Dean has been awarded with Fellowship of Indian Society of Vegetable Science for the significant contribution in the field of vegetable science. Sri Santosh Kumar Sahu, Assistant Professor, was awarded Associate NCC Officer with Lieutenant rank in Senior Division. Dr. Madhuri Gautam, Assistant Librarian, got Best Paper Award in International Conference of Agriculture Librarians. About progress of College of Horticulture Jagdalpur, the college received an handsome amount of 1.6 crore from District Mining Fund for implementation of a fruit-based coffee production system for income generation of tribals of Bastar.
And college also produced quality seed of turmeric, that is 6.5 quintal. Production of quality planting material, college also produced 37,696 number of different horticulture crop saplings. One of the scientists, Dr. K.P. Singh, assistant professor, was also awarded associate NCC officer with lieutenant rank in senior division of NCC. This is the progress report of new constituents colleges of our university. The all 5 colleges, the students admitted during both the years are summarized here. About newly established horticulture colleges, land allotment and demarcation work has been completed in almost all the colleges. Budget has been also sanctioned for construction of college building and hostels. And this is the present scenario of newly established horticulture colleges. All are working in temporary structures. We have 4 affiliated colleges, that is private colleges, and this is the strength of students admitted, passed out during both the year. All affiliated colleges have their own buildings, and this is the present scenario of all private colleges. All 4 private colleges have their own buildings. Emerging issues for all constituents and affiliated college. All 5 new constituent horticulture colleges requires their own building and boys and girls hostels, infrastructures like canteen, guest house, residential quarter, hostel boundaries, auditorium, indoor stadium, gymnasium, bus shed, implement shed, vehicle shed, net, godown, a high-tech nursery, threshing floor and playground are very necessary. Lack of furniture, benches, etc. Transport facility, especially for newly established college, are required. Self-study report for College of Horticulture, Rajnathgaon, have been submitted for PG accreditation to ICR, and it needs to be pursued. Teaching manpower should be strengthened as per ICR norms. All constituents and private horticulture colleges are performing very well with available resources in online teaching mode following pandemic protocols. Thanks to all of you, and thanks to all deans and principal of constituent and affiliated colleges for providing information for my presentation. Thanks again. Thank you so much, Dr. Sir, for a nice presentation. Now I will call upon this Dr. Vinay Pandey, sir. He is the Dean, Faculty of Agriculture Engineering, Raipur, for presentation, please. Yes. Honorable Chairman of today's function, that is 36th Foundation Day celebration of Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur. Professor Singh Sahab, Honorable Vice Chancellor, IBKB Raipur,
Guest of honor, Dr. R.S. Kuril Saab, Honorable Vice Chancellor, University of Horticulture and Forestry. Registrar, IGKV Raipur, Controller Saab, IGKV Raipur, Organizing Secretary and Dean, Dr. M.P. Thakur Saab, all directors of this university, deans of all constituent colleges, professor, head students who are connected with this today's function. I'm going to present progress and emerging issues of Faculty of Agriculture and Engineering, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur. So within allotted time and number of slides, I would like to present before some information. Next, please. Faculty of Agriculture and Engineering was started in 19th April 1996 with offering 3 PG departments, that is Department of Farm Machinery and Power Engineering, Department of Soil and Water Engineering, and Department of Agriculture and Process Engineering. Prior to this, there was no undergraduate program with this faculty. Later, undergraduate program started, and we also established engineering college at Mugheni and 2 affiliated college at Durg and Bhilai. So at we have 3 constituent colleges now. One is Swami Vivekanand College of Agriculture, Engineering and Technology at Raipur, and this college is offering BTech Agriculture Engineering as UG program, MTech Agriculture Engineering PG program, and PhD in Agriculture Engineering. Second college is College of Agriculture, Engineering and Technology Research Station Mugheli, and this college is offering only BTech Agriculture Engineering UG program. And third college recently come up, College of Food Technology, and this college is operating only UG program, that is BTech in Food Technology. We have 2 affiliated colleges under this faculty, one Bharati College of Agriculture Engineering offering UG program only, and another is Chhattisgarh College of Agriculture Engineering located at Bhilai offering BTech Agriculture Engineering only. Next, please. So all these colleges of the faculty as a whole, dealing with certain objectives, certain important teaching and training in different discipline of agriculture engineering and allied fields. Then advancement of learning and conducting research, seeking solution to the emerging problems in agricultural engineering, and so on. We have framed 5-6 objectives, and lastly promoting effective, efficient, and decentralized governance by introducing best management practices. So the all 3 colleges are involved in 3-dimensional activities, that is teaching, research, and extension. Present status at a glance, if you see, so I'm presenting here only the status of constituent college. One is College of Agriculture Engineering at Raipur, another at Mugheli, and recently established College Food Technology College at Raipur. So if you see the accreditation status, so Raipur College, yes, it is accredited. Mugheli College is accredited, but as our food technology college recently started, so accreditation process will take place later on. College building, we have the college building at Raipur. We have the college building for Mugheli, College of Agriculture Engineering at Mugheli, and the college building of food technology yet to be, sanctioned and built up. As per hostel facility are concerned, yes, we have the full facility of hostel at Mugheli, at Raipur both, and also we have the hostel facility for the food technology college located at Raipur. As per student strength is concerned, we have UG students intake, including ICR 96 in Raipur, 76, 79 at Mugheli, and 42 at CFT Raipur. And present status of UG student strength is 267 at Raipur, 179 at Mugheli, and 40 students the present status at Raipur College of Food Technology. Next. Next. Now
Similarly, we have the PG students intake capacity is 50, and this is only at Raipur, and PG student present strength is 134. PG students intake capacity is 22 at Raipur only, and PG student present strength is 73. We don't have PG courses at Mugheli. Then research published by PG and PhD students are about 80 numbers. LPs, of course, experiential learning programs are running in both the colleges. And recently, we have received information from the Dean College of Agriculture Engineering, Mugheli, that they have received about 50 lakhs from ICR to run the experiential learning program there. As far placement is concerned, Raipur, we have within 2 years, 24 students are placed, but not in government sector, in some NGOs and some private organizations. Sanctioned post technicals, of course, it is nil because till date we don't have the setup for this college. And 16 has filled in Mugheli and of course at CF Food Technology College Raipur. Sanction posts as in the same position for the non-technical this one non-technical staff. It is 15, 41, and 25. Then faculty development program, of course, due to these 2 years Corona period, they are not. In-person program were not run, but most of the faculty members they attended the about 25 programs are attended by the faculty of agriculture engineering located at Raipur as a faculty development program through various modes. Then eight faculty members they uh, uh, back attended faculty development program at Mugheli. As per e-resources are concerned, we have the full facility at Raipur. Of course, still there is some modernization and recent equipment are required. We have sufficient facility at Mugheli, and of course, we have the full facility for the full technology college at Raipur. JRF qualified student 8 from Raipur, and 8 students they including GATE and JRF they are qualified at from College of Agriculture Engineering at Mugheli. ICR development grant we received in the current year 28.07 lakhs and for Mugheli 8.514 lakhs. In this year only, one student got selected as a deputy collector in the state government, the government of Chhattisgarh, and one student, of course, past student from College of Agriculture in Raipur, is also selected as deputy collector. So this is one of the big achievements for the students. Next, please. Some of the activities we carried out, of course, through online, like sports and other activities of the students, but they were not offline, so I'm not mentioning here. Now there are 10 research projects. They are running in at Agriculture Engineering College at Raipur. ECRIP, 3 ECRIP in Department of Pharmacy and Power Engineering, and four projects with the Department of Agriculture and Processing and Food Engineering, and 3 projects are running by the Department of Soil and Water Engineering. So currently, total 10 research projects, including ACRIPs, are running in the Faculty of Agriculture Engineering at Raipur. Next, please. Next. Now, emerging issues, as per issues are concerned, infrastructures is adequate at Raipur, adequate at Mugheli, but college building at of CFT is required still. Teaching faculty, college setup is required for this Raipur college. Of course, all the time it's very surprising that after such an old college, we are demanding for the college setup. But there are some administrative reasons due to which it not sanctioned. But all administration and everybody is behind this thing, and possibly shortly will get this setup for agriculture engineering college Raipur. At Mugheli, things are adequate. For food technology college, we have received the setup. Only recruitment process has to be executed. Transport facility, they are inadequate, and of course they are there, but now very old, and we need some more facility in for towards transportation.
at CFT not available. We need this thing. Hostel facilities, of course, they are adequate for all three colleges. Academic competence, we have the adequate academic competence at Raipur, at Mughali College, and at for CFT need to be strengthened. Sir, I would like to bring to kind notice of sir, our guest of honor, Dr. Kulin sir. Sir, this Mughali Agriculture Engineering College, once upon a time, it was the first agricultural engineering college in the whole India, which was running without using even single unit of this electricity. It was all solarized. There was no transformer, no wire line of this conventional electricity, and it was appreciated by ICR and almost throughout India. Of course, part still the system is running, but due to enhancement of infrastructure, now we are getting support of this current also. And this way, we say within 3 years, we saved 16.5 lakh rupee electricity bill. This is all calculated. So this was one unique achievement of this university that I would like to bring to your time notice, sir. Next. Next, please. Then there some another issues are there. We need new PG departments. These are Department of Renewable Energy Engineering and Department of Irrigation and Drainage Engineering. These departments are suggested by the National Agriculture Policy 2020. So we need to start at Raipur. Then at Mughali, we need to establish 3 PG departments: Department of Pharmacy and Power Engineering, Department of Process and Food Engineering, and Department of Soil and Water Engineering. Then at Raipur, need to new department to make the college as multidisciplinary as recommendation of NAP 2020. All the time we are discussing that now colleges and universities should be multidisciplinary. So in view of this, we need to establish the Department of Basic Sciences and Humanities, Department of Mechanical Engineering, Department of Civil Engineering, Department of Electrical Engineering, Department of Computer Engineering, and Department of Electronics and Instrumentation. So all the faculty and knowledge of all 3 departments is very closely, supported to the agriculture, engineering, PG, PhD degree itself. So as per NEP 2020, we are suggesting that this is the issue that need to be taken into consideration. Then there is a need of our head of department faculty need that there is need of one acre project on ergonomics in the Department of Farm Machine and Power Engineering. We need one water technology center. Most of the universities are having. So as we have a lot of work on this issue. So we need a separate water technology center at this college. And similarly, we need a center for the agriculture implement machine testing. Almost it is also available in some of the universities, some of the state, and it is very much required for the state of Chhattisgarh. So if you are given this opportunity, this should be a great work. Next. So thank you. So I'm thank to chairman and vice chancellor and all the directors, deans of this university, and students, staff who are directly and indirectly listening to this presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for the nice presentation for engineering agriculture colleges. And now I will present my this presentation for 5 minutes. Honorable Vice Chancellor, Professor S. Sengar, sir. Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Forestry University, Dr. Kohli, sir. Organizing Secretary, Dr. M.P. Thakur, sir. And Registrar, Controller, Deans, and Directors. Welcome to this Knowledge and Technology Resource Center. This is one of the mega projects running in this city. So I'm presenting this one, how this project is running and what achievement we got in the last 2 to 3 years.
So this is only the project, only agriculture university in this state, which is the mandate is research and extension. Present covering 48 colleges and 21 departments, including 27 KVKs and 19 research stations. This is the coverage of this e-governance project, IGMIS, and 4 different projects we are running here. The university ERP, university ERP we covered. Krishi Pashala for this Corona period we developed in this university. And the one project, mega project is also there. This is a Smart Kisan project. We are covering 2.5 lakhs farmers of this state. And last one is where we are creating the infrastructure at different places, net connectivity and other things. So after that, so this university we developed 8 different products. One for admission, one for the student MIS, library management, human resources, finance management, research management, farm management, and university web portal. So this admission management portal, we are covering all over India and international students. We are offering the degree of agriculture. So this we take by using the entrance examination also. In this admission MIS, we are providing the opportunity for the from the entrance examination and pre-counseling process and counseling process. Based on the total transparency, we are giving the admissions to the students of agriculture and agriculture engineering, horticulture. This is a student MIS, and we are offering all the facilities to student, complete automation for the throughout the student cycle. And we have the good database of agriculture and agriculture students. See, this is the pre-examination, examination, and post-examination facilities we are giving. We are covering also the certificates like degrees, diplomas we are giving from here. We are also having the facility, offering the services for the training and placement cell, convocation, and alumni. Library, we are giving the facility to students during the Corona pandemic. E-books are available, journals are available, catalogs are available, theses are available. Establishment, we are at present covering 1,594 employees, and we are maintaining the record of this leave management, employee profile, confidential reports, CR, everything we are maintaining in this. Recruitment, as far as recruitment is concerned, this is an independent module. From this module, we are appointing the various employees in the university. And till date, we have covered the 245 recruitments from this module. This is user management system. Altogether, we have developed the 4467 forms and around 64 roles we are giving to the various officers. This is financial management system. It is running from the 2016-17, and at present we are offering this complete allotment and this budget grant, sanction, payroll system, medical claims, tour, and everything from this module. This is another research information management system. This system provides the opportunity to upload the project of the university and approval of the university. Online journal, we are also giving this from here. Online journal, we are going to start very soon. Now, all the students, all the researchers can upload the papers on the online journal. This is a farm management system, farm basic entry, farm inventory, farm planning, and harvest and sale. This system provides the opportunity to run the farm very smoothly. This is web portal. At present, more than 11 lakhs people have visited this web portal for this purpose. This is Krishi Pathshala. We developed this is last year because of the Corona period, and in this we will surprised to know that we covered all the material, online examination, video lectures, online assignments, old papers, online results through this Krishi Pathshala. Faculty corner is there in the Krishi Pathshala. Faculty can upload the notes also. Faculty can upload the video lectures, syllabus. We can see the attendance of the students. This online, no other university in the Chhattisgarh
is having this kind of facility, and even the RSTV is giving the question paper and taking back in the 7 days. But we are giving the paper half an hour before, and uploading, all the students are uploading on the mobile itself. So this we covered near about 2.5 lakh. This you will see that 2.64 lakhs answer sheets we uploaded in this system. This is another project for exclusively for smart agriculture. We are here to in this project we are planning to put the farmers on the driver's seat. So these are the basic objective of this project. This application covers 7 mobile applications in one app. This one app covers all the 7 facilities. So, and we are providing the good agricultural practices, zone-wise, location-specific. This advisory we are issuing from here. These are the major objective of the project. Thing is that if we want to send our technology to in the remote areas, so we are covering by this objective. These are the user of the Smart Kisan, farmers, scientists, sky users, agriculture students, input dealers, social media users. This all 8 activities we are covering through this application, smart application. We are giving the advice of farm planning also, impression, purchasing, and crop sowing, manuring, and crop production, harvesting to selling. This all activities we are covering in this Smart Kisan. These products, these services we are giving Krishi Panchang, Model Form, Knowledge Bank, Ask Expert, Custom Hiring, and eHeart. eHeart is a direct marketing platform. This is the Farmers Club. Farmers Club at present near about 2.5 lakhs people are the farmers have joined this Farmers Club. So they are getting the weather conditions, innovations, product, and the farm machinery success story in this project. This is Krishi Panchang. Right now, the first of this day, we now launched this one. So this provides the weather, farm implements, Hindi Panchang, nearest government, the nearest KVK government scheme and monthly advisory. This another mobile application model forms. By using this model form, we are giving the advisory on the based on the agriculture zone, based on the soil type, based on the agriculture product, this facility, and the farmer's type, whether it is small, marginal, or large farmer. Farmer can get these advisory in their messages and also in the PDF file. And this is expert advice. We are giving the answers of the queries of the farmers. So at present, near about 1 lakh queries we answered in this through this app. All the answer is being given by the senior scientists and HODs of the KVKs, and some more experts, even from India also, even from the international also. We are giving the answer of the queries. This is Knowledge Bank. From here, you will find that crop selection, crop production, and crop protection. One of the popular app is Crop Doctor here. This is a Crop Doctor. This provides the opportunity to identify the image-based pest disease and nutritional disorder. It is in Hindi and English both, and it runs sometimes without internet connectivity. Farmers can upload the picture and get the answer of that. So this is Farmers Query from all over India. Farmers Query is running. This is Custom Hiring app, the most popular app in this state. From here, farmer can know the nearby implements available in this direct marketing platform. We got the national state level award for this project. We removed the middleman from this mobile application, and farmers, every farmer is having now their home as a shop. So this is a very fast-breaking initiative developed here. We are also having the presence in social media. Near about 1 lakh users we are having in social media. This result we reached remote and national this Naxal affected areas. We are providing the crop-based advisory. We are giving the implements by database. We are also generating the reports and also giving the information to nearby KVKs. This infrastructure we developed here. We have the Reminders Lab, Internet facility, Kisan Studio, Wi-Fi campus, server, smart classroom, RF connectivity, conference room, video conferencing room. This is the facility we have here. This is the financial benefit. You will be surprised to know that till date 5 crore rupees we saved by printing of the answer books and the Academy online payment registration card, and by
So 5,40 crore rupees, 5 crore 40 lakhs we saved from this application. This award we got, this project has got 5 different awards. First award we got the National Award, National E-Governance Award by the Department of DAR, the Government of India. Scott Award for Digital Payment. We have been nominated for 2 things in e-governance, and Smart Kisan is also nominated for the National E-Governance Award. And the last one in the 2021, we got the Most Innovative Award of the app e-Heart application. Thank you so much. Next, I request Dr. P.K. Jaiswal, Dean Ambikapur. Kindly present yourself. Honorable Minister of Agriculture, Government of Chhattisgarh, Honorable Vice Chancellors, Deans, Directors, Professors, Delegates, and dear students. First, I congratulate all of you on 36th Foundation Day of our university. I would like to present research achievement and emerging issues of Northern Hilly region of Chhattisgarh. The altitude of Northern Hill zone of Chhattisgarh ranges from 293 meters to 1200 meters above sea mean level. Northern Hill zone of Chhattisgarh comprises of 5 districts: Jaspur, Balrampur, Ramanujganj, Koria, Surajpur, and Sarguja, having 4 agriculture colleges, 3 constituent, 1 affiliated, 1 horticulture college, 5 KVKs, and 1 potato temperate horticulture research station. The total geographical area of Northern Hill Zone is 19.25 lakhs hectare. The forest area is about 25% and 48% cultivated area. The land topography is almost rolling with steep slope varying from 0.3 to 30%. Major crops of the region are rice, maize, pigeon pea, groundnut, black gram, horse gram, Niger, wheat, sugarcane, potato, and horticultural crop. The zone was blessed with regional agriculture research station on 6th March 1982 at Ambikapur, which was further upgraded. May I request you to please squeeze your presentation, and I will request all the presenters who have to make their presentation, please be brief and be in time. जयसवाल जी स्टार्ट करिए. सर अनम्यूट कर लीजिए आप. जसवाल सर आप अनम्यूट कर लीजिए. हाँ डॉक्टर जयसवाल सर अनम्यूट करिए अपने आप में. क्या वहां से बोलेंगे? हाँ शुरू करिए जल्दी. We have successfully established optimum dose of gamma radiation for induction of mutation in spine cord. Through induced mutation, we got monoecious plant in which both male and female flowers are present in same plant. सर ये आप केवल अचीवमेंट बताइए, केवल ये वाला रिसर्च फाइंडिंग छोड़ दीजिए. वैसा सर आपको कहना है कि जल्दी करना है हमको जी. Yes. The maize crop we have obtained significant grain yield with weed management practice after pre-emergence application of atrazine followed by temprogen at 25 days of sowing. Maximum
आवाज आ रहा है, धीरे है, आवाज आ रहा है। Research achievement of acric honeybee and pollinators. From pollination study, it was observed that 5 species of honeybee visited on the floor. Flowers of lychee, broccoli, pigeon pea, and spine gourd, out of which visit of Apis mellifera was maximum in all of the crop. The peak visit intensity was recorded during morning hours for lychee, broccoli, and spine gourd, and during noon hour in pigeon pea. These are 5 different species of honeybee and 2 other pollinators recorded in this region. The major natural amenities of honeybee are 3 species of wasp, wax moth, and predatory birds like black drongo and green bee eater. There are 56 different flowers of pollen slides from which honeybee collect pollen. We have mass collection of germplasm in different horticultural fruit crops. We also produce around 800 sapling of these crops and distributed to the farmers in last 2 years, and 15,000 sapling of spine gourd is also distributed. During Kharif season, in part area, potato variety Kufri Jyoti gave highest yield, followed by Kufri Himalini. Similarly, during Rabi season, in part area, highest yield was recorded in potato variety Kufri Mohan, followed by Kufri सर Chipsona. समाप्त कीजिए सर, इसको लास्ट में समाप्त कीजिए इसका। Yes, yes. हाँ, Further, it was observed that early grain variety of peach and satlas, purple variety of palm gave highest yield. Similarly, and gypsum golden low chilies variety of apple are almost recommended for pot area. Emerging issue of northern hill area are as first, lack of irrigation facility. Only about 14% area is presently in this region. Need of processing unit for processing of buckwheat, maize, jackfruit, potato, and tomato for doubling the income of farmers. Low mechanization labor and shortage of labor due to mines area. Farmers are facing severe threatening to their agriculture produce because of wild animal, especially elephant and bears. Lastly, post laying vacant, sanctioned 127, filled for 49, vacant 78. The vacant post may please be employed at the earliest. Thank you very much, sir. thank you sir, thank you so much for summarizing the presentation. Now I request Dean College of Agriculture and Research Station Jagdalpur, Dr. R.S. Netam, kindly upload your presentation. ठीक है, दिख रहा है आपका प्रेजेंटेशन, स्टार्ट कर दीजिए। अनम्यूट करिए अपने आप को, शायद आवाज नहीं आ रही है। नेताम जी अनम्यूट करिए कहीं से। हाँ, स्लाइड बड़ी कर दीजिए उसकी जी। माननीय कुलपति महोदय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, माननीय कुलपति महोदय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, अतिथिगण एवं विद्यार्थी, नमस्कार। मैं बस्तर पठार क्षेत्र के अनुसंधान उपलब्धियों आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 केवीके और 5 कॉलेज संचालित हैं। इसमें कृषि महाविद्यालय जगदलपुर के द्वारा अभी विगत 2 सालों में
कुछ किस्में विकसित की गई हैं। उसमें पहले है बस्तर धान 1। यह जो वैरायटी है 105 से 110 दिन की है, सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है। यह किस्म उछान भूमि के क्षेत्र जैसे बस्तर संभाग, सरगुजा क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इस चावल का दाना लंबा पतला है तथा इसकी औसत उपज 45 से 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी क्षमता भी है। इसी प्रकार कंदी वर्ग में छत्तीसगढ़ टिकुर एक जाति वैरायटी के नाम लीजिए आप, है ना, वैरायटी के नाम लीजिए, so that will be better for us, है ना। जल्दी से विशेष आपको कहना जी। छत्तीसगढ़ टिकुर 1 विकसित किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ रतालू 1, छत्तीसगढ़ सोनकुटकी का किस्म विकसित किया गया है। धान के कृषि महाविद्यालय जगदलपुर द्वारा धान परियोजना के अंतर्गत 27,557 किस्मों का परीक्षण किया गया। वैसे यहाँ पे जो मुख्य रूप से धान के उसमें झुलसा रोग होता है, उसके लिए कुछ फंजीसाइड जैसे नोटिवो को झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सुझाया गया है। ये प्रभावकारी होता है। उसी प्रकार यहाँ पे धान में लीफ फोल्डर कीटों, लीफ फोल्डर और गाल में जो तना छेदक की अधिक समस्या है, उसके लिए रेनेक्सी पायर 20 EC को रिकमेंड किया गया है। इस पर कृषि महाविद्यालय कांकेर के द्वारा सीताफल पर निकालने और आइसक्रीम बनाने की तकनीक विकसित की गई है। सरसों में 55 क्रॉस संयोजन करके संततियां प्राप्त की गई है। उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर द्वारा बस्तर के लिए उपयुक्त काफी किस्मों की पहचान के लिए कार्य प्रारंभ किया गया है। बस्तर की जलवायु छायादार क्षेत्र में उपयुक्त ऊंचाई को पहचान कर काफी की अरेबिका एवं रोबस्टा किस्मों का चयन कर सफलतापूर्वक उत्पादन लिया जा रहा है। काफी के साथ बहुस्तरीय एवं अंतर्वर्ती फसल के रूप में काफी, काली मिर्च, हल्दी, धनिया एवं कंदिया वर्गीय फसलों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा रहा है। काफी की सफलतापूर्वक प्रसंस्करण एवं स्वसहायता समूह के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार एवं आय की प्राप्ति हो रही है। बंजर एवं पथरीली भूमि में ड्रैगन फ्रूट की खेती प्रारंभ की गई है। काजू के 2 जनन द्रव्य कार्स 8 और कार्स 10 राष्ट्रीय स्तर पर बहुस्थान परीक्षण के लिए चयनित किया गया है। काजू में पहली बार संस्करण से 36 संततियां प्राप्त की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ में फल और रोपड़ी फसलों में पहला प्रयोग है। रूगोस स्पाइरलिन व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण हेतु रोगकारक फफूंद आइसेरिया फ्यूमोसोरोसिया। नेताजी जी सर, ये जो थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे, आपने क्या एंटोमोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जो भी हुआ है ठीक है, कितनी वैरायटीज ली हैं, ज्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। जी सर। उसी प्रकार कृषि महाविद्यालय जगदलपुर द्वारा गुच्छ धारक उच्च उत्पादक इमली जनन द्रव्य बॉस्टम 38 का चयन किया गया है। इसी तरह ग्राम भोंड में लामके के 280 एकड़ नदी किनारे जमीन पर 3 फसलों धान, सब्जी, मक्का और मत्स्य पालन, बतख पालन और फलदार वृक्षों के एकीकरण के साथ एकीकृत कृषि प्रणाली का प्रदर्शन किया गया, जिससे 350 कृषक सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार हमारे संस्था द्वारा संस्था को जैसे हमारे स्मॉल मिलेट परियोजना को 17 से 2020 के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। और हमारे संस्था में संचालित काजू परियोजना को भी 2019 से 20 के लिए उत्कृष्ट केंद्र का सम्मान किया गया है। इसी प्रकार हमारे संस्था के वैज्ञानिक को डॉक्टर आदिकांत प्रधान को फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
उभरते हुए मुद्दे, यांत्रिकरण एवं सामूहिक खेती के माध्यम से फसल उत्पादन लागत को कम करना, प्रमुख एवं लघु धान्य तथा लघु फलों, रोपड़ी और कंदी वर्गीय फसलों के मूल्य वर्धित उत्पादन पर शोध कार्य, बस्तर पठार के लिए अल्पावधि धान की किस्मों का विकास, लंबे भंडारण के साथ उच्च पोषक मूल्य, अच्छे स्वाद वाली, जल्दी पकने वाली, उच्च उपज देने वाली कंदीय फसलों के किस्मों का विकास, धान, सब्जी, लघु धान्य आधारित कृषि, पानी की प्रणाली का विकास, टी मॉस्किटो बग के लिए प्रतिरोधी काजू किस्म की विकसित करना, रागी, कोदो, कुटकी का क्षेत्र विस्तार एवं उनके बीज उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, तीकुर, जिमीकंद एवं हल्दी जैसे फसलों को प्रोत्साहन, सोलनेसी कुल की सब्जियों में रोग नियंत्रण एवं प्रबंधन का शोध की आवश्यकता। उसी प्रकार बदलते मौसम के अनुसार अनुशंसित तकनीकों तथा विभिन्न फसलों के सूखा सहनशील किस्मों को किसानों के बीच प्रचार प्रसार, विषम जलवायु परिस्थितियों में आवश्यकता अनुरूप फसल पद्धति, फसल प्रबंधन का विकास करना। थैंक यू। Thank you, Dr. Sir. Thank you so much. Now I invite Dr. S.S. Chandravanshi, Senior Scientist and Head, KVK Raipur. Thank you, sir. Chandravanshi ji, please sum up within 2-3 minutes. 2-3 minutes. I will request other PCs also. We are very short of time. We are 1 hour behind the schedule. Please stick to the time. Try to sum up within 3 minutes. Dr. Thakur Sahab, this is my humble suggestion. Without addressing the chair, they can directly start if you permit. Yes, that is what I am suggesting them. Complete the task within time. Yeah. Today's chairman, Honorable Vice Chancellor Dr. S.S. Singhal sir, special guest, Honorable Vice Chancellor Dr. Kuril sir, all the respected dean and directors, senior scientists and of different KVKs, seniors and scientist staff, scientist and professor staff, university. I am going to present extension achievement and emerging issue of KVK of Chhattisgarh plain. Include this plain 15 KVKs. It briefs are by brief work of our plain KVKs, biofloc intensive fish production, ornamental fish rearing and production, hybrid and open pollinated vegetable seed production from KVK Raipur's farmer producing organization and companies, Raipur, Raigad, Garyaban, University Cell Counter, honeybee production from Bemetara KVK, Dal processing unit of Park FPO at Gothan, Bemetara, banana fiber extraction unit for FPO at Bemetara, Makhana and red water chestnut cultivation, first time from Dhamtari, broad BBF method of soybean cultivation, Rajnandgaon and Bhatapara, quail rearing and lake cultivation, Mahasamund, paddy straw mushroom cultivation, Mahasamund and Janjgir, Raigad, Ghar mushroom production from Garyaban KVK, women empowerment and employment generation through the SHG, Durga 2, NGGB related activities, all the KVK, CFLD and Seed Hub from all the KVKs. This is the उसका enlarge है सर ये बायोफ्लॉक तकनीकी सघन मछली पालन का. उसके बाद है सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑन बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी 10 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है सर. साथ ही साथ अदर जो स्टेट है 10 स्टेट में भी इसका इन्लार्जमेंट किया गया है सर. फिशरी यूनिट केवीके रायपुर ऑर्नामेंटल फिश का प्रोडक्शन जो हो रहा है सर उसका है ये. उसके बाद ये उसका डिफरेंट यूनिट है सर. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडियम एंड रिटेल यूनिट्स ऑफ ऑर्नामेंटल फिश जो कि रायपुर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर. फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ओपी एंड हाइब्रिड वेजिटेबल सीड ये फर्स्ट टाइम अपने छत्तीसगढ़ में किया गया सर. रीज गॉर्ड और टोमेटो सीड का ये उसका व्यू है सर. उसके बाद राज्य पोषण बाड़ी के अंतर्गत सभी केवीके किया है सर. साथ साथ केवीके रायपुर भी किया है सर. फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन फाउंड एंड सपोर्टेड बाय केवीके रायपुर 2 producing company and 2
cooperative society and supported by one. This is the activities of farmer producing organization. Biofortified rice, aromatic rice, spices, pulse, oilseed and different crops का प्रोड्यूस करते हैं सर। ये उसका कंपनी का व्यू है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करवाया सर। ये यूनिवर्सिटी सेल काउंटर डिफरेंट केवीके छत्तीसगढ़ का जो अपने यहाँ सेल काउंटर में लगाया हुआ है सर। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हनी बी एक्सप्लोर फ्लोरा फॉर हनी बी कॉलोनी एंड वैक्स प्रोडक्शन बाई केवीके धमतरी, केवीके बेमेतरा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन यूनिट फॉर एफपीओ एट गोठान ग्राम राखी ब्लॉक साजा एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दाल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर एफपीओ एट गोठान ब्लॉक साजा के अंतर्गत सर इसमें 250 to 300 क्विंटल्स पर मंथ इसमें ग्रो करते प्रोडक्शन करते हैं सर। उसके बाद मखाना कल्टीवेशन है सर, 2015 से है और करीब करीब अभी 35 एकर्स में मखाना का कल्टीवेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ सर 2 प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप किया गया है, एक तो धमतरी और एक लिंगा डी सर। किस केवीके में क्या क्या एक्टिविटी चली है ये सब ब्रीफ में बता दो, बाकी कितना का एरिया में ये मत छोड़ दीजिए, सब कहाँ क्या चल रहा है आप ब्रीफ में जल्दी बता दीजिए। यस सर। ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है सर मखाना कल्टीवेशन का, मखाना प्रोसेसिंग का है सर। ये रेड वाटर चेस्टनट फ्रॉम केवीके धमतरी, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफ वाटर चेस्टनट धमतरी। ये प्रमोशन ऑफ बीबीएफ का है सर, वहाँ राजनांदगांव भाटापारा एंड कवर्धा में। उसके बाद है क्वेल रेजिंग इन केवीके महासमुंद में है सर। लगभग नेट इनकम 5155 पर ये 268 फार्मर्स ले रहे हैं सर बेनिफिटेड, और करीब करीब 8 क्रॉप पर ईयर लेते हैं सर इसमें। उसके बाद पेडिस्टर मशरूम का करीब करीब हमारा 3 केवीके है सर, केवीके महासमुंद और जांजगीर चांपा और ये अपना रायगढ़ है सर। यहाँ पर पेडिस्टर मशरूम के थ्रू किसान का लाइवलीहुड को बढ़ाया जा रहा है सर। उसके बाद इनकम जनरेशन थ्रू दी मशरूम कल्टीवेशन और लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑल केवीके आप छत्तीसगढ़ प्लेन के द्वारा जो फार्मर्स का लाइवलीहुड को इनकम जनरेशन के माध्यम से इनका लाइवलीहुड को बढ़ाया जा रहा है सर। ये काफी वो है सर। उसके बाद लेक कल्चर है सर, इसमें लेक कल्चर में अपना रायगढ़ है, कोरबा है, राजनांदगांव है, महासमुंद है, गरियाबंद है, इसका व्यू है। उसके बाद है सर ये कंपनी जो गरियाबंद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है सर, वो करीब करीब सब इसमें अच्छा इनका परफॉर्मेंस है और 82,80,000 का इसका नेट इनकम है सर पर ईयर। घर घर मशरूम भी गरियाबंद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है जो काफी फेमस है सर। उसके स्व सहायता समूह के द्वारा सर आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवीके दुर्ग के द्वारा चलाया जा रहा है सर कार्यक्रम। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के द्वारा ही जैविक खेती को प्रमोशन दिया जा रहा है सर। साथ ही साथ सेरिकल्चर इनोवेटिव वर्क है सर केवीके जांजगीर के द्वारा। उसी के साथ ही उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग ऑफ टर्मेरिक लिया जा रहा है सर। ये प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक सेंटेड राइस थ्रू दी पीओ, ये यहाँ का केलो जमा फूल और स्पाइसेस का रायगढ़ के द्वारा स्पेशली केवीके के द्वारा किया जा रहा है सर। और ये संभव एग्रो प्रोड्यूसिंग कंपनी के द्वारा डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ रायगढ़ के प्रमोशन किया जा रहा है सर इसमें। उसके बाद है सर ये पोषणवाड़ी का है, उसका व्यू सर वहीं पर। ये सर एनजीजीबी रिलेटेड एक्टिविटीज है जो हर एक हमारा ऑल दी केवीके ऑफ प्लेन का किया जा रहा है सर। डिफरेंट उसमें वर्मी कंपोस्ट है, लो कास्ट वर्मी कंपोस्ट है, नाडेप है, मशरूम प्रोडक्शन, बायोपेस्टिसाइड, ग्रीन फाइबर कल्टीवेशन, प्रोडक्शन ऑफ ट्राइकोडर्मा और गार्डनर ट्रेनिंग। इसमें पूरा केवीके के द्वारा लगभग सर बेनिफिशियरी है 13,770 और पूरा जो ट्रेनिंग है 616 ट्रेनिंग दिया गया है सर। तो ये डिफरेंट व्यू है सर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस का। ये फाडर प्रोडक्शन लिया जा रहा है सर डिफरेंट गोठान में थ्रू दी ऑल दी केवीके आप प्लेन का सर। उसके बाद फाडर सीड प्रोडक्शन भी केवीके दुर्ग के द्वारा और राजनांदगांव के द्वारा और एक केवीके और उसके बालोद के द्वारा किया जा रहा है सर। ये सर ये वेजिटेबल गार्डनिंग इसका है ट्रेनिंग है सर। गोधन न्याय योजना का डिफरेंट व्यू है।
ये सर राउंड ईयर आर्डर प्रोडक्शन का है ये। और ये क्लस्टर डिमार्केशन का बताना चाहूंगा सर मैं, ये अपना पूरे प्लेन छत्तीसगढ़ में लगभग 870 हेक्टेयर में और लगभग 2000 फार्मर के द्वारा आई सीड का CFLD लिया गया है सर। साथ ही साथ जो पल्स का है 478 हेक्टेयर में और 1025 फार्मर के द्वारा पल्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है सर। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बम्बू मिशन के अंतर्गत 680 मदर प्लांट्स लगाया गया है सर और 20 हेक्टेयर में लिया जा रहा है और नंबर ऑफ प्लांट लगभग 12,000 नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड किया गया है सर। ये स्पेसिस ऑफिसर्स का एक क्रॉप वाइज प्रोडक्शन ऑफ सीड हब है हमारा 5 केवीके है सर। मेन केवीके कवर्धा, भाटापारा, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और बेमेतरा, इसके द्वारा कम से कम 3000 कुंटल प्रोडक्शन किया जा रहा है सर। ये थोड़ा सा रिप्लेसमेंट है सर। रबी थ्रो मखाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूसिंग ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंटरप्रोसेस डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फार्म इंटरप्राइजेस। एक दो बस पॉइंट करना चाहूंगा सर मैं। प्लेन केवीके में सर लगभग 50% हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, हाइब्रिड राइस का लिया जाता है सर। लेकिन अभी तक से हमारे कम से कम यूनिवर्सिटी में एक हाइब्रिड वैरायटी नहीं निकला है सर। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सर। और साथ ही साथ किसान लोग पूछते हैं सर इसका कि अपना स्वर्णा और 1010 का, इसका भी रिप्लेसमेंट की ओर ध्यान दिया जाए सर। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा सर, केवीके विश्वविद्यालय का आईना है और विश्वविद्यालय को केवीके के थ्रू ही जानने के लिए एक अहम रोल है सर उसका। और केवीके के वैज्ञानिकों का हमेशा प्रयास रहा है सर कि किसानों, अंतिम किसान तक जो यूनिवर्सिटी का टेक्नोलॉजी है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं सर कि हम लोग हर एक किसान का इनकम डेवलप हो, डबल इनकम फार्मर जो DFI का है सर उसमें बढ़े। दूसरा एक सर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सर, केवीके का जो प्रॉब्लम है सर उसमें CS का, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सर। बाकी थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so much. Now I request Dr. Sandeep Sharma, KVK main part, for the presentation of Northern Hills. Kindly present within the 5 minutes strictly and points only. Is visible, sir? Yeah, visible. Yeah. Good afternoon to all of you, Honorable Vice Chancellor. Without this addressing to anyone, directly start, Doctor. Okay, sir. Good afternoon to all of you. Now I am going to present extension achievement and emerging issue of Northern Hill region of Chhattisgarh. Here, major extension activities of Northern Hill region of Chhattisgarh: value addition of processing of scented jeera full rice, FPO formulated by KVK Korea Agro Processing Company, now 723 members included, and turnover is 40 lakh rupees. Integrated farming system model, beekeeping, mother orchard establishment at farmer fields, button mushroom production, community-based vegetable cultivation, milk processing and value addition unit, extraction of essential oil, pit method in sugarcane. Now here you can see the slides for value addition of scented jeera full rice. Here mostly tribal farmers, and jeera full rice area is more than 5,000 acre here in 5 blocks. Here farmer is selling the paddy and getting the net income from 1 acre 14,500 rupees. But KVK man part is given the training and value addition for mini rice mill, and here farmer is getting from 1 acre 26,000 rupees. And in terms of 1 kg rice, here they are selling 100 rupees per kg rice, and net profit after deduction of expenditure 40 rupees. Here our Honorable Minister Amajit Bhagatji visited, our Vice Chancellor Dr. SS Sengar Sahab visited, and 2 mini rice mills given to 2 SHG since last visit. And here our scientists and our director extensions also visited in their unit. Another one is IFS model. We have established one IFS model at Farmers Fields, village Anggaon. You can see the overview of the IFS model. It's very good place.
is different components. We are including vermicompost, poultry, vegetable, and so on. You can see here the cost of cultivation. Before the IFS model, farmer is getting 1 acre 36,300 rupees with two rice and one component. But after the KVK intervention, they included different components. Here you can see the vegetables, backyard poultry, cattle, poultry, vermicompost, beekeeping, duck and fish culture, and they are getting 98,000 rupees per acre, and your income is double, 2.69 is your BC ratio. Here is a very prominent technology and very good for the button mushroom production in the main part. Here we have established the button mushroom unit with the help of Dr. M.P. Thakur sir. They are always advising to us for the producing of button mushroom. Here we have established the unit 30 to 15 feet with the 16 quintal compost, and farmer are harvested from 16 quintal compost 3.20 quintal button mushroom. Here cost of cultivation of 29,600 rupees without hard, and your net return is 98,400 rupees. Farmer is very happy from this enterprises. Also, our Vice Chancellor Dr. Sasangar Saab visited since last visit in button mushroom unit, and Dr. Sasangar is told to us for the multiplication of this unit to large farmers area. Here also our visited the scientists from IGKV, Dr. Das sir, Dr. Chandrakar sir, Tuteja sir is also visited. Some foreigner from France is also visited this mushroom unit from different countries at Manpar. Here, creation of job opportunities and doubling farmer income through duck cum fish farming by KVK Sarguja. Here, KVK Sarguja intervention is provided improved fish seed, tend to farmer for scientific rearing, provided small pot ducks and duck shelter. After the impact of intervention, farmer is getting 1.20 lakh per farmers per year, also fulfill the nutritional security and also the employment generation 90 man days per year. And this horizontal technology is developed 150 to 200 farmers in different villages. It is very prominent technology is pit method in sugarcane. Here farmer before the intervention of Sarguja pit method, farmer is getting the yield to 175 quintal per acre, and net income you see here 64,475 rupees. But after the intervention of pit method, farmer is getting 820 quintal per acre yield, and net return is to that 43,300 rupees. Here you can see the BC ratio is directly just more than double 5.34. This is very prominent technology, and also this is spread. 250 farmers adopted this technology, and area is 280 hectare within the district of this pit method. This is the process for pit method. Again, on this KVK Korea is very KVK Korea has got the national award from this year. It's very prestigious for the IGKV. There is lots of units is developed. We can discuss here the value addition and milk processing unit. Milk processing unit is established at KVK Korea. They are collecting 100 to 150 liters of indigenous cow milk per day from SHG through Korea Agro Producing Company. सर समाप्त करिए बस within minute. Yes, yes. And they are making the ghee 75 to 800 kg. Here also see the medicinal aromatic plant unit, and also see the value addition of different mini rice mill, oil mill, dal mill. And you also see the KVK Korea is. ये देख चुके हैं अपन आगे बढ़ा दीजिए इसको आगे बढ़ा दीजिए. Here KVK Balrampur established Kadaknath unit farmers fields with 4 groups. Here farmer is selling the 500 rupees per kg Kadaknath, and they are sold 100 birds. After deduction of feed cost, they are got the 30,000 rupees per groups. You also see the here beekeeping and honey production at farmer field. Here KVK Balrampur is started 2 groups, and 1 group is starting 50 to 50 box and 650 liters per group per annum. Here farmers are also migrating the bee colonies, and here got the 1,62,500 rupees from 1 group after the deduction and tax all expenses.
Major activities of KVK Jaspur: establishment of QA unit at farmer field, establishment of mother orchard, and propagation of quality planting material of fruits crop, mini rice fields also, and also he has good 200 bodies established at farmer field under the Poshan Body Yojana. You can see here the emerging issue of KVKs of all northern hill zone of Chhattisgarh: lack of minor unit processing unit, lack of buckwheat processing unit, because in main part area buckwheat is 4,000 acre is more than buckwheat area, increasing feed cost for cattle and poultry, lack of mechanization, lack of irrigation facility in Rabi season, lack of processing unit of tomato unit in basically Jaspur district. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Thank you so much. Now I request Narayan Sahuri for 2 minutes presentation. Directly, you come to research these achievements. Sir. आदरणीय वाइस चांसलर सर, डीन्स एड्रेसिंग छोड़िए, डायरेक्ट चलिए भैया। सर मैं बस्तर पठार के जो उपलब्धियां हैं जो केवीके से, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सर। ये बस्तर में सर 7 स्लाइड बड़ी करिए। हाँ, ठीक। बस्तर क्षेत्र में 7 कृषि विज्ञान केंद्र है सर: दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर। और ये यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। 36,65,000। मैं रिक्वेस्ट करो डॉक्टर ना, ये तो दिख तो रहा है हम लोग कह रहे हैं, आप केवल बढ़ाते जाइए स्लाइड को। हमारा एरिया है सर वो जो है वन क्षेत्रफल है, और खरीफ का हमारे पास 32% एरिया है सर, और रबी का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, मात्र 4% है सर, और सिंचाई प्रतिशत भी बहुत ही कम है, और फसल सघनता भी 103 से 122% है। ये बस्तर क्षेत्र के फसल है सर, मैं इसमें दिखाने का कोशिश किया हूँ, जिसमें उत्पादन और उत्पादकता में प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। आगे बढ़ा दीजिए। सर 7 कृषि विज्ञान केंद्र है सर। 7 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सर 523 IFS मॉडल डेवलप किया गया है सर, और इसमें 273% जो है इनकम का वृद्धि हुआ है। ये IFS मॉडल जो है वो राइस, हार्टी एनिमल और फिशरी और पोल्ट्री बेस्ड है सर। ये इसी मॉडल का 2 हेक्टेयर का मॉडल को मैंने इसमें दिखाने का कोशिश किया है सर, जिसमें राइस है और मैच है, फिशरी, वेजिटेबल, पोल्ट्री, पिगरी और पोल्ट्री है, और ये 2 हेक्टेयर का मॉडल है सर। और इसी तरह से ये 1 हेक्टेयर का मॉडल है। इसका इनकम मैंने आपको पहले बता दिया है सर। इन मॉडल के माध्यम से 273% जो है किसान की आमदनी में वृद्धि हुई है सर। ये कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है सर। कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में देख रहे हैं 165 ग्राम जो है, जो 4,320 जो कृषक है इसमें लाभान्वित हुए हैं। कांकेर में 140 जो गांव है वो इसमें कवर्ड हुए हैं, जिसमें 325 लाभार्थी जो इसमें कवर हुए हैं। ओवरऑल सर 4,920 लाभार्थी इसमें है सर। अभी तक के जो प्रोडक्शन है सर 3,40,000 चूजे का प्रोडक्शन हुआ है, और 300 बर्ड में सर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट इस टेक्नोलॉजी से प्राप्त हुआ है सर। सर पोषण बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति कृषि विज्ञान केंद्र में 200 पोषण बाड़ी की स्थापना का टारगेट मिला था सर, और इस प्रकार से 7 कृषि विज्ञान केंद्र में 1400 जो है पोषण बाड़ियों का स्थापना किया गया, जिसमें जो है पत्ता गोभी, भाजी वर्गी, बरपट्टी, टमाटर, लौकी, सेम, तोरई, कुचाई आदि को उसमें लगाया गया था। और इसका एक अच्छा प्रॉफिट ये मिला सर कि इसमें 30,000 से 35,000 तक के प्रति किसान का जो है आमदनी बढ़ा था। बायोटेक किसान हब सर पिछले 2 साल से हम इसको संचालित कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेजर जो है 4 एक्टिविटीज था। एक तो बायो फोर्टिफाइड जो राइस का जो कल्टीवेशन था, गोट रेयरिंग का था, वेजिटेबल कल्टीवेशन था, और इसी के साथ सर एक जो है जैविक खाद का अप्लाई करने का भी इसमें एक्टिविटी था सर। तो ये बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है सर। मैं इसका अचीवमेंट आपको बताना चाहूंगा कि पिछले अपन 2 साल में सर जिंको राइस का जो कल्टीवेशन किया है उसमें 800 क्विंटल जो सीड है सर वो प्रोड्यूस किया गया है, और स्पेशली इसमें कांकेर, दंतेवाड़ा और सुकमा का मेजर रोल रहा है सर। दूसरे केवीके भी सीड प्रोडक्शन किए हैं, लेकिन कांकेर का सबसे मेजर रोल इसमें रहा है सर। इसी प्रकार से सर एक और लार्ज स्केल का एडॉप्शन टेक्नोलॉजी हमारा रहा है सर, जिसमें महिलाओं की जो कार्य में कठिनाई जो होती है उसको हम लोगों ने कम करने के लिए टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड किया था। ये है मिनी राइस मिल से राइस का प्रोसेसिंग करने का। तो इसमें सर समय की भी बचत हुई है, उच्च गुणवत्ता की जो है प्रसंस्करण कार्य भी हुआ है, रोजगार सृजन भी हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है सर, और बचे हुए समय का महिलाएं जो है इस कार्य में अच्छा उपयोग किए हैं। और ये इसमें कुल आप देख रहे हैं कि प्रसंस्करण इकाई 287 हमने स्टैब्लिश किए सर, जिसमें 4,305 हितग्राही इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और प्रति इकाई प्रति माह यदि हम देखते हैं सर तो 33,750 रुपए का प्रति इकाई लाभ प्राप्त हुआ है।
डॉक्टर साहब समाप्त करिए, ये- क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन का बहुत सारा पार्ट डायरेक्टर साहब के पास भी है ना, जल्दी से समाप्त हाँ जी कर सर, कर रहा हूँ सर। ये मशरूम का जो 7 केवीके के द्वारा सर जो 85 जो यूनिट्स स्टैब्लिश किए हैं सर, जिसमें 1275 जो है हितग्राही शामिल हुए हैं, और इसमें पर मेंबर सर 2250 रुपए का इनकम जनरेट हुआ है सर। टीएसपी एक मेजर एक्टिविटी है सर बस्तर का। इसमें मैंने जो मेजर एक्टिविटीज जो हम लोग रन किए हैं, बायोफ्लॉक का, क्वेल फार्मिंग का, कड़कनाथ फार्मिंग का, हर्बल गुलाब का और मदर आर्चेड का, इसका इनकम को आपको बताना चाहूंगा सर। ये टोटल जो है यूनिट इसमें 22 यूनिट बायोफ्लॉक का है, 86 यूनिट क्वेल का है, 26 यूनिट कड़कनाथ का, हर्बल गुलाब का 120 यूनिट है सर, और मदर आर्चेड का 46 यूनिट है। इसमें इनकम को देखेंगे सर 25,000 रुपए पर टैंक बायोफ्लॉक में प्रॉफिट होना शुरू हुआ है सर 6 महीना के दौरान। क्वेल फार्मिंग में सर 11,000 रुपए 300 बर्ड में जो है 1.5 माह के दौरान आमदनी प्राप्त हुआ है सर, और कड़कनाथ में 300 बर्ड 6 महीने के अंतर्गत जो है 1.5 लाख की आमदनी प्राप्त हुआ है सर, और हर्बल गुलाब में 30,000 रुपए पर क्विंटल प्रॉफिट हुआ है सर। मदर आर्चेड अभी न्यूली स्टैब्लिश है सर, इसमें अभी प्रॉफिट हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हर्बल गुलाब की एक्टिविटी को मैं दिखा रहा हूँ सर, ये काफी अप्रिशिएट किया गया है माननीय हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा। और ये सर एक बायोफ्लॉक का जो यूनिट है सर, 14 यूनिट जो है पूरे बस्तर जोन में, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांके में स्टैब्लिश हुए है, और इसमें 22 लाभार्थी है सर, उसके फोटोग्राफ्स हैं। इसी प्रकार से सर ये बटेर पालन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। आगे बढ़ाइए सर, आगे बढ़ाइए इसको प्लीज। सर इसी प्रकार से जो आर्या प्रोजेक्ट है यहाँ पर संचालित है सर, जिसमें अलग अलग कांकेर और दंतेवाड़ा में ही संचालित होता है, और ये बड़ा ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने का एक साधन बना है। इसी के साथ साथ सर हमारे दंतेवाड़ा और बस्तर क्षेत्र में खासतौर पे जो नक्सलिज्म की ओर जो बच्चे जो जा रहे हैं, उसको इसमें अट्रैक्ट करने का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ है सर। इसमें हम 5-6 इंटरप्राइजेस पे इसमें काम कर रहे हैं सर। मशरूम प्रोडक्शन पे, वैल्यू एडिशन ऑफ एनटीएफटी पे, प्रोसेसिंग एंड वैलिडेशन ऑफ लाइक पे, और पोल्ट्री फार्मिंग पे। उसी के साथ साथ ऑर्गेनिक राइस और माइनर ब्रेड का प्रोसेसिंग भी इसमें होता है, और गोट का जो है भी इसमें वर्क हो रहा है सर। ये नरवा गरवा घुरवाबाड़ी भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सर, जिसके अंतर्गत सर 60 गोठानों को जो है 7 केवीके ने जो है अडॉप्ट किया है, और इसमें 120 समूह के लोग काम कर रहे हैं, महिला समूह जो है, और उसमें कुल लाभार्थी 1800 हैं सर। ये जो लाभार्थी इसमें काम कर रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं सर, चारागाह का उत्पादन कर रहे हैं, चारागाह में चारा लगा रहे हैं, फलदार वृक्षारोपण कर रहे हैं, बहुस्तरीय सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, मशरूम, कड़कनाथ, बटेर और लेयर फार्मिंग, मछली, बकरी पालन का काम ये लोग कर रहे हैं सर। इसके फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं। ये सर इसी क्रम में सर गौठान कार्यक्रम के तहत ही कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा पे जो है सर वर्मी कंपोस्ट का टेस्टिंग लेबोरेटरी भी इसमें स्थापित किया गया है सर, जिसमें 44 गौठान से 92 सैंपल कलेक्शन किया गया है, और 92 सैंपल को टेस्ट किया गया है सर। ये बस्तर संभाग के कृषि विज्ञान केंद्रों में मौसम वेधशाला की भी स्थापना हुई है सर, जिसमें कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में स्थापित हो गई है। तो माननीय कुलपति जी का इसमें भ्रमण भी हुआ था, इसको मैंने इसमें दिखाने की कोशिश किया है। ये एफएलडी का कार्यक्रम जो है सर लगातार हर वर्ष चलता है, और इसमें राइस, चिप्पी, फील्ड टाइम हो गया आपका, समाप्त करिए, टाइम हो गया आपका। जिसमें 1400 हेक्टेयर में हमने इसको किया था, बस समाप्त हो रहा है सर। इसमें 1000 डेमो हमारे लगे थे। इसी प्रकार से सर ओएफटी हमने 105 कंडक्ट किए हैं बस्तर जोन में, जिसमें 157 हेक्टेयर में लगा था, और इसके ट्रायल में 157 इसके फोटोग्राफ्स हैं सर। ये एफएलडी का प्रोग्राम है सर, जिसमें 260 हेक्टेयर में लगा था और 630 डेमो थे। ये उसके फोटोग्राफ्स हैं सर। और इसी प्रकार से ये ट्रेनिंग जो कंडक्टेड किए गए हैं अलग अलग केवीकेस के द्वारा, उसको आप देख रहे हैं सर। इसमें 4 से 71 कोर्सेज में ट्रेनिंग हुए हैं, 728 दिन का ये कार्यक्रम था, और ये पार्टिसिपेंट 15,458 आपको दिख रहे हैं सर। ये उसके डिफरेंट एक्टिविटीज है सर। ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज है सर, जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाइड करके इसमें दिखाया है सर। ये सर थोड़ा सा इश्यूज पे आता हूं मैं कि बस्तर केवीके के क्षेत्र के सारे केवीके में पोस्ट खाली हैं, स्पेशली जो साइंटिफिक पोस्ट हैं, और बाकी जो पोस्ट है सर वो संविदा से भरे गए हैं सर। ये कुछ इश्यूज है सर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि साइंटिफिक जो पोस्ट है इसकी कमी है, और बाउंड्री वाल का जो है दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर में इसकी आवश्यकता है सर। इरिगेशन फैसिलिटीज में ट्यूबवेल और पाइपलाइन की जरूरत है। इसी प्रकार से सर सीड गोडाउन केवीके दंतेवाड़ा में, कोंडागांव में और सुकमा में कमी है। थ्रेसिंग फ्लोर की कमी केवीके कोंडागांव और सुकमा में भी है सर। और जो स्टाफ क्वार्टर की बात है तो बस्तर में सर स्टाफ क्वार्टर मिलने का बहुत कठिनाई होता है सर। तो ये सभी केवीके में लगभग स्टाफ क्वार्टर की कमी है। और ठीक है सर लास्ट पॉइंट तो लीजिएगा
कि आजकल सर जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं उस कार्यक्रम में 300, 400, 1000 की जो है कृषकों को बैठाने की बात होती है, जबकि केवीके में जो ट्रेनिंग हॉल है उसकी कैपेसिटी मात्र 50 है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें रेंज आता है कि इतने लोगों को बैठाना है करके। तो ये बड़े कैपेसिटी के ट्रेनिंग हॉल की जरूरत है बस्तर जोन के सभी केवीके में। थैंक यू सर। Thank you so much, Dr. Thank you so much. Next, I request Dr. G.K. Das, sir, Professor and Head Meteorology, for presentation, please. हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। आपके प्रेजेंटेशन को बड़ा कर लीजिए बस। ओके। स्क्रीन शेयर करिए बड़े बड़े करके। ओके, दिखाई दे रहा है सर? हाँ, अब दे रहा है जी। ओके, नमस्कार। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस की सबको बधाई हो। मैं जो है प्रचलित उपलब्धियां उभरते मुद्दे के बारे में अपनी बातों को रखूं। आपका नेट नहीं। हाँ, दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। हेलो। जिसमें छात्रों के प्रायोगिक अनुसंधान, प्रयोग, प्रदर्शन आदि के पश्चात अतिरिक्त भूमि पर बीज उत्पादन कार्यक्रम दिया जाता है। इसी प्रक्षेत्र पर किसानों को नवीन तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण और उनको प्रक्षेत्र भ्रमण भी कराया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ अनाज, दलहन, तिलहन का प्रजनन का आधार प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम दिया जाता है। चारा फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों हेतु उन्नत रोपण सामग्री बीज उत्पादन, बांस उत्पादन कार्यक्रम, कड़कनाथ प्रजनन उत्पादन कार्यक्रम, नगीन मछली का प्रजनन कार्यक्रम, लाख उत्पादन कार्यक्रम, मधुमक्खी पालन और आलू का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विगत 2 वर्षों से विश्वविद्यालय में जो है हल्दी, अदरक, जीविकन और स्थानीय भाजियों का बीज उत्पादन, संकर बीज का बीज उत्पादन और देसी किस्मों का जो है कंपोजिट वैरायटी का भी जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में कुल मिला के लगभग 1519 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से लगभग जो है 1465 हेक्टेयर में जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। हमारे सभी जो है प्रक्षेत्र जो है ये रिवॉल्विंग फंड मोड पर चल रहे हैं और लगभग 10,000 क्विंटल बीज उत्पादन के साथ साथ शुद्ध लाभ के साथ संचालित हो रहे हैं। बीज उत्पादन की हमारे यहाँ 3 टाइप की व्यवस्था है। एक जो है एनएसपी के अंतर्गत बीज उत्पादन, जिसमें बिल्डर सीड उत्पादन कार्यक्रम किया जा रहा है। मेगा सीड में फाउंडेशन, सर्टिफाइड सीड और प्लांटिंग मटेरियल का बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जाता है। इसी तरह से सीड हब के अंतर्गत जो है किसानों के खेत में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेकर उनसे खरीद कर वापस उनको जो है भेजा जाता है। इसी के अंतर्गत नाभिकीय प्रजनक बीज उत्पादन के मांग के अंदर जो एनएसपी का जो इंडेक्स आता है उसके हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। बीज उत्पादन की तकनीकी संबंधी अनुसंधान को मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट करने का भी कार्य करते हैं और बीज उत्पादन के प्रसंस्करण, भंडारण, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल और बीज उत्पादक कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण भी इसी फार्म के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। विगत 2021 में अपन लगभग हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन के हिसाब से जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। लास्ट ईयर चूंकि खरीफ में पानी गिर गया था तो थोड़ा सा बीज उत्पादन कार्यक्रम कम हुआ था। रबी में भी जितना इंडियन हमको मिला था उतना उत्पादन हम लोगों ने करके दिया था राष्ट्रीय स्तर पर। इसी तरह से जो है मेगा सीड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो है फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड और बीज उद्यानिकी फसलों का जो है बीज और पौधरोपण को तैयार करके जो है राज्य के किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे जितने भी नर्सरी हैं वो सब एक्रीडेटेड हो चुके हैं, जिनका 3 साल से ऊपर हो चुका है और उनके द्वारा जो है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार करके जो है किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। दोनों प्रोजेक्ट जो है ये हमको जो रिवॉल्विंग फंड मोड पे चल रहे हैं, जिनके रिवॉल्विंग फंड का जो हमको सीड मनी मिला था इसको वापस कर दिया गया है। वर्तमान में एनएसपी जो है लगभग 1 करोड़ 38 लाख के शुद्ध लाभ के साथ ये संचालित हो रहा है। मेगा सीड में लगभग जो है 76 लाख का हमको शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है और एनएसपी में लगभग 4 करोड़ का जो है राशि हमारे पास फिक्स विगत कई वर्षों से जो है 4 करोड़ की राशि हमारे फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। कुल मिला के हमारे समस्त फार्म जो है हमारे जो साथी जो है उनके कठिन मेहनत से जो है लाभ में चल रहे हैं। इसी तरह से आधार बीज उत्पादन काफी मात्रा में हम लोग कर रहे हैं और इसी को प्रमाणित
बीज के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से नेशनल जो इंडियन है उसका जो है नापकी अपना ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करने के बाद जो बचे हुए सीड को हम लोग जो है सीड चेन में ले जाते हैं और यहाँ किसानों को भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें दलहन है, तिलहन है और अन्य फसलें जो है कोदो, कुटकी, रागी सभी इसके अंतर्गत जुड़ा हुआ है। रबी में भी जितनी भी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोग आधार और फाउंडेशन सीड जगह बचने पर प्रोड्यूस करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से सीड हब चल रहा है, जिसमें काफी मात्रा में राशि प्रदान किया गया है, लगभग 1 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि अभी मैंडेट से थोड़ा पीछे चल रहा है। इसी तरह से हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से विश्वविद्यालय के अधिकांश फार्मों में जो है गोडाउन जो है लगभग 28 की संख्या में 1,000 मीट्रिक क्विंटल की क्षमता के तैयार हो चुके हैं और ग्रेडर यूनिट भी तैयार हो चुके हैं, जिससे हम लोग जो है प्रोसेसिंग और एलिमिनेशन का काम को इसके अंतर्गत करते हैं। हमारे पास टिश्यू कल्चर लैब भी उपलब्ध है, जिसमें हम लोग जो है ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पौधा तैयार करते हैं। इसकी क्षमता जो है लगभग जो है 10 से 12 लाख की है और विगत 4-5 वर्षों के गवर्नमेंट से लेने के बाद 4-5 वर्षों के अंतर्गत हम लोग अपनी क्षमता तक पहुंच गए हैं। इसमें पिछले 5 सालों में हमने 16-17 से इसको टेक ओवर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से, और अभी जो है अभी तक 14 लाख के आसपास हम लोग पौधा तैयार कर चुके हैं और 20-21 में लगभग जो है 10 लाख पौधे का हम लोग जो है तैयारी करके रखे हैं। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से इंडियन आते जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग पौधे को सप्लाई करते जा रहे हैं। इसी तरह से बिलासपुर में जो हमारा जो है व्यावसायिक बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड का उत्पादन किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट के और किसानों की आवश्यकता के अनुसार इसमें जो है प्रोडक्ट तैयार करके उनको उपलब्ध कराया जाता है और इसी के अंदर इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो हमारे कृषि परिषद के प्रभावी प्रबंधन में जो बढ़ते मुद्दे हैं उसको मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। विश्वविद्यालय के नए प्रक्षेत्र में कृषि उत्पादन हेतु मूलभूत सुधार का अभाव है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रक्षेत्र हेतु स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति की आवश्यकता है। स्वीकृत प्रक्षेत्र प्रबंधकों को पदोन्नति का चैनल बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रक्षेत्र प्रबंधक के पास आगे का कोई प्रमोशन का चैनल नहीं है, जिससे थोड़ा सा उनके मन में भविष्य के प्रति चिंता रहता है। विश्वविद्यालय कई प्रक्षेत्रों की प्रति कम उत्पादकता है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रक्षेत्र में विभिन्न अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले और सब्जी वालों आदि फसलों की उत्पादित प्रजनक आधार प्रमाणित बीज एवं उच्च गुणवत्ता युक्त पौध सामग्रियों का सुनिश्चित विक्रय नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी इस साल कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिला है। शायद कोरोना पीरियड था या और दूसरा कोई हो सकता है, इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। समस्त प्रक्षेत्रों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और प्रक्षेत्र में कार्य अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि एवं सुविधाओं का अभाव है, जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you so much. Now, request to Ravindra Tigga, Senior Scientist and Head, KVK Ambikapur, for 2 minutes presentation only. डॉक्टर 2 मिनट्स से ज्यादा मत लीजिएगा अभी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और खाने का टाइम भी हो रहा है। जी विजिबल है सर? हाँ जी विजिबल। आपकी आवाज भी आ रही है, आप शुरू कर दीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है ना, प्लीज डायरेक्टली शुरू करिए। स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। I am going to present farm achievement and emerging issues of North Hilly region of Chhattisgarh. These are the farms of North Hilly regions and their establishment here. नॉर्थ हिली रीजन के 9 जो प्रक्षेत्र हैं सभी वेल डेवलप्ड हैं, जिनके पास अपना स्वयं का भूमि है जो 210 हेक्टेयर है, जिसमें से नेट कल्टीवेटेड एरिया 110 हेक्टेयर है, जहां बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया जाता है। और जहां तक सॉइल टाइप करें तो सैंडी टू क्ले लोम सॉइल है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 132 से 243% है। और जहां तक बीज उत्पादन की बात करें तो बीज उत्पादन आधार बीज और प्रमाणित बीज उत्पादित किया जाता है, मुख्य रूप से राइस, व्हीट, मस्टर्ड, चिकपी और फील्ड पी का। और जो टोटल प्रोडक्शन किया जाता है नॉर्थ हिल रीजन से, टोटल फाउंडेशन सीड 2068 क्विंटल, सर्टिफाइड सीड 376 क्विंटल और क्वालिटी सीडलिंग्स एंड सेपलिंग्स 3,97,000। और इसी प्रकार से कुछ केवीके कुछ फार्म के द्वारा
शासन की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें सर्विस प्रोवाइडिंग का भी काम किया जा रहा है केचुआ उत्पादन करके, जिसमें केवीके अंबिकापुर है। पिछले वर्ष 59 क्विंटल केवीके वर्म्स का उत्पादन किया गया था। इसी प्रकार से बलरामपुर में 2 क्विंटल 85 केजी वर्म्स उत्पादन किया गया था और इसे गौठानों तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रकार से ये फोटोग्राफ्स है सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम अंबिकापुर वर्मी कंपोस्ट एंड वर्म्स प्रोडक्शन फोटोग्राफ्स, सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम एट बलरामपुर, planting material preparation at Balrampur, worms and vermi compost production at Balrampur, a seed production program at KVK Manpat, seed production program at Jaspur, seed production program at RMD Kars Ambikapur, seed production program at Kars Korea, seed production program at Kars Jaspur, seed production program at PRS Manpat। जहां तक इनकम की बात है तो 2020-21 में कुल 42,97,000 इनकम प्राप्त हुआ था और फार्म प्रॉफिट को विश्वविद्यालय में डिपॉजिट करने की बात है तो आज तक 65 लाख रुपए डिपॉजिट किया जा चुका है, जिसमें आरएमडी कार्स 5 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जमा किया था, पीआरएस मैन पार्ट 10 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जमा किया था, केवीके अंबिकापुर 50 लाख रुपए जमा कर चुका है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 40 लाख रुपए और 20-21 में 10 लाख रुपए। ये कुछ एक्सटर्नल फंडिंग कुछ फार्म्स को मिले हैं जिला प्रशासन के द्वारा, तो ये कुल 1,14,09,127 रुपए ये एक्सटर्नल फंडिंग मिले हैं जिससे फार्म रिसोर्स डेवलप किया जा रहा है। कुछ केवीके में मॉडल भी काम कर रहे हैं जो एक स्थिर आमदनी फार्म को मिल रहा है, जैसे केवीके अंबिकापुर में 1.6 एकड़ में फार्मिंग सिस्टम मॉडल है जिसमें सालाना जो इनकम है 6,15,800 रुपए प्राप्त होता है। उसी प्रकार से बलरामपुर में 1.5 एकड़ का आईएफएस मॉडल है जिसमें 4,41,272 रुपए प्राप्त होता है। इसी प्रकार जसपुर में आईएफएस मॉडल है 1 एकड़ का जिसमें 1,05,630 रुपए प्राप्त होता है। ये कुछ इमर्जिंग इश्यूज हैं फार्म के। आरएमडी कार्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म रोड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोली हाउस, कार्स कोरिया में एफपीओ की आवश्यकता है, फार्म बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फेसिंग फ्लोर एंड बाउंड्री वॉल। जसपुर में कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल एंड सीट गोडाउन, पीआरएस मैन पार्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल, सीट गोडाउन विद कंट्रोल कंडीशन, केवीके अंबिकापुर में सीट गोडाउन कम वर्किंग सेट एंड शेड नेट हाउस। कार्स केवीके कोरिया में इंक्रीजिंग फीडिंग कॉस्ट फॉर कैटल एंड पोल्ट्री and lack of storage facility, KVK Jaspur में to improve health and increasing cropping area by diversified crop, KVK Balrampur lack of irrigation water and poor soil fertility status, KVK Manpat irrigation facilities and storehouse. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Next, I invite Dr. Ashwini Thakur for the 2 minutes presentation from College of Agriculture, College of Horticulture, Jagdalpur. Yes, sir. 2 मिनट में करिएगा। आपका शेड्यूल और अच्छे हुए टाइम एक बार वो रिमाइंडर नहीं किया। नाश्ता मंगवाता हूँ। 2 मिनट जितना समय कह रहा हूँ मैं करना है क्या? कहाँ थे कहाँ? आप अनम्यूट करिए अपने आप को, डॉक्टर ठाकुर। सर स्लाइड दिख रहा है? हाँ, आप दिख रहा है, आपका अनम्यूट हो गया, स्लाइड दिखा दीजिए बस। ठीक है, दिख रहा है आप। Good afternoon, all of you. Today I am going to present farm achievement and emerging issues of Bastar Plateau of Chhattisgarh. Sir, Chhattisgarh or Bastar Plateaus are having 4 colleges and 7 KVKs. Now I am start to SG Kars Jagdalpur. Here, sir, only 92.4 hectares land is available for this total area under the 17
a hectare is for the seed production. Out of this, 1,16,000 rupees net income was earned during 2021, and this year 2,34,000. And so total seed production was 410 quintal, and they are produce a lot of crafted seedlings. And this is emerging issues like drainage. Drainage is very important for the SG cars because new construction is started beside the farm. That's why drainage is a problem and require farm implements and tubewells. Now, sir, Kanker. And Kanker having 14.40 hectares only, and net cultivated area is 8.50 hectares. From this, they are earning 1,26,000 only during the 21 and 22. They are earning only 1,43,000, and they produce 386 quintal of different crop seed. And this is emerging issues, that is establishment of IFS model, construction of farm pond for IFS model, underground irrigation pipelines, etc. And sir, Narayanpur College, they have only 4,350 meters square area. Out of this, they are cultivated in 3,000 meter square area, and they are producing only 13.35 quintals paddy in 2 years. And they earning money from the different agencies like Marega for root stock production 20.25 lakhs, and fruit plantation under Marega at Gutan. That was mainly that was only 9.6 and 9.35 lakhs for the Kerala and Bhatpal. And sir, they are just received 7.17 hectare land near the KVKs. And sir, Horticulture College and Research Station having 6.90 hectare land, and net cultivated area is 3.67 hectare. And its earning was last year only 3,715. This year we are getting some handsome amount, 2.64 lakhs. And we produced 31.76 quality seeds from different crops. And we have earned money. We have got money for 455.58 lakhs from the TMFT and Marega for the coffee paper production and plantation nursery preparation. And this is sort of our emerging issues. And we are also getting 16.43 hectare land nearby Chitrakoot. And sir, now I start KVKs. First KVK Kanker having 18.18 hectare land. Out of this 10.49 hectare. डॉक्टर ठाकुर, आप अपना समराइज करिए, बस ये केवीके का देख लिया है लोगों ने सर। आप अचीवमेंट जो फाइनल है बताइए, इमर्जिंग इशू वगैरह। ओके सर, दिस इज सर इमर्जिंग इश्यूज ऑफ केवीके कांकेर रिक्वायर्ड। ये सब देख लिया अपन ने, आप अपना दिखा दीजिए। एंड थ्रेशिंग फ्लोस, यस सर। एंड आल्सो दंतेवाड़ा दिस ईयर अर्निंग सर 2,13,08,000, एंड दे हैव स्मॉल कंस्टेंट्स नीड ऑफ इरिगेशन पाइपलाइंस, हाई इंटरवेंशन। अभी ये क्या है ना, उन्होंने नारायण साहू जी ने बता दिया डॉक्टर, आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाइए, है ना, लास्ट में देख लीजिए, फिर समराइज करते हैं। सर दिस इज केवीके नारायणपुर सर, दे आर got amount of 104 lakhs from the different agencies. And this is a Sukma is a new KVKs and having 20.14 hectare area. Out of this, they are producing crops in 14.16 hectare land, and they
got external funding from 468.59 lakhs rupees. And sir, Krishi Vigyan Kendra Bastar, it has emerging institute for machines such as reaper, multicrop, and tube wells, fencing, drainage channels, and leveling. And Kondagaon, Kendagaon having they require 4 borewells, channeling, leveler, tractor trolley, thresher, seed godown, grader, and multi-processing units. That's all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Good. Chandrakar sir, Director Farm for presentation. Our main objective of farm is to produce leadership of improved crop variety again intent of Government of India and state to help the production of foundation and certified seed for sowing of farmers. And second objective is to coordinate all the seed production program of university farm. And next, to strengthen the farm facility of all the farm of IGKVs. Progress of our farm activities. Bigger seed production during Kharif 2021, total 1,336 quintal bigger seed produced of 1948 variety of rice, soybean, pigeon pea, urd bean, half gram, kodo, little millet, and finger millet. Similarly, under Mega Seed Project, Foundation Seed, Certified Seed, and TL Seed produced 6,101 quintal of 25 variety of rice, 6 variety of soybean, pigeon pea, 2 variety of pigeon pea, 2 variety of total 48 variety of all these crops. Bitter production program during Rabi. During Rabi of this crop, wheat, chickpea, field pea, lasaras, lentil, total bitter seed production program taken in 60.4 hectare to achieve intent of a target of 887 quintals of bitter seed. Next. In foundation certified and fruitful level seed taken in 269 hectare to achieve target of 481 quintals of this variety of wheat, chickpea, field pea, lasaras, linseed, and mustard and moong crops. Construction of seed godown and processing plant under SMSP submission of seed production by Government of India through state government at IGK Raipur during 2061 and 2017, 387 lakh release for 3 processing plants and 6 godown. Out of these are complete during 2020 and 21. During 2018 and 19, 718 lakhs
sanctioned for 13 seed processing plant cum seed grader. Out of the 8 seed processing plant cum grader established, and remaining 5 to be completed up to March 22. During last 2019-20, 8 seed godown cum seed processing plant was already sanctioned and released 224 lakhs. 8 godown, 5 at College of Ambikapur, Kawarda, Rananga, Dhantari, and Mungeli, and 3 KVK Farm, Mahashamun, Balod, and Sukma. All 8 process plant to be completed up to March 2020. Financial position of NSP Raipur during last year. NSP Raipur and NSP Bhatapara Hasda earned NSP Raipur earned 31 lakhs profit, and NSP Hasda 25 lakhs earned. Out of this, only 19,000 rupees work under renovation of germination chambers. Next. And financial position of mega seed NSP Raipur and NSP Hasda. NSP Raipur during last year 3.4 lakhs earned, and at Gujarati 21.3 lakhs earned during 2021. Out of this, only 36 lakhs and 36,000 and 18,000 used for germination chamber. Some emerging issue of farm issue to increase the area of pulses, oilseed, and minor millet seed production program, especially in move, oat, lentil, linseed, safflower, kodo, kutti, and ragi. Next, the pulses productivity, especially in move, oat, and lentil, are very low in comparison to national productivity, hence need to be addressed. Next, need of post-emergent weedicide in case of field pea, lentil, and lathyrus is required. Inability of quality seed of new high-yielding variety in case of move, oat, lathyrus, linseed, and millet. Most of the university farm are taking seed production program 1 or 2 cropping seasons. Therefore, there is utmost need to enhance the cropping intensity from 200 to 300% by involving summer, move, oat, and maize crops. Most of the farm are producing seed under Chhattisgarh State Seed Corporation instead of our own industry. The direct production and marketing of seed under umbrella of IGKV will not only make identity of university, it will also nullify the dependency upon the seed corporation in terms of subsidy, registration, and marketing, etc. Expenditure in seed production program need to be minimized through mechanization. Urgent need of fund for farm development of new colleges are fencing, field leveling, too well, dressing floor, and seed godown. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Sir, kindly I invite Dr. M.P. Thakur, sir, who is the organizing secretary of this workshop, to present this agriculture education. Good afternoon to all of you. Dignitaries who joined offline and all the participants.
who have joined virtually. Friends, today I am here to present before you the progress of agricultural education and the issues which are there. Friends, if you look at the ancient system of education, there used to be a guru, and there used to be a shishya, and there used to be an ashram where I think the interaction, or if you see the learning outcome of guru, shishya, and ashram, I think thousands of Muni, Rishi Muni, and Mahapurush we have produced. And I think due to this only, the India was designated as Sone ki Chidiya kaha jata tha. But if you look at the modern system of education, where Guru is converted into Shikshak, Shishya is converted into Vidyarthi, Ashram is converted into the concrete mahal or so-called classroom. And now for the last 2 years, I think all these mahals have been converted into the strong network, strong internet network. Sir, if you look at the learning outcome in the modern era, in the ancient old system of education, here today we are celebrating 36th Foundation Day of the university. And sir, I am very sorry to say that this university in the last 35 years could not produce even a single IAS, a single IPS, and unfortunately, a single best teacher also, which is recognized by the ICR. We could produce one IFS, one person from the Indian Revenue Service, and of course, few international scientists. I am very proud to say that Dr. Arvind Kumar, who is the alumni of this university, he is now occupying the highest position in the ICRISAT, that is Deputy Director General Research. I think I know the predecessor before Dr. Arvind Kumar. He was Dr. Valnane, and he belongs to our field. So I would only say that there is a need to concentrate more towards very important two partners. One is teacher, another is student. And unless the bonding between these two is strengthened by any system of education, I think the learning outcome cannot be enhanced. Sir, it's a matter of great pleasure that two of our students from agriculture engineering, they have been declared, they have been cleared the state administrative service examination, and now they are deputy collectors. One student of NSS received a cash prize from the Honorable Governor, and one cultural team of our college participated in dance competition, and it was they got the 1,10,000 cash prize from the Honorable Chief Minister. Sir, if you see the kind of mechanism which this university has developed, I think one must appreciate Professor Kuril is here, and he has been the Vice Chancellor in 3 universities. This is the 4th university, Mahatma Gandhi. Sir, you will appreciate that we have MOUs. We have signed MOU with 56 organizations, including ICR organization, including Central Agriculture University, including ICR Institute, and you will see that, you will wonder that many of our students, at least every year we are sending about 70 or 75 students to these national organizations, and they are really doing wonders. They are publishing very good paper in a very good journal, and very good work has been already. Should I operate with this? Next. So then if you look at the national recognition of our students, sir, in my opinion, the quality of education is judged by the quality of student who you are producing and where they are employed. If you look from that angle, sir, from College of Agriculture alone, these are the National Talent Scholarship of UG 12 with NTS PG 48, GRF 9, and SRF 18. The SRF 11. This is the situation of 2021. I think you can feel happy, but in my opinion, if you look at, I think we are second in the country as far as intake is concerned. And if you look that, I think this figure is it is at the bottom. So I would urge all my students, all my heads of the department, kindly look into it and try to increase this kind of fellowship, because this is very, very important. And you can be judged with this kind of system only. If you look at this kind of fellowship in the year 2019, sir, here there were 12 students who got the full-fledged fellowship of 12,640 rupees, and for PG program. With NTS, there were 78. I think in the year 2019, there was quite good numbers we achieved. But if you see the total number in other organizations, sir, Kuril Sahab, I tell you, sir,
In IRA, more than 150. More than 150 fellowships are there. If you go to Karnataka, if you go to Kerala, you'll find more number of 100, more than 150, more than even 125, many of the agriculture university. So I think in our university, we have to concentrate more. I request and I would urge all my teachers to kindly look into it and see that these are the fellowship, these are the post-matric fellowship provided by the state government. And here is the amount you can see. Now, if you look at the fellowship GRF, when our student who did his graduation from this university, if he is going to other universities as GRF, then you see the number, extremely low numbers. Similarly, if you see the SRF, again, very poor number is there. I think, and again, I would, if you see the NTS, UGPG, I think quite the number is quite few. And what we need is, we have to work very hard. We have to train our students. We have to ask them to compete. And I think they have, then only they can succeed. Sir, if you see the All India Entrance Examination for Agriculture, which is conducted for PG, I do not know many of my colleagues whether they know or not. So there are 600 fellowships with the 12,640 per month fellowship, and there are 1,862 with NTS where they get 5,000 rupees fellowship per month, and there are 124 fellowships where you won't get any financial, where you won't get any money, but you will be allowed by ICR to get admission in a good agriculture university. So I think, again, I would urge my teachers, again, I would urge my faculty members to kindly look into it and see that how best your students can perform, they can enhance the number of fellowships which they are getting in the periods to come. Sir, if you again see, there are 300 JRF, there are 300 senior fellowships which are for PhD, and if you look this, again, the number is extremely poor, only 11, sometimes it is 8, sometimes it is 7. So I think this number is again not appreciating, and if you see the amount, it's a handsome amount. It's a handsome amount given to our students, and our students from the accredited university, at least we have 11 colleges which are accredited, and the students of UGPG from those accredited colleges, they can compete in the All India Competitive Examination for PhD. They can very well compete in the All India Competitive Examination for Agriculture for PG program, and they can avail these kinds of fellowship. So my humble suggestion to all these students would be that kindly do concentrate how to enhance these fellowships. Now, if you see the total intake of Agriculture University, so it is 9,192. See the intake in the year, these 2 years, you can see there is 16% enhancement is there in the GER, and Professor Puril is very well known that in NAP it has been decided to enhance GER to the greater extent. Here again, if you see in the PG program, we have again a very good number we have enhanced, and PhD program, I think this data I have to verify, but this data is okay. This data I have to check whether we have increased the seat in PhD or not, because this data is I have collected from the office of the registrar. So I do not know whether it is, but to me, I think it appears to be some misleading. Sir, if you see the pass percentage in UG program, I think it is good. It's quite good, 82%. But if you look to the PG program, I think we will not be happy, and nobody, no director, deans, they will be happy to see this percentage. Why it is so, I don't know. Why it is so, I don't know. And I think I will request the Honorable Vice Chancellor to kindly take a meeting, kindly convene a meeting, and try to know what are the where the feedbacks are, where the problems are, why our students are not able to complete their master degree within 2 years, and again in PhD. Within 3 years, which is the residential requirement for PhD, you will wonder to know that only 8% students are passing their PhD within the stipulated. Now, why they are taking much time? I think we have to revisit and we have to see what are the problems. Now, sir, the second very important component of the learning or the education is that is features recognition. When I was trying to compile the information, I was thinking that I had to compile this information maybe in 3 or 4 slides. But when I tried to compile the entire, I see, sir, only out of maybe around 550 teachers, researchers, teachers, extension workers who are involved in teaching, you will hardly see that only 7 people in the university,
they got the national recognition. Say Basant Rao Naik Award, Professor Pali is not here, Dr. Pali is sitting here, Fakhruddin Ali Ahmad, Dr. Pali and Adhikant Pradhan, Jawaharlal Nehru Award. Again for PhD, this award is given by ICR, only 2 persons. And again out of these two, one was from IRA, he was pursuing his PhD from IRA, he was the former head, Dr. S.B. Gupta. If you see Swami Sahajanand Award for extension work, sir, it is a matter that why our people, Director Extension is sitting here, I will urge him, very good work is done by our people. I think they are not aware of this kind of award which is given by ICR. So I will just request Dr. Bajpayee, Director Extension, to kindly sensitize your own people because they are doing very good work. I know. And only Dr. Birbal Sahu from KVK Kafe, he could get the Swami Sahajanand Award. National Water Award 2019-18, it was given to Dr. Jiten Singh. Then Above and Beyond Award, it was given to me. These were the two CAS awards. This is the only award. Sir, here I have not considered the group award because I think that the individual teacher is teaching to our students. So as far as recognition to individual is concerned, I think these were the awards which were given to the individual. If you see the position of 2019, sir, I think we were very happy. Sir, when there were 17 colleges, I think everything was going nicely. But when the number was enhanced to 33, I think everything went wrong. Now, how to correct it? Both the big persons, heads of the universities, 2 universities, they are sitting here. I do not know how to improve it, but I think we have to do something so that the learning process can be enhanced. Sir, if you look at the ranking of world universities, I tell you, sir, it is given only based on the quality education and the alumni employment. And again, the quality of faculty. Sir, 60% weightage is given to these, and only 40% weightage is given to the research purpose. So here I would like to tell to my faculty, to all the dean directors that kindly look into it. I think this area, education, has not been given that much of emphasis as it is required in this university, I think. So my humble suggestion to all would be how to enhance education, how to see the students which are taught by us, they occupy good position in the country, in the good institutes, so that it comes as a credit of the university. And you know, sir, very well that even in the accreditation, all these things are taken into consideration. Then again, the quality of faculty. Sir, it is measured by faculty members who have won major academic distinction. सर मैंने जो आपको बताए थे वो सारे के सारे डिस्टिंक्शन तो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल का एक ही डिस्टिंक्शन है, वो है अरविंद कुमार जो डीडीजी जज है इक्विसेट में. ही इज नॉट हियर. सो व्हाट आई सी, आई थिंक दैट we have to improve, we have to ask our students, we have to ask our faculty, and I think the kind of work which we have been doing, I think it is very good. I don't deny, but I think they are not able to, either the awareness is not there that these kinds of awards are there to recognize the faculty. I think there is a very strong need to recognize this kind of work. And research program is given 40%. Now, sir, we have 3 faculties to offer these programs. In PG, we have 20 disciplines to offer this program, and in PhD there are 19 disciplines we have to offer. So if you see the enhancement ratio of GER at UG PG level, sir, recently in this year only, we have introduced 246 under self-finance scheme. And I think this is a credit to the university that only in 1 year we have enhanced this GER to the greater extent. And again, we have started College of Forestry with 24 seats for the first time. And then for the first time, university has enhanced 1 seat in each department for the in-service candidate. We are taking care of the Department of Agriculture people also. Earlier, there were only 13 seats. But now in the last 2019, we took a decision to enhance the seat. And now each seat is given, 1 seat is given to each department. Similarly, provision of 20 seats in PG and 19 seats in PhD program is there. And we again under self-study, self-finance quota. Sir, if you look at, we have started PG program in other campaign of the university. Say 6 new departments at BTC, cars,
5 new departments at SD Jagdalpur, 2 new departments at College of Horticulture Jagdalpur, 3 new departments RMD, and likewise. And again, we have enhanced the capacity to the greater extent by introducing PG programs in these universities, in these different colleges of the university. Now, sir, if you see the present status of the Constituent College, my colleague Dr. R.K.S. Tiwari, he has also spoken so many things. I would only say that there are only 16 colleges of IJKB, sir, having good infrastructural facility. 11 plus 5, only 16. Rest of the college. If you ask me, as Dean Faculty of Agriculture, I would say that stop them and follow the ICR norm, which is fixed by the ICR to accreditate those colleges and universities. Sir, there are 17 colleges of IJKB. यदि आज लड़के आ जाएं सर आपके हॉर्टिकल्चर कॉलेज में कुलीन साहब, तो आपके पास बैठाने के लिए जगह नहीं. What you talk of the infrastructural facilities or laboratory facilities or library facilities or the kind of environment which we are supposed to give to our students. Sir, 17 colleges need special attention of the Honorable Agriculture Minister, of the Honorable Minister, of the Honorable Governor, and of all those who are involved in education. See, if you see the emerging issues, in most of the agri-horti colleges, Dr. Tiwari has already spoken to you, sir. I think he has given a high figure. He was telling that 56% posts are filled up. Sir, in non-technical staff, if you see the Narayapur area, Narayapur, sir, out of 25 staff, only one staff is there, 4%. If you see the teaching staff, it is only 24%, 25%. So the staff, the faculty position which is filled up is varying only from 4 to 35%. This is not at all good, sir. I do not know what to do. सर डाटा कहाँ है सर? वो तो सर वो सर 2017-19 का था, वो 17 कॉलेज का था. 33 को मिलाओगे ना, यही पोजीशन आएगी. 33 को मिलाओगे तो एक्चुअल पोजीशन यही आएगी हॉर्टिकल्चर की. यदि आप एग्रीकल्चर की बात करें सर, तो वी आर स्टिल बेटर. बट इफ यू वांट एग्रीकल्चर, with agriculture, you will see the entire the situation is totally changed. Sir, we have only 25% post filled up. 25% post. So, sir, it is very unfortunate that 66% students from the constituent colleges and 100% students from the private affiliate colleges, they are not eligible to apply for All India test conducted through ICR. इसके विषय में क्या करना है, ये बहुत ही बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन रियल फैक्ट है हमारे 15 कॉलेज, the students from those colleges are, they cannot apply for ICR All India examination, for IJRF, for SRF, they can't apply. No girls student, no girls hostels facilities in 17 upcoming colleges are there. Many of the parents, they ring me, sir, वहाँ क्या है, हॉस्टल है? जैसे मैं बोलता हूँ हॉस्टल नहीं है, they deny to get their ward admitted in those colleges. So if you really want that, these colleges should flourish. If you really want to groom the students from these colleges, I think you have to see and you have to ensure, because ultimately, if they are admitted, then it is our responsibility to groom them. There are no provision of funds for repair and maintenance of college building hostel. I do not know why it is not being taken care of. हमने पहली बार मेरे ख्याल से कंप्ट्रोलर साहब को बुलाया गया होगा. चौहान साहब, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं. Kindly raise your voice before the chief minister and before the finance minister, that why, if you are opening these many colleges, it is your duty to provide the money, it is your duty to provide the fund. The lack of online facilities for preparing competitive examination by UG PG students. I think again for the last 2 years we are fighting with the corona, and these facilities which are very much required, it is not there. Sir, at my level, I have I'm going to purchase about 50 licenses, and for each license we are paying 4,007 rupees, and the student will prepare for, he will have the access for 50 lakh questions, 30,000 ebooks,
and 1500 competitive examination. And this facility is already recommended by ICR, so we are going to purchase that. So again, development of quality e-content is Hindi and English. Site is not there. If you visit the site of US Bangalore or US Harvard, you will see that beautiful notes are there prepared by the teachers. But our teachers, they have not prepared the notes in Hindi, which is easily palatable and digestible to our own students, which are from the Hindi language, Hindi. Support to poor and weak students. We have no system. We are not doing anything for this. I talks a lot about this. Then again, the motivation, sensitization, creation of awareness among school children to guide them in higher education and agriculture. I think, sir, I will request the Honorable Vice Chancellor, Dr. Singh Sahab, to kindly get the appointment from Kekam Sahab, the school minister, and conduct this kind of program so that our school children who are in 12th class, they must prepare for PhD examination, or they must prepare for all India entrance examination for 15% conducted by ICR, and they should come, the team should come to agriculture, not to engineering and not to medical. And how to promote exposure to these agro-industry interaction and practical-based teaching learning process. Sir, this is very much required. Then again, I think we need a lot of improvements in our methodology of interactive teaching, group discussion to enhance learning outcome. Unless we enhance these, I think we will not be able to make justice for students. Sir, यदि ICR की गाइडलाइन को देखें आप, तो 30 हेक्टेयर लैंड चाहिए. चलिए मैं बस ये बहुत सारे और दूसरे लोग बैठे हैं तो बता रहा हूँ 28 और 21 बस. हाँ, और ये लास्ट स्लाइड है सर, जो आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से सारे IGPL जो यहाँ they will feel happy in the last 5 years. Our performance was exemplary and it was better than many of the old universities of the country. And thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much for good presentation. Now I invite Dr. Vivek Tripathi, sir, Associate Director of Research, for presenting the research activities of the Vishwavidyalaya. Sir, this is research at a glance at IJKVB. Our research history is very long. The research started in Chhattisgarh in 1903 at Lavandi Farm. उसके बाद हमारे पास में 1903 से हमारा रिसर्च स्टेशन लभांडी फार्म के रूप में शुरू हुआ. शुरू में केवल लोकल वेराइटीज को कलेक्ट करके उनका क्लासिफिकेशन करना, और उसके बाद पहली वेराइटी हमारी 1913 में इकोनॉमिक बॉटनिस्ट नाम से EB 17 नाम से निकली थी. उसके बाद रीजनल रिसर्च स्कीम 1965, देन फ्रूट रिसर्च स्कीम एट बिलासपुर 1965, देन मध्य प्रदेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1975, नार फेज 2, एंड अभी हमारे पास IJKV में 8 रिसर्च स्टेशन हैं. पूरे हमारे 8 रिसर्च स्टेशन में सर हम लोग लगभग 144 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक्रिप्स हैं, ICR के हैं, MIDH के हैं, ERI के प्रोजेक्ट्स हैं, बार के प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा लगभग 40 प्राइवेट कंपनियों के साथ हम लोग प्राइवेट ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं. हम लोग 7 प्राइवेट कंपनीज को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, 4 पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं रिसर्च के लिए, और लगभग 3 प्राइवेट कंपनीज के साथ हमारा MOU फॉर हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए है. ये हमारे अवार्ड्स हैं सर, जो हमारे लगभग 12 से 13 एक्रिप्स को बेस्ट सेंटर्स ऑफ एक्रिप के रूप में पिछले 7 वर्षों में, 7 से 8 वर्षों में रिकॉग्नाइज किया गया है. नेक्स्ट हमारे पास जो कंजर्वेशन हमारा सर जी
सर छूट क्या होगा सर? ठीक, 12 से 13 है। एनएसपी आया ना? अच्छा, ओके। वो सर एनएसबी में हम करते थे इसलिए उसको नहीं लिख पाए, बेसिक को लिख लेंगे इसके बाद। ओके 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 ओके। ये जो क्रॉप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करी है हमने, क्लासिफाइड की है और मेंटेन कर रहे हैं सर। लगभग 30,875 वेराइटीज हैं, जर्मप्लाज्म हैं, जिसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ये PPVFRA में हमारा जो एक्टिविटी है, लगभग 1800 किसानों की वेराइटीज को हमने वहां पर रजिस्टर्ड कराया है। इसमें लगभग 368 का हमको सर्टिफिकेट मिल चुका है और हमारे 2 सोसाइटीज को और लगभग 17 किसानों को इसके लिए PPVFRA से प्राइज मिला है। ये प्लांट वेराइटी डेवलपमेंट में जो हमारा काम है सर, तो 1913 में आप देखेंगे पहली वेराइटी हमारी निकली थी और बिफोर 1987, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, 56 वेराइटीज हमने 56 वेराइटीज डेवलप की थी। और 87 के बाद जब से हमारी यूनिवर्सिटी बनी है 152 वेराइटीज डेवलप हुई है। इस प्रकार यदि छत्तीसगढ़ में माना जाए वेराइटीज का डेवलपमेंट, तो 208 वेराइटीज अब 46 क्रॉप अभी तक हम लोग डेवलप कर चुके हैं। ये डिफरेंट हमारी वेराइटीज क्रॉप वाइज है। नेक्स्ट ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है हमने, लगभग 100 से अधिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है सर, और सारा डिटेल अभी सब जानते हैं, के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वन, ये फार्म इम्प्लीमेंट्स के बारे में है। ट्रैक्टर ड्रान, सेल्फ प्रोपेल्ड, एनिमल ड्रान और मैनुअल, लगभग 60 के आसपास लगभग डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंट्स हमने डेवलप किया है। नेक्स्ट, MIDH और NHM में भी हमारे के सारे कॉलेजेस प्रोजेक्ट जमा कर रहे हैं और लगभग 30 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पिछले 4 सालों में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं सर। इस साल का थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, क्योंकि इस साल जो छत्तीसगढ़ का NHM में टारगेट है वो कम हो गया है, इसलिए इस साल हम लोगों को कम ही प्रोजेक्ट मिले, पूरा टारगेट ही कम था। ये चिराग प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट में 1700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ है अभी, उसमें इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के रूप में हम लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। 6 साल हम लोग इस पे काम करेंगे और 8 डिस्ट्रिक्ट के 14 ब्लॉक में काम होना है और 17 करोड़ रुपए हमको मिलने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास 22 पोस्ट भी स्वीकृत हुई है और जिसकी प्रक्रिया हमारी भरने की चल रही है। इसके बाद जब इसका गवर्नमेंट और एक्सपेंशन करने वाली नॉर्दर्न रीजन में, तब हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की एक योजना है PMFME, उसमें भी हम स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं और इसमें हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में ODOP के आधार पे 7 सेक्टर में बांटा गया है छत्तीसगढ़ में। तो उसमें हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो 29 मास्टर ट्रेनर हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हमने हर सेक्टर के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर अपॉइंट किए हैं, वो 71 हैं। और हमारे साइंटिस्ट और हमारे स्टूडेंट्स ही डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं इस स्कीम में। इस स्कीम में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक के का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो वो अनुदान का वो प्रोजेक्ट तैयार करना और उस प्रोजेक्ट को पास करने की जिम्मेदारी यही DRPs की है। तो हमारे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पास आउट हैं MSc और PhD, और हमारे जो साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन द KVKs एंड द कॉलेजेस, उनको हमने नॉमिनेट किया हुआ है DRP के रूप में एंड दे आर वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट है कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का। तो पिछले वर्ष हमको 5.5 करोड़ की लागत से 2 इंक्यूबेशन सेंटर, एक हमारा फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर में बनने वाला है
दूसरा हमारा इंक्यूबेशन सेंटर केवी के जगदलपुर में बनने वाला है। ये इसी साल अभी जनवरी के इसी 3rd वीक में इसका काम शुरू हो जाएगा हमारा। और इसके साथ ही साथ हमने 3 जगह के लिए और इसी प्रकार के कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर के लिए हमने प्रपोजल सबमिट किया हुआ है। ये कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश होने के बाद हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 3rd पार्टी को और ऑन कमर्शियल बेसिस, और वो उसको रन करेंगे। ये स्कीम में इसका प्रोविजन किया गया है। ये दूसरा एक प्रोजेक्ट है सर, लगभग 94 प्रोजेक्ट्स छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत चले थे। तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से हमारा MOU हुआ है। तो इसका फाइनल इम्पैक्ट इवेल्युएशन इन प्रोजेक्ट्स का 94 प्रोजेक्ट्स का हम लोग हमारे साइंटिस्ट और KVK के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट भी हम लोगों को दिया गया है और विदिन 3 मंथ्स हम लोग, हमारी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, 3 मंथ में हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे इसकी। ये एक बड़ा काम यूनिवर्सिटी कर रही है। वे फॉरवर्ड वी आर ऑल इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो अभी बहुत सारी बातें चल रही है, ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग। अभी मेन फोकस हमारा होना चाहिए सेफ फूड पे। द प्रोडक्शन सिस्टम में भी वेरी, पर हमारा फोकस होना चाहिए सेफ फूड पे। दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड सेंसर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। एंड 3rd है सर पॉइंट मेरा, ये ब्लड पॉइंट है मेरे, लेकिन जो मेरे दिमाग में आया मैंने रखा हूँ, इनकम जनरेशन। आप लोग को सबको मालूम होगा कि पूरे देश में 12 करोड़ किसान और 14 करोड़ फार्म लेबर काम कर रहे हैं। इन 12 करोड़ किसान की मासिक आय सबकी 10,500 रुपए है। उस 10,500 रुपए में से जो सबसे बड़ा पोर्शन है उसकी आय का लगभग 4500 रुपए मजदूरी से कमा रहा है। तो अपने आप बहुत दिनों से चल रहा है, पर हिंदुस्तान के सारे लोग किसानी पे निर्भर हैं, किसान पे निर्भर हैं, सारा किसान सो रहा है। ये तो सुनते चलिए, ये डबल इनकम करना और बोलने की बातें हैं, लेकिन एक फार्मर्स की टोटल इनकम में किसानी से आय का भाग लगातार कम होते जा रहा है। 10,500 रुपए का जो 45% भाग, लगभग 40% भाग वो कमा रहा है मजदूरी से कमा रहा है, और 35% भाग मात्र आ रहा है किसानी से, और 15% आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री से, और 4% आ रहा है अपनी जमीन को लीज पे दे देता है या कोई दूसरे काम से। तो ये सबसे बड़ा जो फिगर वो आने वाला है चैलेंज। इतने लोग सब किसानों के लिए काम कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट भी कर रही है, अपन भी कर रहे हैं, सारा लोग लगा हुआ है, लेकिन किसान की आय में दिनों दिन जो किसानी की भाग है वो कम होते जा रहा है। अब इसलिए बार बार अपन बात करते हैं लोग किसानी क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल रहा ही नहीं। अब आप देखो कि किसान जो है, किसान की बजाय मजदूर ज्यादा बन गया, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है सर। क्योंकि शासन ने फेडरल में 2022 डबल इनकम कम हो रहा है, इसको बढ़ाने के क्या उपाय है, एक हमारी यूनिवर्सिटी को जो है ना बहुत जरूरी है बताना, ताकि किसान को जो है हम इसको बताएं, ताकि इनकम जनरेशन। नहीं सर, मेरा पॉइंट यही था आपको बताने का। पॉइंट का मतलब मेरा ये था कि जो लोग किसान के लिए काम कर रहे हैं, किसानी के लिए काम कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो जान ले। पहले तो जानना ही पड़ेगा कि अब सोचते हैं किसान की पूरी आय किसानी से, वो आधे से भी कम हो गई है। हाँ, वो तो है काम कर रहे हैं। मेरा पॉइंट लिखने का मतलब यही था कि यही थिंक पॉइंट है हमारा, इस पे सोच के अब काम आगे शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे जो करना है Thank you, sir. Thank you so much. Now I invite Comptroller of IGKV, Shri R.P. Chauhan sir, for presentation, please. देखिए, मेरे पास फाइनेंशियल फिगर प्रेजेंटेशन लाइक कुछ नहीं है, लेकिन वित्तीय मामला ऐसा है कि
किसी भी संस्था की रीढ़ है। हम जितना भी प्लान कर लेते हमारा फाइनेंसिंग अच्छा नहीं है तो हम कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जितने मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, क्वालिटी और क्वांटिटिव डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हो उसके लिए फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारे पास जो फाइनेंस का सिस्टम है, सबको पता है कि डायरेक्टर एक्सटेंशन उसके नोडल है, केवीकेस के लिए पैसा आता है हमारे पास, एक्रिप के लिए हमारे पास आईसीआर से पैसा आता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने सेटअप हैं, जो हमारे पास कॉलेज हैं और विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके लिए पैसा हमको स्टेट गवर्नमेंट मिलता है। तो आईसीआर से जो फंडिंग होती है वो हमको स्मूथली मिलती है। सभी हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपना प्रोजेक्ट बना भेजते हैं, या जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया हुआ है वो सब हमको स्मूथली मिलता है। मेन चैलेंज रहता है हमारे पास इसका स्टेट गवर्नमेंट का। तो आपको जान के खुशी होगी कि विगत 2 वर्षों में जब से मेरी प्रतिस्थापना हुई है, स्टेट गवर्नमेंट से पिछले साल में 6% ग्रोथ हासिल किया था बजट में, जबकि कोविड के लेवल कारण 30% बजट में डिडक्शन हो गया था। उसके बावजूद जो भी पैसा हमको प्राप्त होना था हमने पूरा लिया और विदाउट माइनस बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया। और 2021-22 में हमने फिर से 9% ग्रोथ हासिल किया है। और अगले साल अभी हमारी मिनिस्टर लेवल चर्चा हो गई है, उसमें आपको जान खुशी होगी कि सभी डिपार्टमेंट का बजट लगभग एज इट इज रखा गया है, लेकिन हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का बजट 11% से ग्रोथ किया है। तो इसको आप अपनी उपलब्धि मान सकते हैं। और चूंकि आपने सही फीडबैक हमको दिया, सही जानकारी दी, तो हम उसको सही ढंग से परफॉर्म करने में या प्रेजेंट करने में सक्षम हो पाए, और सक्षम होने के कारण हमको ये चीज मिल पाया। रहा सवाल पिछले 2 सालों में प्रावधान होना और पैसा मिलना, दोनों चीजें डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। बजट में कोई चीज का प्रोविजन आता है, उसको हमको प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से हमको रिलीज करना आता है, तो थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फाइनेंस डिपार्टमेंट को पैसा मिलता है। तो आपको जान खुशी होगी कि जो पैसा हमको पिछले साल अलॉट हुआ था मिलने के लिए 100% हमने प्राप्त किया, और इस साल हमने 75% प्राप्त कर लिया है। 25% का प्रपोजल पूरा गवर्नमेंट को सबमिटेड है। गवर्नमेंट जब भी परमिशन मिलेगा हमको 100% पैसा इस साल के जो हमको एलोकेट है वो मिल जाएगा। और 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको कि डायरेक्टर फार्म और डायरेक्टर डॉक्टर MP ठाकुर ने एड्रेस किया, उसके बारे में बता दूं कि विश्वविद्यालय 35वां स्थापना दिवस है, हमारे 35 साल हो गए, 36वां साल चलने वाला है। आज तक कभी गवर्नमेंट से आपने फार्म डेवलपमेंट के लिए पैसा प्राप्त नहीं किया है। यहाँ जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है, सभी केवीके को या डायरेक्टर फार्म को या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जितने भी 3 डायरेक्टर हैं, उनके प्रोजेक्ट को जो वो DMF से, TSR से या अन्य फंडिंग एजेंसी से अपनी काबिलियत से या मनरेगा से जैसे भी हो वो प्राप्त करते हैं। उससे हमारा जो दिखता है डेवलपमेंट हो, जब पूरा एकदम चमकता हुआ दिखता है कि दंतेवाड़ा में जाए, ये कांकेर में जाए, कि कहीं भी KVK में जाए या कहीं भी कॉलेज में जाए, तो जो पूरा चमकदार चेहरा दिखता है वो 99% या तो DMF से रहेगा या मनरेगा से रहेगा या अन्य किसी फंडिंग एजेंसी से। उस विश्वविद्यालय के या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई योगदान नहीं रहता। ये मेरे को बोलने में बड़ा हिचक हो रहा है, लेकिन दिस इज फैक्ट। तो हम आज तक जो भी डेवलपमेंट कर पाए विश्वविद्यालय में, उसमें अधिकांश बाहर के फंडिंग एजेंसी का योगदान है। लेकिन हमने पहली बार इस विश्वविद्यालय में 8 नए जो कॉलेज बने थे उनके लिए स्पेसिफिक फार्म डेवलपमेंट के लिए पैसा गवर्नमेंट से प्राप्त किया, और ये पहली बार हुआ है। ठीक है, प्रपोजल हमने सबमिट किया। उस प्रपोजल को सबमिट होने में जो तकनीकी अड़चनें थी, और इस बारे में जितने डीन और हमारे नीचे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको ये मालूम होना चाहिए कि सरकार से यदि पैसा प्राप्त करना है तो विश्वविद्यालय की जो प्रक्रिया है उसको आप भूल जाइए कि आप एक पन्ने में हमको जानकारी दे दिए कि हमको ये काम करना है, इतना पैसा दीजिए। दिस इज नॉट द वे टू डिमांड मनी फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को यदि आप पैसा मांगते हैं तो आपको एक एक पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। और जब जो लोग भी बजट चर्चा में जाते हैं या हमारे साथ सरकार में किसी भी चर्चा में जाते हैं, अभी हमारे विनय पांडे जी जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के डीन हैं, उन्होंने बताया कि हमको सेटअप नहीं मिल पाया। क्यों सेटअप नहीं मिल पाया? कारण है इसका, हम जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं या प्रॉपर ढंग से परसुएट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कितना इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट ने एक कॉलेज खोला, उस कॉलेज के लिए सेटअप प्लान किया और हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं पर लेकुना हमारे पास है कि हम चीजों को, भाई सरकार ने घोषणा किया, सरकार तो देने के लिए बाध्य है, लेकिन क्या हमारा प्रेजेंटेशन उस तरीके का है जिस तरीके से हमको प्रेजेंट करना चाहिए? कहीं ना कहीं पर कमी होगी। अभी कल ही उन्होंने मुझसे ये बात को कहा, तो मैंने आश्वस्त किया है कि जो भी उस पर अपन बात देखेंगे कि वित्त में जाएगा तो क्या उनको जस्टिफिकेशन चाहिए, अपन जस्टिफिकेशन देने का प्रयास करेंगे, उसको परसू करके अपन लाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बाध्यता है उसको देना। उन्होंने खोला है तो चलाना करना, रन करना उनका दायित्व है।
दूसरा एक महत्वपूर्ण इशू हमारे ठाकुर साहब ने इशू किया मेंटेनेंस के पर्पज के लिए। यहाँ फिर मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपको मांगना है तो आपको जस्टिफाइड ढंग से मांगना पड़ेगा, और आज तक किसी ने इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया कि मेंटेनेंस का पैसा बजट में कैसे प्रावधानित किया जाता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, न विश्वविद्यालय प्रशासन न मेरा खुद का लेखा नियंत्रक कार्यालय, मतलब मैं हूं या कोई भी है लेखा नियंत्रक, मतलब लेखा नियंत्रक मेरा कार्यालय, तो आपको बता दूं कि ये पैसा कैसे मिलता है और क्यों नहीं मिल रहा था। पहली बार इस साल के बजट में 1 करोड़ रुपए प्रोविजन हुआ है हॉस्टल के और कॉलेज बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए। कैसे हो पाया? एसपीपी कार्यालय के पास हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने क्रिएटेड हैं उसकी एक जानकारी होती है जिसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने लोक निर्माण विभाग को नॉमिनेट किया है कि आप इसका पर स्क्वायर मीटर एरिया तय करिए कि इतना पैसा पर स्क्वायर मीटर मेंटेनेंस कास्ट आपको देंगे, ऑफिस बिल्डिंग के अलग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अलग। तो आपने कभी अपना कारपेट एरिया है कैलकुलेट करके नहीं बताया था गवर्नमेंट को, तो कैसे गवर्नमेंट आपको पैसा देगी? मैंने बिफोर लास्ट ईयर, मतलब जब जिस साल में आया उस साल उस जानकारी को बनवाया पूरे कारपेट एरिया का। आज की डेट में मेरे पास आपके कॉलेज बिल्डिंग में कितना कारपेट एरिया है, आपका हॉस्टल का कारपेट एरिया कितना है, और जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है उसका सब का स्क्वायर मीटर में एरिया है जिसको हमने गवर्नमेंट को बताया। और चूंकि पहला साल था इसलिए स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमारी पात्रता 4 करोड़ की है, लेकिन मैं 4 करोड़ गवर्नमेंट से मांगूंगा तो एक नया पैसा नहीं देके कहे कि भाई आप पागल हो गए क्या कि हमारे बजट को मैंने 100 करोड़ को आप 104 करोड़ कर रहे हैं, वो भी मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट। मेंटेनेंस को बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और कैपिटल एक्सपेंसेस पर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्चुअल एक्सपेंडिचर मानती है जिससे गवर्नमेंट का ग्रोथ का आंकड़ा पब्लिक को दिखता है, तो वो प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने इस साल शुरू साल था तो इसलिए 1 करोड़ रुपए प्रोविजन कराया है। तो डॉक्टर ठाकुर आपकी ये डिमांड भी पूरी हो चुकी है और इसके लिए क्या है हम खुद ही जिम्मेदार थे कि हमको मांगना नहीं आया। दूसरा चीज क्वार्टर में सबसे बड़ी चीज क्या है, क्वार्टर में क्यों नहीं मिल पाएगा, मैंने साहब को बता दिया है कि साहब पहले तो आप ये तय करिए कि क्वार्टर का जो किराया है एज पर नॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे। तो आप खुद पहले अपने रिसोर्स को ठीक करिए, उसका कहिए कि हाँ मुझे ये पैसा चाहिए, तो लोग आपको मांगेंगे। और नहीं तो क्या वो पहले तो आपसे कारण मांगेगा कि भाई आपके पास मेंटेनेंस के लिए पैसा आपके रिसिप्ट में है, क्यों नहीं खर्च करते हैं आप। तो आप किराए को पहले बढ़ाइए, अर्न करिए, उसके कोई कमी है तो गवर्नमेंट से मांगिए। तो पहले आपके ओन सोर्स को आप रिव्यू करिए, ओन सोर्स को आप रिव्यू कर नहीं रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट के जो सेक्टर में जो किराया है वो किराए से भी आप कम पैसा ले रहे हैं जो कभी रिव्यू नहीं हुआ है। और दिक्कत क्या है कि ये सब चीजें अलोकप्रिय चीजें हैं और अलोकप्रिय चीजों को लोग मेरे से बुलवाना चाहेंगे, तो मैं अलोकप्रिय चीजों को नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को भी कोई बहुत बड़ा गाली खाने की इच्छा नहीं है। खैर ये सब चीजें अनाफिज टाइप का हो गया थोड़ा सा। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रपोज करने की आवश्यकता है आपकी तरफ से आए तो पार्टनर का जो भी है तो हमें चला रहा है बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं जो मैंने यूनिवर्सिटी के सामने रखा है और उस पर चलिए ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा, जिस पर डायरेक्टर फार्म और डायरेक्टर एक्सटेंशन ये 2 को विशेष कंसल्टेट होना पड़ेगा। हमारे केवीके को रन करने में या फार्म को रन करने में 2 प्रॉब्लम आता है। कभी कभी उनको ऐसी अप्रत्याशित चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको हम बजट में मांग नहीं सकते। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे पास है जो मैं कल सुना, मेरे को किसी ने कहा, मैं उसको इलेबोरेट कर देता हूं कि हमारे पास कोई भी रिसोर्स जो आता है वो विश्वविद्यालय निधि का पार्ट होता है। आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय निधि का पार्ट है, लेकिन जो फंडिंग एजेंसी जिस पर्पज के लिए दे रहा है केवल उसी पर्पज का आप उपयोग करेंगे, उसको डाइवर्ट आप नहीं कर सकते। यहाँ एक बहुत बड़ी कमी और है जो मैं और आपको बता देता हूँ कि क्या कमी है जिसको आपको करना चाहिए था, किसी ने किया नहीं। और मैं भी ज्यादा उसमें समय नहीं दे पा रहा हूँ और मेरे को भी बहुत ज्यादा अलोकप्रिय होने कोई इच्छा नहीं है क्योंकि इतने समय तक कंट्रोलर रहे, इतने समय तक यूनिवर्सिटी चली है, तो भाई मेरे आने के बाद ही कोई चमत्कारी परिवर्तन है ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। तो मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ। आपके पास ग्रांटेड एड रूल नहीं है जिसके कारण गवर्नमेंट ने या वित्त विभाग के प्रतिनिधि आपके बोर्ड में बार बार कहा कि आप जो ग्रांट मांगते हैं, हमसे ग्रांट एड मांगते हैं, उसका हमको स्पेसिफिक हिसाब दीजिए। ये विवाद बहुत बार हुआ। पांडे साहब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, आज की डेट में रिसर्च सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बार बार आपको कहा, तो पिछले इसके पहले तक कभी बना नहीं था। 19-20 में और 20-21 में मैंने प्रयास किया कि ये चीज बन जाए। तो हमने प्रयास करके स्पेसिफिक उस ग्रांट का जो भी फाइनेंस विभाग का या फाइनेंस डिपार्टमेंट का मॉड्यूल है उसके हिसाब से उनको पूरा सबमिट किया। उस सबमिशन से ये तय हुआ कि हमको किस किस मद में उस पैसे को खर्च करना है।
तो बिफोर लास्ट ईयर हमने उसमें मेंटेनेंस नहीं जोड़ा था, क्योंकि वो मेरे पास कारपेट नहीं है। इस साल हमने मेंटेनेंस जोड़ दिया। इवन रावे में पैसा आपको नहीं मिलता था, आप पूरा पैसा रिसिप्ट से ट्रांसफर करते थे। रावे का भी पैसा हमने पहली बार बजट में मंजूर कराया, ये भी आपको अच्छी बात बता देता हूँ। मतलब जो चीजें हो रही हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ करना है और वो अपन कर नहीं पा रहे हैं। और जब तक कि यूनिवर्सिटी हमारी बातों को पूरा प्रॉपर ढंग से नहीं लेगी तब तक हम उस चीज को नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली निर्णय माननीय कुलपति को, बोर्ड को करना है। तो जो चीजें हमको आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या डीएमएस से या हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, उसको पर्टिकुलर उसी मद में खर्च करना है जिस मद के लिए वो पैसा है। मतलब हम ग्रांट इनेट लेते हैं तो ग्रांट इनेट में जो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो स्टेट गवर्नमेंट के सेटअप के लिए आज जिन मदों के लिए उसने अनुमति दिया है बजट में चर्चा में, जो माननीय मंत्री जी के साथ हमारे दोनों कुलपति महोदय गए थे, वहां पर जो चर्चा होती, भले वो आंकड़े उनको नहीं दिखे होंगे, लेकिन वो आंकड़े हिडन रूप में पीछे रहते हैं, जो मैंने आपको जाते समय प्रोवाइड कराए थे कि भाई ये आपके आंकड़े जो अप्रूव हुए हैं और इन मदों के लिए अप्रूव हुए हैं। तो वो चीजें आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो कभी भी इस बात के लिए कंफ्यूजन मत रहिएगा कि विश्वविद्यालय में आ गया तो उसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। वो जिस पर्पज से मिला है उसी पर्पज से ही आपको खर्च करना है। राहत वाला आप किन मदों पर अपना विवेक लगा सकते हैं, उन मदों पर अपना विवेक लगा सकते हैं जिन मदों पर आप अपने ओन रिसोर्स से जनरेट करते हैं। तो ओन रिसोर्स से जनरेटेड है, उस पर आप अपना जो भी विवेक है, उसके लिए हमारे उसमें एक्ट में प्रोविजन है। एक्ट में प्रोविजन है कि आप बजट में प्रावधान करिए, बोर्ड से पास करिए, उस खर्चे को उसमें भारित करिए। इसी का लाभ उठाकर कुछ काम को अपन कर लेते हैं, जिसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूजन है कि आप कैसे कर लेते हैं। तो वो इस कारण से हो पाता है क्योंकि उस एक्ट में लिखा है। मैं जो बहुत बड़े मुद्दे बता रहा था, जिसमें डायरेक्टर एक्सटेंशन और डायरेक्टर फार्म का मैं विशेष रूप से वो चाहूंगा कि कई ऐसे काम है जिसको हम करना होता है, जिसके लिए पैसा हम कहीं पर से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी डीएमएफ से प्राप्त नहीं होता है, मतलब हो सकता है हम प्रोजेक्ट सबमिट करें और हमको ना मिले। तो डायरेक्टर फार्म और डायरेक्टर एक्सटेंशन, अब देखिए पूरी चीजें कंप्यूटराइज हैं। आपका फार्म जो है कंप्यूटराइज, आपने बताया, हमारे सक्सेना साहब ने बताया कि वो फार्म का जो वो है पूरा चीज वो कंप्यूटराइज है। तो मेरा ये है कि फार्म से जो भी इनकम जनरेट होता है, अभी किसानी से आय के बारे में त्रिपाठी साहब ने बताया कि 35% इनकम उसको किसानी से होता है। मैं कहता हूं कि हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, क्योंकि लेबर रेट जो है गवर्नमेंट का है और प्राइवेट में जो अपन खेती करते हैं उसमें जो लेबर रेट है वो कम होता है। तो आप मान लीजिए इसको 25% भी मान लें कि 25% प्रॉफिट हमको किसानी से, मतलब हम भी एक बड़े किसान हैं, तो हमको किसानी से 25% प्रॉफिट है। तो उस 25% प्रॉफिट को हम जनरेट करा करके उससे एक बजट बनाए। जब हम अपना फाइनेंशियल बजट हमारे बोर्ड में रखते हैं तो उस समय पूरे फार्म का एक रिव्यू हो, उस रिव्यू से ये पता चले कि हमारी इनकम कितनी जनरेट हुई पिछले 5 सालों में, पहली बार के लिए 5 साल कर लीजिए, और उसके बाद आगामी वर्षों में आप कितना जनरेट करेंगे, मतलब आप प्रॉफिट कमा करके कितने यूनिवर्सिटी खाते में जमा करेंगे, उसका एक सेपरेट हिसाब हो। और क्योंकि देखिए कई जगह मैं आपको बता देता हूँ, कई जगह ऐसे हमको जमीन मिले हुए हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी लेकर जमीन को हमको दे देती है, कारण क्या उनके पास भी जमीन नहीं है। तो अनफर्टिलाइज लैंड को अपने को डेवलप करना है। तो मान के चलिए कि 2 फार्म, जहां पर एक बहुत अच्छा फार्म है, जहां पे बहुत खराब फार्म है, दोनों में आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो एक को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। 2 बेटे हैं, एक बेटा सक्षम है, एक बेटा नहीं है, तो आप अक्षम बेटे को मदद करेंगे तभी वो डेवलप कर पाएगा। तो इसके लिए हमको बेहतर है कि अपन अच्छी प्लानिंग करके जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं अच्छे से उनको, और जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं उनको, दोनों को हम बैलेंस करते हुए डेवलप कराएंगे। सेम चीज केवीके का, एक केवीके का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। केवीके स्कूल होंगे, एक केवीके ने हमको बड़ी तारीफ की कि भाई हमारा पूरा डेवलपमेंट है। मैंने कहा देखिए आप मेरे को आप 3 साल पहले के अकाउंट का बैलेंस बताइए, सेविंग अकाउंट आपका है। उन्होंने कहा 42 लाख। मैंने कहा आज की तारीख में बैलेंस बताइए। उन्होंने कहा 45 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो अर्निंग है, आपकी जो कमाई है, वो आपका बैंक बैलेंस बताता है। मतलब क्या, मैंने कहा आपने एसेट क्या क्रिएट किया, ठीक है 42 से 45 लाख है, एसेट क्या क्रिएट किया, कुछ नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए क्या होता है, चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं। क्यों अच्छी दिखती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो डायरेक्टर एक्सटेंशन और डायरेक्टर फार्म यदि अपने पूरे रिसोर्स को अगर ढंग से मैनेज करेंगे, तो हम जो फार्म अच्छे से डेवलप नहीं है, जो केवीके अच्छे डेवलप नहीं है, जहां पर हमको बहुत अच्छे जमीन नहीं मिले हैं या बहुत अच्छा वहां पर रिसोर्स नहीं है, तो उसको अपन मदद कर पाएंगे, जो हम सरकार से या अन्य किसी संस्थाओं से ले नहीं पाते हैं।
दूसरा चीज मैं बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा यहाँ इशू है कि हमको आईसीआर से या आरकेबीवाई से या अन्य किसी से हमको बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं, हम बना लेते हैं, एक समय के बाद फंडिंग एजेंसी उस पर फंड देना बंद कर देता है। उसके बारे में आप प्लानिंग नहीं किए हैं। मैं बता देता हूँ, ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कराइए, अदरवाइज क्या है वो स्ट्रक्चर बाद के समय में, जैसे बायो कंट्रोल बिलासपुर है, वो खत्म होने वाला है यदि उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने 3,75,00,000 मांगा है, 3 पैसा नहीं मिलने वाला है इसमें। तो अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट हो जाएगा और आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसलिए क्या है, सबसे पहले ऐसे स्ट्रक्चर पूरे आइडेंटिफाई करिए और माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया जाए इस बारे में कि भाई ये पूरे मिले हैं, इनको चलाए रखने के लिए, इनको क्रियाशील बनाए रखने के लिए ये लाभ होना है, इसलिए हमको इस चीज को गवर्नमेंट से अपने को देना पड़ेगा। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो भी हमको संसाधन चाहिए वो हम गवर्नमेंट से मांगे, ये मेरा सुझाव है। तो धन्यवाद, बहुत समय ले लिया, 5 मिनट ज्यादा ले लिया, आई एम सॉरी, है ना, ठीक, धन्यवाद। सर सक्सेना जी, डॉक्टर सक्सेना। हाँ बताइए जी। यदि ऑनरेबल वाइस चांसलर की अनुमति हो तो मैं एक बिंदु यहाँ रखना चाहता हूँ लेखा नियंत्रक के सामने। सर ये अभी सेकंड हाफ में भी सर रहेंगे लेखा नियंत्रक साहब। माननीय कुलपति जी जो है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के, वो जाने वाले हैं, तो जैसे एक मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। मैं एक निवेदन ये कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे किसी मुद्दे को न उठाया जाए जो विजनरी हो, पर्सनल लेवल का हो, डिस्कशन के लिए अलग फोरम रहेगा, प्लीज इसको अभी फिलहाल यहीं पर स्टॉप। पर्सनल कुछ नहीं है, मैं पर्सनल जो है यहाँ पे रखने ही वाला नहीं हूँ कुछ। मेरा निवेदन है इस मामले को यहीं पर ड्रॉप किया जाए, है ना। चलिए सर, है ना। Now I invite Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Vishwavidyalaya, Professor R.S. Kuril sir, for concluding remark. Thank you. Good afternoon to everybody. First of all, I would like to congratulate all of you for completing 35 years of foundation day of this university, of PCS University, and that too successfully carrying out this stretch period. And this credit goes to various policymakers, former vice chancellors, academicians, our dean directors who have made significant contribution for the last 35 years where we are sitting today and discussing the things of the achievements. The success, many times it is a contemporary process. Many times we used to say that nothing has been done that time, nothing has been done that time. Significant achievement has been made this time and that time. It is always contemporary. There are many problems in many situations. Many things cannot be initiated immediately in the beginning itself. It takes time. We have seen that university is making this headquarter right now after 35 years. That means it is an achievement that has been made, but this could have been done in, people may say it would have been done in 87, May 2000, May earlier also, but situation was not permitting, might be not permitting at that time. So this significant achievement has been made by the predecessors, should always be appreciated. I also appreciate the former Vice Chancellor, Patil Saab, who has made significant initiatives in building this university. And prior to that also, many Vice Chancellors have made significant contributions. Rather, academicians, faculty, professors, teachers, they have also contributed a lot. This credit is also goes to the state government, ICR, and many national and international institutions, those who have supported this university in reaching to this stage in different years, in different situations, in number of occasions, in number of times. I would also like to appreciate the university for giving a policy makers and also for the state government who have given a child
in the name of veterinary Kamdhenu University, and now second child is in the name of Mahatma Gandhi Udyaniki and Baniki University. Both these universities are also the child of this mother institution. So I would like to urge upon all faculties, all dean directors, professors, and policymakers, including Honorable Chief Minister, SSV Chief Minister of Chhattisgarh, Honorable Minister of Agriculture, Chhattisgarh, Honorable Minister of Forest, Chhattisgarh, for providing this support for strengthening of Mahatma Gandhi Udyaniki and Baniki Vishwavidyalaya to achieve the goal for which it has been created by the state government. The university has made significant contributions in developing various kind of varieties in all crops, including horticultural crops, agricultural crops, various agro-location specific models for increasing the income, production, productivity, and socio-economic income of the tribal peoples, forest dwellers, and weaker section, as well as the farmers of our this. And similarly, the diversification of agriculture, as many people are mentioning about the integrated IFS models, agroforestry models, social forestry models, many kind of things and technologies have been developed in this passage of time, for which I also appreciate and make the congratulations to those who have contributed significantly in this field. I also appreciate the support of ICR, Ministry of Agriculture, for sanctioning 35 AICRP to this university. I think may be the one among the best in our country in agriculture universities, which have been given this kind of schemes, programs to this university. Finally, I congratulate once again to all institutions and this program for bringing this university to the 16th position. It is a very significant achievement has been made by this university, which has been achieved by the making many efforts by the many predecessors, including academicians and faculty, and also the students who have made directly or indirectly number of significant achievements. I feel that many things need to be appreciated. Many things have come. Dr. Thakur Sahab has raised number of limitations. It is appreciable also many times if we will not be able to understand or to highlight the difficulties or problems or shortcomings, we will not be able to find out the solutions also. So that many things are there, and also I appreciate the efforts made by our Pandey Sahab engineering and sector, Dean Engineering, for highlighting the achievements of green building concept and sister building concept that is need to be developed. And I feel that this will be implemented in this Indira Gandhi University, Mahatma Gandhi Horticulture and Forestry University, while building this infrastructure in headquarters as well as college building. I also point out the things that Thakur Sahab has mentioned, these international level of grading of the universities. In fact, the grading of international university system is 30% goes to the excellent academics, excellence teaching, and 30% goes to the innovative research, and 30% credit goes to its citation. What kind of research we have made in the university, that research, is it being cited by international global agencies in universities in system, that credit goes to 30%. And remaining 10% out of which 7.5% goes to the international participation of students, faculties, collaborations in national institutions, all these things. And 2.5% contributed for the technology which has been developed by the universities, has been adopted by the industry and used for the development of that locality. The technology or the knowledge which has been developed, that is basic, the purpose of the technology and knowledge is to improve the livelihood, to socio-economic income of that particular area, whether that has been used or not. So that is the criteria being followed at international level. Okay, that is another things in international level, may not be necessarily that we should go as per their convenience. As Dr. Thakur Sahab also mentioned that this university has not made
IPS, IAS, and IFS like that. So here I would like to mention, Sir Thakur Sahab has mentioned very correctly, but thing is that our model is not to produce IAS or IPS. Our model is to produce professionals, technocrats. We are the food deficit country. We were having 50 million ton production at the time of independence. Now we are producing more than 315 million tons. So now we have reached to the stage where we have to concentrate now for the food processing, for value addition chain, for the quality improvement like that. So our attention has always been made for the production because we were food deficit state. So that kind of efforts, rather we should concentrate for the producing professors, academicians, for professionals, technocrats. That is the basic criteria of our institutional academic system in our country. So every institution has got different kind of mandate. We have got this kind of mandate. So rather these things I wanted to share with you. And certainly I really appreciate the efforts and the tips, the points given by our controller. That is very essential always while taking the proposal or things before the government, because they see the different angle. Whatever we are doing for the development of the nation. But bureaucrats and technocrats, they don't go by this. They go by the system. So we have to follow the system and justify our proposal. Here also I would like to mention that Thakur, our controller Sahab has mentioned that this corpus fund has not increased of that particular KBK. So the purpose of the KBK is not to enhance the corpus fund always. Many times these things, they will develop the corpus fund to a certain level, the university will not fund or the system will not provide additional fund to them. So whatever they are developing or they are increasing their income, they are investing in different models. So that kind of things are being followed in these KBKs, and KBKs are excellently doing, they are doing well things. So I think we should appreciate their efforts, and they are doing as per their funding from the ICR, not by the university. Many times infrastructure things we used to their KBK faculty used to come to teach in the mainstream. So that's because of the lack of faculty, we used to call them for teaching. So we need appreciation. They also need appreciation. And thank you, Dr. Our Sengar sir has given me the opportunity, and all of you have given me the opportunity to be here. And I urge upon all of you to kindly, not only you, but state government, to our Minister Agriculture and also to Minister Forest and our Honorable Chief Minister to support this Mahatma Gandhi, newly created Mahatma Gandhi Udyaniki and Baniki Vishwavidyalaya, so that it should also flourish like this Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya. Certainly, I'll try my level best to bring this university, one among the best university of our country, in many ways. Let us see and hope for the best. Thank you for giving me the opportunity and patience for hearing. Thank you. Thank you so much, sir, for your important remarks and suggestions for the university. Before I will give the vote of thanks, one announcement is there. After 30 minutes, we will again start the session. Two important lectures are still remaining of Director Research, Director Extension, and Dean Student Welfare, and some discussion will be there in the second session. So you are requested to kindly join the again with the same link after this half an hour. And now I will give the vote of thanks for the first session. That I am thankful to Honorable Vice Chancellor, IJQE, and the Mahatma Gandhi University, Dr. Puril sir, all deans and directors, and the registrar, comptroller, and statutory officers, those who are again joined this event, senior scientists, heads, KVKs, professors, and all. Thank you so much for patience hearing for the first session. The second session will start after half an hour. Please join. Thank you so much.
Alumni Cell, CCSSW, Sports Culture and Student Forum. Okay, next. Again, this is NSS, National Service Scheme, with motto, not me but you. We have, sir, in university, 4,600 volunteers with 58 units in the university coordinating cell, and adopted villages by these units were in 20 and 24, and past 2 years 73 and 71 B certificates and 8 C certificates were issued and passed by the volunteers. Next. Here these are the important they have the 7-day special camp as mandatory in the NSS to achieve BMC certificates. So these colleges organized the camps in 2020-21, 10 camps and 4 camps in 21-22. Next. These are the media publications and wide circulation of the coverage of their activities. Next. These are the activities taken up by these volunteers, different units. Next. These are one important days. Nowadays, these NSS volunteers, they have done a wonderful job in different constituent colleges and private colleges by participating in different important days like World Environment Day, International Yoga Day, World Tribal Day, Independence Day, World Soil Day was organized in a big way, National Youth Day. All these important days organized in different constituent and affiliated colleges in a large scale, and even during COVID period, large students, girls has participated in it. Next. So these are the few achievements in 2021-22. Best NSS volunteer, as already Dr. Thakur Saab has revealed this. Then one pre-RD camp held at Patna. 4 students participated in that, and one remarkable achievement is that one student is participating still in the Republic Day parade camp at Delhi, and this is zonal level student allocation competition. Also, our students participated and they excelled in that. Next. So another important aspects with the students. National Cadet Corps, NCC. Next, in our university, there are 7 colleges where, with 11 units working in different colleges, we can accommodate 215 girls cadet and 393 boys cadet in 11 units, and as a whole, 608 cadets trained every year. Next. And these are the achievements in the colleges having NCC. B certificates, 167 cadets passed certificates and 123 cadets passed C certificates, and overall 297 cadets attended camp. So these are the achievements in different units. Mostly the students, because they are awarded marks. So maximum cadets and students wants that they appear in BNC certificate examination. Even the COVID period, it was very difficult to bring the cadets in the camp physically, but somehow they managed and they joined the camps, and as a result, they passed BNC certificates. Next. So these are the, we have, sir, 11 units here in our university, and I'm here, I would like to mention to Honorable Vice Sir that out of 11, 6 officers are the professors. They have been commissioned in the lieutenant, because 3 months training is there at Gandhi, just like military training, and after that, these are our professors they can get the rank of this lieutenant. And girls are there, 4 girls officers are also there. They need to have training in the coming future. I hope maximum officers will conduct and carry out these trainings for the benefit of the cadets. Thank you. Next. These are the glimpses of the NCC activities.
Another aspect is career guidance, placement, and alumni cell. We organized, sir, 6 webinars on important topics, inviting the important experts and personals, and large number of students and dean directors. They also guided. Honorable Vice Chancellor also present and guided the students. Next. So these are some glimpses of activity on different aspects. Next. So these are the webinars in 21-22. So we organized just 22 webinars, and I'm the parents and students, they are lucky to have different experts, as well as the Vice Chancellor Dr. Sanger sir himself address the students, and in this way. And next, these are the some wide coverage in the media. Next. This is another placement activity of the 2021. 6 students, they got the package of 7.7 lakh per annum in 2020-21. These interviews were organized online, and our students participated in that. Next. In 2021-22, 340 students, they took participation in around this is overall 10 different placement activities, online, offline. Out of that, 43 students, they got selected in different organizations. Next. These are the, sir, I would like to mention here that this was the offline interview conducted here in the Director Extension Services, Gramophone Transforming Agriculture. They are run by the IIT and IIM students, and they are basically for the farmers, and so they are taking advantage, and they themselves came here, and the students interviews were conducted, and then physical questionnaire were done. It took students took a lot of interest, and in that way, this was a big success. Next. So, as per our instruction of our Honorable Vice Chancellor, sir, since Career Development Center, IGKV is one of the among the 5 state universities in the country having Career Development Center under NARM, and we are getting budget centrally for this IGKV level. So we are distributing as per guideline of our Honorable Vice Chancellor. We are distributing some of the budgets to different constituent colleges also, so that they can also take up the student activities like that. Next. So, sir, as regarding alumni, our this MIS section under the guidance of Dr. Saxena Saab, we have sent 7,755 the alumni list of UGP students to the prescribed format as required by the ICR. BDG also denied, and as per his instruction, these data were sent to them for their further analysis at the country level, and a data bank base is also being maintained at the university level. Next. So this is another, sir, CCSSW. This committee is working well, sir, and whatever the cases comes to their knowledge, there are 32 committee constituted. At the central level, there are 13 members and 1 advocate is next. So these are some of the activities. They are highlighting these through webinars. They are making aware of the students and other the employees here in different campuses of the university. Sports facilities, cultural. These are the activities already list, but due to COVID, sir, these sports cultural activities could not run. Although we have very good facilities here at the university level, and some of the facilities are also available in constituent colleges, but physically we were unable to conduct these competitions at this year. And here at the central level, we are having fitness and health club. Morning it is open 6 to 10, and evening 4 to 6. Next. And then student competitive forum is also here, but physically could not conduct the activities, but online they are very well, and they have been conducting some such PSC, UPSC trainings, coachings, right, and then seminar, other activities. They still continue. They are run by and maintained by the student itself. This is next. So these are some of the activities. So this is all in nutshell.
all the activities of the achievements in different sectors by the students of the university. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Now I invite Director of Extension Services, Professor R.K. Vajpayee, sir, for presentation of extension achievements. Respected dignitaries, faculty members, my friends and dear students, I am presenting the progress of extension achievement and emerging issues of Directorate of Extension Services. As you know, the Directorate of Extension Services has 10 mandates. Our mandate is, first one is administrative management and guidance to the KVKs in designing, developing and monitoring of technical program of Krishi Vigyan Kendras. Second mandate is transfer of technologies, assessment, refinement, feedback to the researcher and demonstrations through KVKs. Third one is mentoring, monitoring and reviewing the activity of KVK. Fourth one is linkages and coordination with the allied department and development organization like ICR, Manage, NIAM, NABARD, State Department of Agriculture, Horticulture, Panchayat and Gramin, etc. Next one is the capacity building of KVK scientists and ensuring human resource development within the system. Another one is developing and evolving reporting and documentation system of KVK for effective implementation of the program. The seventh one is coordination in organizing pre-zonal and zonal workshop of KVK. Eighth one is facilitation of the diagnostic services and farm advisory services like soil testing, water testing, plant clinic covering horticultural crops, horticultural, agricultural, medicinal, aromatic crops, processing and value addition, and any other issues related to farming community through KVK. The ninth one is to organize farmers fair and exhibition at state as well as national level for dissemination and display of technology. And last one is publication of the package and practices and documentation of the technologies through magazine, bulletins, folders, pamphlets, participations. So I am covering all these 10 mandates, and this is the actual directorate position. Out of we have 22 sanctioned positions. Among these 22 positions, 11 are filled and 11 positions are still vacant. We are working through our KVK network, which is existing in 27 districts. Of 27 at present, 27 KVKs are working under this IGKV, and 2 more new KVK has been proposed. That is Pendra, Gorel and Marwahi, and another one is Saja. This is the actual staff position of KVK. Out of 441 sanctioned posts, 302 positions are filled and 139 is still vacant in different KVKs. Coming to the mandate, the administrative management guidance to the KVK in designing, developing and monitoring of the technical program of KVK. So far, our mandatory activities which we are performing through our KVKs, that is a diagnostic visit, field day and Goshtis, Kisan Mela, training, FLD, OFT. So in last 2 years, we have conducted this many number of this mandatory activities through our 27 KVKs. Then under this second mandate, the transfer of technology, assessment, refinement, feedback to the researcher and demonstration through KVK. Under this, I'm just presenting one because already many KVK persons have already presented their achievement, this technology transfer and other refinements. I'm submitting the only substitution of the rice by makhana, and through this rice, summer rice by makhana, farmers can double their income instead of 40,000 to 104,000, and if is going
for the preparation of the masala. If he is creating the popping machine, establishing the popping machine, then this profit goes to 2,40,000. So this way we can say that refinement can be done of this substitution of the rice, summer rice crop to the cultivation of the makhana crop in our Chhattisgarh region. पॉप हाँ अच्छा एक विजिट छोड़ दिया 2,40,000 2,40,000 1,10,000 अच्छा अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक में भी it may be the target. Yeah. But when we are shifting from, instead of selling the makhana seed, if we are popping it, then definitely the profit will be double, I can say, in comparison to the seed. Then likewise, we have already our KMK person given this presentation. When the many water bodies are available in Chhattisgarh, and we have started increasing the area of this water chestnut and lotus. In 1920 and 2021, the area has increased from 7 acre to 16 acre, and benefit is from 5 to 22, and almost productivity is same 20 quintals per acre. Likewise, the lotus crop, the area increased from 32 to 42 acre, and beneficiaries number from 64 to 120, and production 65 to 71 quintals. So this way we can say that we are expanding our area and through this water on the new crops. Then the third one, or the third objective or the mandate of our this directorate is to mentoring, monitoring, and reviewing our JPL sales. For that, we are using the ICT tools, and because of this COVID period, we are unable to move to each and individual KVK. So we are monitoring through these ICT tools. Then we have the linkages and coordination with the allied department. So far, I can say that more than 23 organizations we are working with this. Our directorate is working with these 23 organizations. Then external funding through these linkages. So far, we have generated revenue. In our directorate level, we have generated more than 5 crores, and through our KVKs, we have generated more than 21 crores. So total 26 crore revenue has been generated by our directorate. Then capacity building program, KVK scientists and human resources development within the system. Regularly, we are organizing the training program for the extension persons, particularly the SMS of KVK and input dealers. As you know that in different training so far in last 2 years, we have conducted more than 2,156 training in 19 and 20 years, and beneficiaries were more than 68,000 persons. And diploma courses are also running in our university. In 1920, 19 centers we are running the diploma courses, and the beneficiaries were 711. And in 2021, 10 places we are running this our diploma course, and 366 persons has been awarded the diploma. The developing and involving the reporting and documentation system of the KVK for effective nutrition program. For that, we are using the Google Sheet, and this is actually real time in which our persons are daily updating the data, and accordingly we are preparing the report, so that we are very effectively able to manage our KVKs through this Google Sheet. Report preparation and documentation of it. Then, likewise, the interactive webcasting, because in last 2 years, because of the later movement, we are using these devices for group discussion and for this audio video conversation, and we are sharing our thoughts with each and individual KVK PCs, and even many times we are asking our farmers if they are facing some problems that has been resolved through this webcasting. Then another mandate which we are fulfilling, that is the pre-zonal and zonal workshop. Pre-zonal, zonal workshop is actually ICR Atari,
zone section, which is regularly organized by the Directorate of Extension Services. And we are reviewing and of the progress and reporting of the previous year and finalization of our KVK program in this zonal meeting. The another mandate of our directorate is to facilitation of diagnostic services, farm advisory services, processing and value addition, and other services through the. Under this, as we have already seen, our previous PCs have presented, they have distributed the mini rice mill. So far, we have distributed more than 74 mini rice mills, and beneficiaries are more than 2,456, and SSGs which are actually involved are 216, and the capacity of the machine is 1.5 quintal per hour, and where they were not getting the good price of their product, now they are able to sell their rice more than 80 to 100 rupees per kg. So this way we are actually facilitated, or we can say value added their product. The value addition of this are another example of this buckwheat flour by making cookies. Then this value addition product of minor millets, different products which have been prepared by different chemical persons, and they have been sent to our different SSGs also. Then the last before one, our mandate is organizing farmers fair and exhibition at the state level and state level as well as national level for dissemination and display of technology. In last 2 years, we have conducted more than 126 fairs, and Honorable Governor, Chief Minister, Agriculture Minister, and other dignitaries have visited our stall during this mela and exhibition. And the last one is the mandate of our directorate is publication of package and practices and documentation of the technologies through magazine, bulletins, folder, pamphlets. So our directorate is regularly publishing the package and practices of Kharif and Rabi crops. Other quarterly magazine newsletters we are publishing time to time. And last 2 years, we have published this many number of publications. These are some photographs of our technical bulletins. Then emerging issues, as you know that this introduction of profitable and sustainable farming system for 3 agroclimatic zones of Chhattisgarh, that is very important as per our point of view, our consideration of view. Then more focus will be given on improving the income and employment generation activity based on the availability of resources and raw materials. As Dr. Tripathi has already given some important focus program of one district, one program. He has presented in this slide also. Processing and value addition locally available horticulture and non-timber forest products, that is also need. So far, we are not able to provide the facility for value addition. Then this promotion and production and processing of the tuber crop, particularly the elephant foot yam, potato, sweet potato, colocasia, pepper, etc., which is, I can say, available in large quantity in Bastar Plateau and Northern Hills, that needed actually attention. Then the production, processing, value addition, and marketing of the minor millets. As you know that our Chhattisgarh government has already fixed the MSP for the Kodo, Kuski and Ragi. So I think in future we have to keep some attention on this issue also. Then the focus program from one district, one product, that is actually has been already prepared by the Government of India. Accordingly, we have to actually pay attention, special in this particular aspect also. And the last emerging issue is to emphasize should be given on attracting and retaining youth in agriculture and agri-based activities for entrepreneurship development, and also to make them job providers instead of job seekers. So these are some issues I wanted to give. So far, the feedback which we have received through KVK and Solution has been provided by our researchers. These are some feedback which we have provided to our researchers, and Solution has been provided by our scientists. But still, the farmers are waiting for the technologies that it is the garden making machine. Actually, they are demanding, particularly in the northern zone, where farmers are going for the flower cultivation, and makana harvesting machine. Actually, farmers are asking for the technology or machine for this particular crop. Last year, we have received this award, and the Pandit Deen Dayal Upadhyay Krishi
कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार was awarded at national level, and this year we have received the innovative app and best agriculture research award by Indian Expertise. Thank you. Thank you so much, sir. Now this is the end of the session 1, and we are starting with session 2, that is motivating, attracting and retaining youth in agriculture. To brief the session and the welcome of the guest, I invite Professor M.P. Thakur, sir, Organizing Secretary of the Foundation Day, for their views. Good afternoon to all of you. Friends, I again welcome you back to the second session. I welcome both the Honorable Vice Chancellor of both universities, all the directors, deans, heads of the department, all my teaching people from the teaching, research, extension, and all my dear loving students, people from the media persons. Friends, you all know very well that today, for the today's 36th Foundation Day, we had 2 themes to work on. The first theme is over, and now I am welcoming you for the second theme. And the second theme is meant, and the title of the second theme is Motivating, Attracting and Retaining Youth in Agriculture. I welcome you all, and just about this particular theme, I would like to brief you. And we have planned, we have two, one is open house session is also we have made, and the second is the remarks from all the deans and directors. Now in the first open house session, it is expected that all our students, especially those who are entrepreneurs, those who are PhD, those who are MSc, those who are undergraduate students, they will specifically have been given the time to speak. And I will also request, since all the ministerial staff, non-technical staff, technical staff is all invited during this 36th Foundation Day. So in the open house session, they're all requested to kindly express their views. And this 1 hour open house session we are curtailing due to short of time. And instead of 1 hour, it will be for 45 minutes again, 45 minutes. And the second part, which was for the remarks of the deans and directors, it was again curtailed, and they will have to sum up within only 45 minutes. So this way, half an hour will be reduced from the. Now, if you look at the theme of this particular webinar, friends, if you go 5 years back, then ICAR conceptualized the idea that this ARIA project, if you look at the ARIA project, the theme of ARIA project was conceptualized by ICAR, especially by the Deputy Director General Agriculture Extension, and they thought that the youth in agriculture, they should be attracted and they should be retained in their own village. So keeping this in mind, the government of Chhattisgarh is also trying very hard, and they have even constituted one Rozgar mission also, you will see later. So keeping this view, keeping this idea in mind, we have framed this particular theme, webinar theme, motivating, attracting, retaining youth in agriculture. And I will just brief for the audience that please restrict yourself to these themes only. What the objective of this particular theme is to attract and empower the youth in rural areas to take up various agriculture, allied and service sector enterprises for sustainable income and gainful employment in selected districts of the country. To enable the farm youth to establish network groups, to take up resource and capital intensive activities like processing, as we were talking a lot by, it was taught by Dr. Vivek Tripathi and then again by Director Extension, and especially the processing, value addition, marketing. And then the third is to demonstrate the functional linkage with different institutions and stakeholders for convergence of the opportunities available under various schemes of the programs for sustainable development of youth. And if you see ARIA, the ARIA has already been implemented in the last 5 years, and we are very fortunate to have Dantewada KVK. And in Dantewada KVK, when I was Director Extension,
we started in the year 2016-17 this ARIA project, and this ARIA project has been implemented in 25 states of the country through only Krishi Vigyan Kendras, and the concept was one district, one state. And keeping the view of that only, the Chhattisgarh state was considered, and a very remote KVK where a lot of national problems are there. I think the university decided, or rather I do not know, we have submitted the proposal. So I think the proposal was for many KVKs, but they have, the ICR has chosen Dantewada KVK as for this particular project. And the theme of this project is that in one district, you have to prepare 200 to 300 youths you have to train in different enterprises. And these enterprises will be identified for their skill development in entrepreneurial activities and establishment of related micro enterprise units. And KVKs, they have involved, agriculture universities have also involved, and not only KVK, but even the technical support is given by the agriculture university or nearby KVK. And the idea of this one KVK was that the technology must diffuse, it must penetrate in nearby KVKs, so that the youth from nearby KVKs should also come into the main line, and they should also be trained. And KVKs has involved the agriculture university and the ICR Institute as the technology partner. And at KVK, 1 or 2 enterprise units have been established. And I would say that even Dantewada KVK, they have established 5 enterprises, and they have trained people, they have trained youth in 5 enterprises. The purpose of ARIA is to establish economic models for youth in the villages, so that rather than going and searching job elsewhere, they should have their, they should be restricted to their village, they should be restricted to their district, and they should not move. So that is what the overall purpose of this project was. Now, in Dantewada, my colleague, Dr. Sahu, Narayan Sahu, he has already thrown some idea, thrown some light that how the project is being conducted over there. ARIA project, it has been already implemented. And under ARIA project, 1,000 rural youth. I had discussion with him. Sir, he has trained in last 5 years, he has trained more than 1,000 youth. And these youths are in 5 activities. Maybe some are involved in the rice processing, some are involved in the karakana production, some are involved in mushroom production, some are in apiculture, and there are 5 enterprises which has been identified KVK Dantewada. So I will restrict my friends to restrict yourself, your presentation, your views, your thoughts, especially to the webinar 2. Please don't move around and say, for example, this karakana, it's a very good venture which Dantewada has identified. Next, please. The second one is, say, you can see mushroom has been identified. The third one is, say, next. Say, entrepreneurship development, skill development of rural youth. It has helped a lot in providing the confidence level and encourage them to pursue farming as a profession. What was told by Dr. Kuril Sahab, and it has generated additional employment opportunities to absorb unemployed and unemployed youth and underemployed youth, rural youth, in the secondary agriculture, especially, that is value addition and processing, and the concurrent monitoring, evaluation, and midterm correction is also integrated. It is also involved, and it was the integrated part of the project. So this is what I thought to open before the discussion. I thought that the peoples or the participants, they should interact on these, they should gather, they should debate on these issues, so that we can come out with the, say, for example, this rice mill. Sir, I remember in India 2017, when I saw this machine, sir, I asked Dr. Narayan Sahu to come, and I told him that, please see the feature of this machine. This is a machine which can run with single phase power, and this is a machine which is 3-in-1. Please see it. Go back to your district and try to have this machine in your district, because your district has been declared as an organic district. Sir, after 1 month, when Dr. Sahu came to me, he came to me with a check of 35 lakh rupees for purchase of 100 machines. And not 100, but even more than 300 machines have been distributed by KVK Dantewada. And now this KVK Dantewada is a nationally awarded KVK. It is doing wonderful work. Even the Prime Minister, even the Agriculture, even the Prime Minister and Prime Minister also, President and Prime Minister, both of them, they have listed the activity of KVK Dantewada.
So it's a very good machine, sir. Again, a lot of possibilities emerge there in the Dantewada, in the Narayapur area. Lot of more than 10,000 hectares of land is there, which is being occupied by this parliament, which is a very promising crop over there. Next, please. And you can see a lot of work has been done by these people. Next, please. And I think the last slide. Next. These all apical, this lake cultivation is also a very promising area in those areas in Bastar Plateau. Next, please. You can see Chhattisgarh में रोजगार मिशन गठित होगा. The Honorable Chief Minister of Chhattisgarh only on 16th, and again there was a very big news yesterday also, and the CEO of this mission is Dr. Alok Shukla, and he contacted the Honorable Minister, Honorable Vice Chancellor Dr. S.S. Sanger, that they are going to involve, CEO is going to involve Agriculture University in generation of this employment. The government of Chhattisgarh is targeting about 300 jobs per year. That way we are targeting for 15 lakhs jobs in coming 5 years. So I think it is going to be a very big mission, and I think we all have to act accordingly. Next, I think the last one is thank you very much, and I will request all of you to kindly be brief in expressing your views. So may I now request, let us start, sir. Should we, if you allow us to go for open house session, can we? So in open house session, I have a list of 15 students, and I will request first of all Mr. Shivam Sharma. Have you joined, Mr. Sharma? Shivam Sharma, Sasikant, Bhupen Chandra. Are you there? Supriti Banerjee, Naren Chandravanshi, Ishan Sudeve, Om Prakash Taram, Shailesh Kaushik, Shubham Soni, Hem Prakash Verma, Kuldeep. Are they there or they are not there? Tarun Sahu, Ankit Dubey, Pankudi Srivastava. Yes, sir. So please express your views for 2 minutes each. Each student will be given 2 minutes time. You may express your views in Hindi, English, or any language you like. Okay? So over to Mr. Shivam Sharma. Or if not, if Sharma is not there, please unmute yourself, introduce yourself, and then express your opinion. Anyone else? I have named. Yes, sir. Yeah, please. Please introduce yourself, unmute, and start. Yes, sir. Very good evening to all of you. Myself, Ankit Dubey. I am from BTC College, Bilaspur, and I am a student of third year. Sir, first of all, as the topic is how to attract youth and how to retain them in the field of agriculture. So first of all, the things which we need to attract the youth are, we have first clear the vision about scopes. Why agriculture is important for us? हमको स्कोप क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी 10th बच्चे को बताने जाता हूँ कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके माइंड में सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि अमित अपना वो चेक करो। अमित आपके जो व्यू दिख रहा है ना इधर, ये हॉरिजॉन्टल्स में है, इसको चेंज करो तो। यस सर। बोर्ड आपका खड़ा दिख रहा है। Sir, is that all right? No. Just 90 घुमाइए, 90. 1 minute, sir. Yes, sir. Is that all right? Yeah, okay. Please. Yes, sir. Okay, sir. Sir, first of all, we have clear vision about the scopes. सर अगर स्कोप क्लियर होगा तभी बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ हम बात करते हैं तो उसमें पूरे ही स्कोप्स क्लियर रहते हैं कि हाँ अगर मैं सिविल में जाता हूं तो मेरे को क्या काम करना होगा, बट अगर एग्रीकल्चर में हम जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, उसकी अभी लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड की तरफ अभी अट्रैक्ट नहीं हो पाते। और एग्रीकल्चर के लिए हम रूरल एरिया पे ज्यादा ही हमको देखने को मिलता है एजुकेशन सिस्टम। जैसे रूरल एरिया में हमको स्कूल्स हैं, बट जैसे ही हम सिटी या अर्बन एरिया की तरफ आते हैं
तो स्कूल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सीबीएसई एफिलिएटेड बिलासपुर में एक भी स्कूल नहीं है जहां पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई की जाती हो। तो सर हमको इस चीज पे भी ध्यान देना है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहते हैं, जैसे कि मैंने 11th 12th बायो स्ट्रीम से दिया, बट मेरा जब इंटरेस्ट आया, मैंने मेडिकल की तरफ पहले मेरे थे इंटरेस्ट, बट जैसे ही मैं एग्रीकल्चर की तरफ आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे कम टाइम में आपके पास डेवलपमेंट और अपने आप को ऊपर पहुंचाने का एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। और सर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे हम एग्रीकल्चर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया में आज का 99% यूथ सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करता है। तो हम एग्रीकल्चर को सोशल मीडिया के जरिए वाइड स्प्रेड बहुत बड़े फॉर्म में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि क्यों हमें एग्रीकल्चर की जरूरत है। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे आप बिना मोबाइल के, बिना सब चीजों के रह ले रहे थे, बट बिना खाने के कोई नहीं, क्योंकि आप खाने के बिना कभी नहीं रह सकते। तो इसलिए एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा लाइव एग्जांपल हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम लोगों को चीजें नहीं दिखाएंगे सामने, तब तक लोग उसको समझेंगे नहीं। मैं बोल दूंगा कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो लोग मानेंगे नहीं जब तक उनको मुझे लाइव उसको दिखाना ना पड़े। और तीसरी चीज है मिनी मॉडल्स एग्जीबिशन। सर हमारे कॉलेजेस में, जैसे बिलासपुर में व्यापार मेला आप सभी ने सुना होगा, वहां पे साइंस एग्जीबिशन होता था। तो वहां पे उस जगह पे जो भीड़ रहती थी उसको देख के मैं बोलता था कि अगर ऐसा हमारा कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर ये कोविड खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी इस चीज को परफॉर्म करे कि हर कॉलेज एक एग्जीबिशन रखे, 2 to 3 डे का आपका एग्जीबिशन रहे, जिसमें पूरा ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट इनवाइटेड रहे कि हाँ आप आइए, आप अपने प्रोजेक्ट्स दीजिए, और किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों का जो रुझान है वो एग्रीकल्चर की तरफ बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमें मेंटर्स की नीड है क्योंकि हमारे पास मेडिकल लाइन वालों को बताने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इंजीनियर्स को बताने के लिए आईआईटीएंस एनआईटीएंस हैं, बट एग्रीकल्चर के बच्चों को बताने के लिए कि हाँ आप एग्रीकल्चर फील्ड में आ तो गए हैं, बट आप वहां पे अपनी ग्रोथ को कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास मेंटर्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं चाहता हूं कि जो अभी पास आउट स्टूडेंट्स हैं या जो बीएससी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, वो सभी अपने से जूनियर्स को ये सब सलाह दे, अपने ऐसा मेंटर की तरह वर्क करें। मानता हूं कि इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट आपको आप अपने समाज को बनाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दे रहेंगे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, फार्मर्स को फ्रेम मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो उसके पास तो फ्रेम्स की कमी नहीं है कि हाँ उसके पास डॉक्टर वो अच्छा है, वो सभी जितने पेशेंट्स हैं उसके पास जाएंगे। बट अगर हम फार्मर्स को फ्रेम देना चालू कर देंगे, उनको पॉपुलैरिटी देंगे, तो लोगों का जो रुझान है, लोगों की जो थॉट है कि एग्रीकल्चर से पेड़ पौधा उगाना है, उसकी तरफ से हट के उनका ध्यान सीधा जाएगा कि हाँ एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ है। क्योंकि मैंने ऐसे भी फार्मर्स देखे हैं जिन लोगों ने 2 to 3 एकड़ के प्लॉट में भी पर एनम 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की है। दैट्स ऑल माय सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Amit ji. Thank you so much for your wonderful ideas. We really appreciate your answer. Sir, Ankit. Oh, sorry, Ankit Dubey. Thank you, Ankit ji. Yes, sir. The next one. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Respected Dean, sir, worthy professors, respected seniors, and my audio friends. Your good Today name, is please. Your good name, please. Pankhuri Srivastav. Okay. Today is 20th of January, and we are celebrating this day as 26th Foundation Day of IGKV. So, on behalf of this auspicious occasion, I, Pankhuri Srivastav, second year student of BTC Caste Bilaspur, feel honored to deliver my views on motivating and attracting youth towards agricultural farming. So, according to 2011 census, about 2,000 farmers every day give up on farming, and even young among the farming community are hardly interested in agriculture. Even the students who are graduated from agricultural universities are switching over other professions, and this is called Great Indian Brain Drain. So, for long, agricultural sector has been neglected, and about many students
from farming sectors and who belongs to the farming committee are the students of agriculture, majority of them. At present, 0.4 million students are enrolled in agricultural universities and institutes, and about 0.1 million students are managed to graduate. But majority of them, about 70 to 80%, join banking sector. We need to stop this agro brain drain. There are many ways which can enhance agricultural opportunities for the students. For instance, government should come up with the scheme which can provide students the license so that they can market and supply fertilizers, insecticides. This will also help the farmer to get the correct advice regarding amount to use these fertilizers and insecticides for a particular crop. It is also pity that management students but not the agriculture students are recruited for the institutions such as National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD. Also, both government and corporate sectors must increase the scholarship number of scholarship for the students of agriculture. This will enhance the research and development, and this will also help them to become more professional and increasing their earning capacity. Government must also enhance the professional sector, professional status, so that more and more students can get job in this agriculture sector. These small changes can really bring more enhanced and more successful agriculture in India. With this, I would like to end. Thank you everyone for listening and giving me this opportunity. Thank you, Pankudi. Pankudi, you said that agriculture sector is neglected. Yes, sir. How? Government of India, government of Chhattisgarh is giving lot of emphasis in agriculture to promote it. How can you Sir, say now that it is government is improving, neglecting but due to lack of opportunities, youth are diverting from this sector. They are choosing, they are more going in banking sectors and business, all this. Okay, thank you. Now may I call upon other students to Yes, react? Next, please. सर नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा नाम तरुण साहू है, मैं बीटीसी कार्ड से पास हूँ और आज बहुत ही अच्छा दिन है हम लोग के लिए, 36 फाउंडेशन डे। वो सबको सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और बहुत ही गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि इतने बड़े संस्था का हिस्सा रहे हैं और सब हम यहाँ पर एग्रीकल्चर को यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कृषि के ही बारे में, जिसमें पूरा फ्यूचर है, सस्टेनेबिलिटी जो भी है वो सब एग्रीकल्चर में डिपेंड करती है। तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ 36 फाउंडेशन डे का। और सर मैं इसमें अपना कंक्लूड बात करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर है उसका एजुकेशन या फिर सेक्टर जो भी अगर बढ़ावा देना है तो सिर्फ और सिर्फ सर एक ही इसका ये है कि हम जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थ है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और भी जो चीज है हमसे जो जुड़े हैं वो सबको हम एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़े। और उसके लिए बहुत अच्छा भी लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बात भी किया गया है इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और भी चीजों के ऊपर। लेकिन सर अभी भी बहुत जो कॉलेज लेवल है वहां पर जो कमी है इंक्यूबेशन सेल होने की, जिसका बात भी दिन सर उसको सर बढ़ावा देना चाहिए। और साथ में सर कितना हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे जो लोकल्स है, हमारे जो आसपास के जो चीजें हैं, चाहे अभी तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर भी कितना पोटेंशियल है उनके लोकल में, वो सब भी को स्टडी में शामिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि क्या है यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो थियोरेटिकल और सिर्फ असाइनमेंट प्रैक्टिकल में 4 साल और जो एमएससी वो फंस जाता है। लेकिन जब तक हम लोकल चीजों में हम बिलीव नहीं करेंगे और उसको हम प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट को नहीं बताएंगे, पोटेंशियल कितना है इसको हम नहीं बताएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पुस्तक के बारे में ही सोचेगा या फिर जो सिर्फ बुक में लिखी है या फिर जो जॉब है उसके बारे में सोचेगा। तो हमको बहुत ज्यादा स्टूडेंट को सिखाना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितने सारे हैं, हमारे आसपास में कितना रिसोर्सेस है, उसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए हम कैसे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं
और जो फंड्स के भी जो इशू आते हैं वो बहुत ज्यादा फंड्स लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी कितना प्रमोट कर रही है और बहुत ज्यादा फंड जो इंस्टीट्यूशनल जो फंड है वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जो अभी गौठान्स है, मल्टी एक्टिविटी सेंटर है, उस सब के थ्रू भी हम लोग बहुत छोटे लेवल से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और भी जो सोशल जो एंटरप्रेन्योरशिप जो आजकल नया टर्म चल रहा है उससे भी हम कैसा जुड़ सकते हैं, वो सबको सर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्टूडेंट लेवल में भी बात करने का, प्रोफेसर लोग के प्रोफेसर से भी लेवल में बात करने का, और कैसे मोटिवेट करके हम बढ़ाए, इसमें हम बात करने का। और सर अगर ये चीज हम करने में सक्षम हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सोसाइटी में भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। 5 साल या 10 साल बाद हम अगर ऐसा सोच रख के हम अगर काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में जो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक नया दिशा, नया विजन और नया इकोसिस्टम डेवलप हो, उसके लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत ही ज्यादा पीछे है। जो भी हम सेक्टर की बात करते हैं, लगभग हर सेक्टर में छत्तीसगढ़ का नाम लिस्ट साइड ही आता है। और जबकि हमारे पास पोटेंशियल, नेचुरल रिसोर्स, हर चीज बहुत ज्यादा है, बस यहाँ पर लोग करने वाले और सभी चीजों की कमी है, मतलब जो करने वाले उनकी कमी है। तो हम लोग सर यहाँ पर बहुत अच्छा एजुकेशन को शिक्षा दे सकते हैं, और जो क्वालिटी एजुकेशन उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। और बहुत सारे सर इसमें सपोर्ट है, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल से भी नहीं मिलता। जो एक सर जो है कि RKY रफ्तार जो योजना चलती है यूनिवर्सिटी लेवल में भी, उसमें भी सर एक्चुअल में प्रमोट करना चाहिए एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर से जो पास आउट हुए हैं, या फिर जो हमारे संस्था उनको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो दूसरे लोग को ही बेनिफिट मिल जाता है। तो यूनिवर्सिटी में भी जितना हो सके अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो चीजें हैं, उसको सर अगर सब हम लोग काम करें, हम लोग सबको प्रमोट करके, तो सर निश्चित ही 5-7 साल में हम अच्छा इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। एक जो यूथ है, अगर इसमें पैसा दिखेगा और पैसा रहेगा और जो अच्छा चीज रहेगा, तब तो सर ऑटोमेटिक ही हमको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगा, वो खुद ही इस सेक्टर में अपने खुद से ही आएंगे। और बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि फ्यूचर भी वही है, और जितने डेवलप नेशन हुए हैं वो सब भी क्यों इंटरप्रेन्योर से ही वो डेवलप हुआ है। जितना भी नामी बने, जितना नाम हुए हैं, तो सर हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट करने का। तो सर हम इसको ही फ्रंट में या मेन सपोर्ट में लेके हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। और ठीक है साहू जी, तरुण जी, थैंक यू जी, सो मच, थैंक यू सो धन्यवाद मच। सर। आपने जो लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात की है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात की है, तो क्या जी। आपको प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल ठीक नहीं है? सर बहुत बढ़िया है, लेकिन सर उसका वोकल फॉर लोकल, तो ये तो already है जी ना? सर, जी सर ऑलरेडी है, लेकिन सर सर स्टूडेंट लेवल में उतना इम्पैक्ट नहीं है। जैसे कि सर हम देखिए जो आपने एक रफ्तार का बोला है, रफ्तार का जो जी आपने बोला है कि स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी प्रेफर्ड इन रफ्तार देन यस सर, स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर एरियाज, that will be यस सर, taken care of by the honorable vice chancellor. Okay, thank यस you सर, for your यस suggestion. सर, Now may I call थैंक यू upon the सर। next student please? Who is next? Please introduce yourself. Next please. We can have the voice from our technical staff also. It will be in a blending mode. Staff can also. हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट में। Time is 1 minute each. Yes, your views are welcome. Dr. Khalko. Dr. Khalko. Dr. Khalko. अरे सेकेंडरी एग्रीकल्चर की बहुत बात चल रही है। नहीं सुन रहे। डॉक्टर खलको प्लीज अनम्यूट। खलको साहब अपने आप को अनम्यूट करिए। फोन करता हूँ। खलको साहब अनम्यूट होइए पहले। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आप ठीक है, प्लीज।
Dr. Jiten Sinha. Dr. Jiten Sinha, yes. Yes, sir. Yes, young man, you can express your views. Yes, sir. It's very good, Honorable Vice Chancellor, sir, and Dr. S. Sengar, sir, Dr. MP Thakur, sir, Dean of College of Agriculture, and other dignitaries. My view, I am of the view that the produce of agriculture community, the price must be increased. Because unless we recognize the price, how much we have to pay, people are not going to respect it. It's very pity to sad. Gutka jo hai, people have the resources to purchase gutka, but they do not empower themselves to purchase badam. बादाम 800 रुपए किलो है, गुटखा का करेंगे तो 2400 रुपए किलो पड़ता है. Why such kind of things are there? एक का दूसरे important. This is being agriculture from agriculture point of view. The commodity, the prices must be increased along with the quality assurance. This is the key, and because one can have money for alcohol, but is not having money for milk. This is another thing that we need to look at. We should, because if you have too much quantity of produce, be it the tomato or whatever it may be, the prices must go down. So the pricing, as if now we have a policy to process this surplus produce. We have to move from produce to process. We need to produce more and more to process, so that these things could be brought to a uniform level between supply and demand of it. So once this equilibrium is maintained, the prices will also be very much maintained, and that will be beneficial to the poor section of the society. And the second thing, whatever the inputs that is coming in agriculture, it is more of the industrial inputs are there, rather than taking the inputs from the individuals, be it the vermicompost or now the government is also focusing on NGGP. We are providing the vermicompost. Unless this more from industries inputs are coming up, we know that this how the price is escalated. Okay, sir, your points are well taken care of. Thank you, Dr. Jiten Sinha. So cost cutting has to be there, and some alternative means must be sought. Thank you very much, sir. May I request others to interact, please, others. Dr. Lalji Singh. Dr. Lalji Singh, you are raising your hand since the last webinar. Dr. Lalji Singh, are you hearing me? Please express your views on second webinar, not first. So please unmute yourself, sir, first. Lalji Singh, sir. Lalji Singh, sir, please unmute yourself. Yeah. So first I would like to congratulate our Honorable Vice Chancellor, Dr. S.S. Sengar, sir, for thinking such a nice program to review the progress as well as involving the youth in the second session on the occasion of the 36th this Foundation Day of our university, and I congratulate one and all. If permitted, and if Controller Sahab is here, which I wanted to ask in the first session, You are allowed for second webinar. Yes, sir. I will put up. First, what I want to say to Controller Sahab, sir. Forget Controller. He is not here, Doctor. He is not here. Forget him. You talk to him personally. He will tell you in detail. No, it should go to authority also. You are the authority. Honorable Vice Chancellor is sitting here. Our highest authority is sitting here. Say about something about second. Say something about second. Yes, sir. Focus must be given across the country about the losses of the
food grains, going in various ways, particularly when there is a calamities like drought, or then recently there was a winter rains, and winter rains were, though it is not expected at this time of time, particularly during the month of January, usually comes during the month of February. So there was a great loss of the grains, particularly the rice, in the states and across the country, were damaged due to this such a environmental issue. So the protection and investment and infrastructure development in that direction must be taken care of by the authority, though it is not in the jurisdiction of our university. It is a matter of the state government and the central government. This is a big issue that must be given priority. And as far as many students raise this, Sir, can you express your views about motivating, attracting, and retaining youth in agriculture? Be stick to the topic. Yes, sir. Yes, sir. Motivating, attracting, and how can you motivate? How can we attract? How can we retain the youth in agriculture? Who is running away from agriculture? Yes, yes, sir. Actually, can we provide entrepreneurship for preventing losses due to natural calamities? Can we ask our students to develop some entrepreneurial skill in preventing losses? Because as you said, rightly said, a lot of losses are there. People are trying. Government is thinking of developing the infrastructural facilities, but somehow losses are still there. So can you think of the entrepreneurship development in this particular field? If yes, then how? That can be one of the way out and one of the idea from your side, if it is so. I have not much idea about that, how to develop the चलिए, now I will call upon some students from Raipur Agriculture College. I named many students earlier. Now it is the time for students to express their views. Students, please. Students, please. Introduce yourself, unmute, and express your views. Santiraj, Kuldeep. Santiraj is there. Shivam Sharma, are you there? If not, then I request the ministerial staff to please express your opinion. मैं अब जो है हमारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जिनके बच्चे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, प्राइवेट कॉलेज में हैं, मैं चाहूंगा कि नहीं जुड़े हुए हैं सर, जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वे भी अपने विचार रखें कि ये जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है उसको कैसे आगे बढ़ाने में, उनके जो विचार हैं वो निश्चित रूप से हमारे काम के होंगे। जो हमारा आज का वेबिनार टॉपिक है उस टॉपिक में हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के यदि कोई विचार हो तो वो भी आमंत्रित हैं और उनके विचार बहुमूल्य हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वही आर्या की और एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। दूसरे लोग भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं के लिए, तो मैं आमंत्रित करूंगा। गुड आफ्टरनून सर। यस, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? सर मैं आरएमडी कॉलेज से। वेरी गुड, व्हाट्स योर गुड नेम? तेजस्विनी प्रज्ञा सिंह सर, आरएमडी कॉलेज। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत से कृषि संबंधित सामग्री विदेशों में भी महत्वपूर्ण थी। इसी से संबंधित व्यापार होता था। अनाज, मसाला, तो आज स्टडी के माध्यम से हम उनका अधिक उत्पादन करने का नया तरीकों से रिसर्च करते हैं और आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण करता है। कृषि एक भविष्य में
हमारा उज्जवल करता है कृषि, ये हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है, जैसे कि इसे गोबर से संबंधित कई गुणकारी काम जैसे परमाणु प्रदूषण को दूर करना इत्यादि कृषकों के लिए फायदेमंद है। प्राचीन काल में कृषि से ही संबंधित कार्य होता था। घर में ही तेल उत्पादन से चावल दाल बनाया जाता था। घरेलू रोजगार बढ़ती थी, बेरोजगारी दूर होती तेजस्वरी, कृषि करने के बाद क्या करोगी? क्या करोगी? हाँ, आप क्या करोगी? व्हाट इज योर एम? आपने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया है एग्रीकल्चर डिग्री लेने के बाद क्या करोगी? नौकरी, खेती? चावलों के बारे में खोज करूंगी, उसका क्वालिटी और अच्छा करूंगी। सर हम लोग खेती बाड़ी से है ना, हम लोग का भी बहुत बड़े एरिया में खेती बाड़ी करते हैं, तो सर मैं अपने ही एरिया का धान उत्पादन और ज्यादा अच्छा करना चाहती हूँ खेती बाड़ी में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धान और स्पाइस को भी आप प्रमोट करोगे? जी सर। स्पाइस प्रोसेसिंग, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सुप्रीति बैनर्जी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। यस सर। सर अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने एथेनॉल प्रोडक्शन को सर एनहेंस करने के लिए बोला है, तो सर पैडी से एथेनॉल प्रोडक्शन के साथ प्लांट्स हम छत्तीसगढ़ में सेटअप कर सकते हैं सर। सबसे क्योंकि हमारी जो क्रॉप वेस्ट है, क्रॉप रेसिड्यू है, आप सर अंकित उसका दुबे यूटिलाइजेशन हो जाएगा और पहले से था। यस सर। हाँ बेटे, यहाँ पर अभी आज जो हम दूसरी विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है बार बार लेटर लिख रही है केंद्र सरकार को कि हम पैडी से इथेनॉल बनाना चाहते हैं, और अभी तक मेरे ख्याल से केंद्र सरकार से स्वीकृति राज्य सरकार को नहीं मिली है। इसकी क्या टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट कैन वी कन्वर्ट पैडी इनटू इथेनॉल is a big question mark, and it needs the due permission from the central government, and I think government of Chhattisgarh has not received the permission from central government. So it's a debatable issue, you can say, but yes, technology is there to convert paddy into alcohol. Okay. Now any other students would like to react, would like to express their views? मैं और दूसरे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अपने विचार रखें कि हम आज का जो टॉपिक है हमारा अट्रैक्टिंग, मोटिवेटिंग, रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, इसमें अपना योगदान कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि आगे आने वाले 5 साल में हम 15 लाख रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने होने वाला है। उसमें आप क्या भागीदारी अपनी निभा सकते हो एज ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर? व्हाट कैन बी योर व्यूज? क्या आपके दिलो दिमाग में कुछ हो रहा है जो मुख्यमंत्री को दिया जा सकता है कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से? ऐसा कुछ यदि आपके दिलो दिमाग में है, आपके यंग ब्रेन में है, आपके नए खून में है, तो निश्चित रूप से उसको हमारे समक्ष रखिए। आपकी बात मुख्यमंत्री तक जाएगी और सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक जाएगी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कुलदीप पटेल है। यस, बोलिए पटेल जी। सर मेरी कंपनी है सर फसल बाजार करके, जिसका मैं फाउंडर हूँ, और ये हमारे IGKV के स्टार्टअप में भी है। वेरी गुड जी सर। तो सर हमारा एक ऐप है फसल बाजार, जिसमें क्या है कि किसान जो है अपना प्रोड्यूस को डायरेक्ट कस्टमर को भेज सकता है। इसके लिए हमने एक ऐप बनाया है जिसमें फार्मर्स अपना प्रोडक्ट को ऐड कर देता है सर, और कस्टमर सीधे मतलब फार्मर से कांटेक्ट करते हैं सर, जिसमें फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो सीधे कस्टमर तक जाता है सर। इसके बाद सर हमने रायपुर में होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट की है, जिसमें किसान का प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कस्टमर के घर तक हम पहुंचा के देते हैं, जिसमें किसान को अधिक बेनिफिट हो रहा है सर। और इसमें हमारे टीम में अभी 12-15 लोग हैं सर, जो अलग अलग फील्ड देखते हैं। प्लस सर हमने क्या किया है कि वेजिटेबल्स एक लिमिटेड मात्रा में कंजप्शन होता था, वेजिटेबल हर गली चौराहे पे मिलता है, तो सर हम लोग वैल्यू एडिट किए हैं। इसमें वैल्यू एडिशन में हम वेजिटेबल्स जो बच जाते हैं उसका जूस बना के फ्रेश जूस हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं सर।
बहुत बढ़िया पटेल जी, जी यू आर सर, डूइंग थैंक ए यू। वंडरफुल जॉब थ्रू फसल बाजार। जी सर। मैं जानना चाह रहा था कि आपके हिसाब से कितने लोग जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, बाहर के भी जुड़े हैं? सर ऐप में अभी 4000 लोग जुड़े हैं सर, और लोकल रायपुर में अभी 1250 कस्टमर हैं सर। 1250? जी सर, लोकल रायपुर में ही। जी सर, ये मैं 3 साल से कर रहा हूँ सर, और जब मैं बीटीसी कास्ट में था तब से शुरू किया था ये काम। अच्छा, बिलासपुर से, वेरी गुड। जी सर। तो ये इसको आप थोड़ा और प्रमोट करिए ना, लाइक अमेजॉन, ऐसे कोई बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं वर्ल्ड लेवल के, हाँ सर। ऐसे प्लेटफॉर्म से क्या कुछ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, ताकि आपकी कर रीच सकते जो हैं है सर, बजाय छत्तीसगढ़ और लोकल के, आप ये ग्लोबल हो जाए। सो प्लीज जी थिंक सर। ऑन दिस डायरेक्शन. You have जी सर। expressed your valuable views. We ये really सर, अब respect it. And I would हम लोग simply इसी urge दिशा में you. अभी काम कर रहे हैं सर। अभी हमने जो जूस बनाया है वेजिटेबल जूस, उसका टेस्टिंग चल रहा है सर, और जो जो फूड सेफ्टी से जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए काम कर रहे हैं अभी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद इसको बड़े पैमाने पे पूरे छत्तीसगढ़ में या आउट ऑफ स्टेट भी इसको लॉन्च करेंगे सर। बहुत बढ़िया। हम ये ई हाट का नाम सुना है सर आपने? कि ई हाट का नाम सुना है? किसान यस सर। स्मार्ट ई हाट, यस सर। इनका नाम सुना यस है? सर। यस सर। हाँ, तो सक्सेना जी से पहले कभी बात जी की सर। क्या? डॉक्टर आर एस सक्सेना से पहले कभी बात की इस विषय में? यस सर। ये उसके जन्मदाता यही स्टार्टिंग हैं, जब किया था डॉक्टर तो आर एस मिला सक्सेना था। जी। है। चलिए जी चलिए, सर, थैंक यू। मिला हूँ जब जब स्टार्ट किया था फसल बाजार को, तो हाँ, उन्हीं से कंसल्ट करता था सर कि चलिए ऐसे ऐसे कर रहा हूँ सर, इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सर। नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ, बोलिए बोलिए। बोले, अपने विचार रखें। एनीबडी? The theme is open to all. Theme is open to all other than deans, directors. हेलो सर, Yes. मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और मैं कोर्स कॉलेज कोलिया से बोल रहा हूँ। सर, आवाज आ रही है? आ रही है, प्लीज आप बोलिए। यस सर, मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और मैं कार्स कोरिया से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं एग्रोनॉमी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। सर, एग्रोनॉमी जिसे सर खासकर मैं राइस के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ सर धान का कटोरा कहा जाता है। धान का खेती जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बेरोजगारी दूर हो जाएगा। तो इसके लिए सर मैं एग्रोनॉमी में कुछ ऐसा खोज करना चाहता हूँ जिससे धान की जो खेती होती है उससे जो हानि होती है, जैसे कि जो कीड़ा लग जाता है और जो उसको मार्केट में ले जाने के बाद करते हैं, उसमें सर कुछ ऐसा खोज करना चाहता हूँ आगे पढ़कर, जैसे एग्रोनॉमी से एमएससी करके, ताकि लोगों को फायदा हो और किसान ज़्यादा से ज़्यादा खेती के ऊपर भरोसा करें और सर अच्छा खासा प्रॉफिट हो। Thank you, साहू जी। जी सर। Thank you very much. Anyone else? Anyone else? हेलो। For a minute only. हेलो। Yes. हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मैं नरेंद्र कुमार हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ सर आईजीकेवी से, डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस। सर, मैं बोनसाई के ऊपर बोलना चाहता हूँ। सर, बोनसाई हमारा इंडिया का ही कल्चर है सर, इसका ओरिजिन यही इंडिया को ही मानते हैं। बौद्ध धर्म से पहले क्या जो बौद्धि लोग थे वो लोग मेडिटेशन कराते थे सर पहले, उससे हमारा जो ट्रीटमेंट चलता था, जो बीमार लोग रहते थे। उसके बाद जो बौद्ध धर्म वाले लोग थे वो चाइना गए, चाइना से जापान गए, तो ये वहाँ प्रचार प्रसार वहाँ हुआ सर। तो वो वहाँ के लोग इसको बहुत ही ज्यादा इसको प्रचलित किए, उसको सर हम लोग को इंडिया में भी प्रचलित करना चाहिए। तो सर
अब छत्तीसगढ़ में भी उसको धीरे धीरे अपनाना चाहिए। जैसे कि अभी मैं चालू किया हूँ कुछ प्लांट के ऊपर बोनसाई पे काम करता हूँ, करीब 100-150 प्लांट पे मैं बोनसाई काम करता हूँ। तो उसको सर थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ सर, और बोनसाई के ऊपर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। आप वेजिटेबल साइंस वाले हो, बोनसाई सोच रहे हो? हाँ सर, वो मेरा हॉबी है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आई एम गोइंग टू इनवाइट द ऑनरेबल डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डॉक्टर A.K. Singh साहब. May I request Dr. A.K. Singh Sahab to kindly join. Sir, you are welcome to our program, and our afternoon program is, the webinar theme is motivating, attracting and retaining youth in agriculture. And I think you are the right person and the custodian of this ARIA project, which was launched 5 years back under your supervision. We still hope that under your dynamic leadership, this university has trained more than thousands of young youth in the most disadvantaged area of the university, that is Dantewada. May I request Dr. A.K. Singh Sahab, Deputy Director General. अच्छा जी, ओके सर, ओके। चलिए, नहीं कर लिए क्या? Sir, have you joined, sir? Singh Sahab, have you joined, sir? ऐसा तो नहीं, वो ढूंढना पड़ रहा है सर। Sir, good afternoon to you, sir. It is our privilege and honor to welcome Dr. A.K. Singh Sahab, the Honorable Deputy Director General, Agriculture Extension, Indian Council of Agriculture Research. Sir, 5 years back, you started a wonderful project, and that was on ARIA, attracting rural youth in agriculture. And keeping that in view, the Chief Minister of Chhattisgarh is also wanting to enhance the youth, and he wants to retain youth in agriculture especially. And government of Chhattisgarh is targeting to enhance this youth entrepreneurship, to retain entrepreneurship in the next 5 years. The target is fixed, and that is 15 lakhs, sir, at the rate of 3 lakhs youth per year. So, sir, under your leadership, 5 years back, KVK Dantewada started a project on ARIA, and the Honorable Vice Chancellor and all the authorities of the university, we were just viewing on the ARIA achievements, and you will wonder to know, sir, the KVK Dantewada has provided, they have trained more than 1,000 youths in 5 enterprises, and they are doing a wonderful job. So over to you, sir, for your message. I request you to kindly express your, kindly convey your message on the auspicious occasion of 36th Foundation Day of Indira Gandhi Agriculture University. Over to Dr. A.K. Singh Sahab. Yes, sir. Are you listening to me, sir? Clear to you or not? Pardon, sir?
Sir, your voice is not clear. Hello. Yeah, now it is clear, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, please go ahead, sir. Okay. Okay. Thank you very much, Dr. M.P. Thakurji, Honorable Vice Chancellor Dr. Singer, Dr. M.P. Thakur, and all the Dean and Directors, and all those colleagues who are joining this program. First of all, I congratulate all of you and the university officials for 36th Foundation Day of IGKV Raipur. I also find it's privilege for me to be part of this function. Already a meeting is going on in ICR, which is being chaired by DG Saab. So I'm just joining on this mobile because that computer is already engaged in another meeting. So I will be briefly with you, and I'm really happy that IGKV has grown so much over years. I have visited you many times, and once I visit there, every time I find that there is some growth in the university and a lot of new things which you can say that it cannot be thought of, the kind of protected cultivation and others which has been initiated in your university has happened over a few years. So I congratulate all of you, all the staff members, the employees and the students on this 36th Foundation Day, and I wish that the university grows further. Now coming to the brainstorming session, which is exactly on, I have written the topic, motivating, attracting, retaining youth in agriculture. So let me say that in 2016-17, we brought a project and we called it Attracting and Retaining Youth in Agriculture. And it was, you can say, launched by none other than by our Honorable Prime Minister when we had a national conference of KBK in Patna in 2016-17. And this was launched. Another project was Farmer First, that was also launched. So that way, this initiative happened. But later on in 2020, 1920, Dr. Paroda came with another concept, and he said that motivating and attracting youth in agriculture. And what Dr. Thakur, you have kept this title merging both of these, you can say, ideas. Motivating as well as retaining youth in agriculture, attracting also. So it looks quite fascinating. Purpose is the one only, that how youth can get certain income from the agriculture on regular basis. And what, when we pursued this project, ARYA, our purpose was is that how we can create 150 to 200 youth in each village who could establish their own entrepreneurial activity. It's not the general activity, the farming which they are doing, but other than farming, related to farming, if some economic activity a youth can be able to make, he will be self-employed as well as he will employ some other youth also. As of now, 100 KVKs are working on this. From 16-17, we are working on 100 KVKs. Again, the 100 KVKs will continue. Maybe that will be changing those KVKs we were working previously, but this message will go across the country. And we are trying that this project continues for another 5 years to have the impact of this project. You mentioned your 1 KVK has been able to identify 1,000 youths, train them, but I will not be happy just simply by a kind of training given to them, but will be more happy that some entrepreneurial activity is happening there and some kind of employment is getting generated at each of the centers. So that is what my purpose is. This is also, I have seen over the years that when government has emphasized on doubling farmers' income, this is one activity which can definitely help in doubling farmers' income. And this is my also experience through this project, that whatever farming a farmer is doing, what kind of cropping system or agriculture is following, if you are able to include one more activity which is economic in nature, whether it is mushroom production, whether it is poultry, honey production, or anything like that, he will be able to double his income definitely. If even crop, whatever earnings he was making from the crops, that remains stagnant also. If you are able to include one activity, is it coming or not? It's coming, sir. Your visual videos. Yeah, now it's okay, sir. Okay, sir. Okay.
So what I mean to say that if we are able to include one which was shared by Honorable Prime Minister, a kind of reality which can happen at the ground level. I have also seen through the data that by having this kind of economic enterprises, I think more than 5,000 youth already they have been able to Is it audible? Hello? It's audible now, sir. Audible as well as Yes. visible. Yeah. So I mean to say that we have seen from the data that by having such activities, an average of 12,000 per month was achieved by the youth who are working on such activities. And this is a, you can say, that's a great achievement for a youth who's living in the village. We have experimented across the country and we have seen that how these projects are helpful to the youth. And I request that such projects could be launched. I little bit of support, technological support and certain inputs, it can be spread across the, you can say, the country. And that is the message on this day. That let us work on these areas which are very, very important. Let us orient our youth in those areas which are giving income to the youth. At the same time, those investing in the touch of or extension system or whether research. System models have come up and youth are able to make different kinds of activities or you can say commercial entities or whether integrated farm incubation speak for incubation, it doesn't their own economic activities may be smaller. Or bigger in size. So I will not take much time.
Again, I will congratulate the Honorable Vice Chancellor, IGKV. IGKV is the foundation for you. We have been pioneer in many things and will continue for tribal agriculture for this foundation. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much for sparing your valuable time despite the meeting, which was to be attended by DG's meeting, attended by you. Sir, one thing which I would like to just bring to your kind notice, sir. I have just consulted the KVK Dantewala, and he told me, sir, out of 1,000 youth which is trained by KVK, about 20% are involved in different activities, and that is the data available with them, and it is on the ground. It is the ground reality also, sir. In the many activities which they have trained, those activities are very well there, and many a time even the Honorable Vice Chancellor and the officials from the university, they are visiting very frequently. So thank you for your motivational and encouraging words to and showing the blessings during the occasion of 36th Foundation Day of Indira Gandhi Agriculture University. And again, we would like to thank you so much, sir, from our bottom of heart for sparing your valuable time. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा नाम शनि राज है। मैं बीटीसी कार्स बिलासपुर से वेजिटेबल साइंस से एमएससी कर चुका हूँ सर, और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ मिलकर आईजीकेवी के जैसे तरुण साहू हैं, कृषि युग की शुरुआत की है सर। इसमें हम जैसे फसल है, धान है, गेहूं है, और भी जो क्रॉप की वैरायटी है, उनकी पुरानी देसी किस्मों को हम किसानों के यहाँ से ले रहे हैं सर, और उनकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, और उसकी पैकेजिंग करके सर हम इसकी खेती करके बेच रहे हैं सर इस चीजों को। इसमें तरुण साहू थोड़ा अनम्यूट होंगे। इसमें सर हम लोग अभी जो दिल्ली में जो एक इसका प्रोग्राम हुआ था जिसमें अपेडा वाली, तो अपेडा ने हमको स्पॉन्सर किया था, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से हम गए थे और पूरे इंडिया से 9 लोग थे। और अपेडा चाहती है कि सर हम इसका पेटेंट कराकर और भी इसको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करें। जैसे धान की फसल में हम जैसे सर देखेंगे कस्तूरी, समुन मोती, समुन चीनी, लोकती मांझी, और गेहूं में जैसे सोलह मोती हो गया, पैगंबरी और कपरी, ये सब वैरायटियों को सर हम किसान के यहाँ ही उगा रहे हैं, कुछ अपने यहाँ भी उगा रहे हैं, और इन सब की पैकेजिंग करके सर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर, और इसकी प्रचार प्रसार और स्पॉन्सर भी कर रहे हैं सर। बहुत बहुत बढ़िया साहू जी, बहुत बढ़िया सन्याराज जी। जी सर। आई रियली कॉम्प्लीमेंट यू फॉर डूइंग दिस वंडरफुल जॉब and enhancing the earning of the farming community. Okay, sir. Thank you, and I wish you all the very best to enhance the income of you and your farming community. Thank you so much. Thank you, sir. So thank you so much. Now I stop here with the first open house session, and now I will start the second session where all the dean directors of Agriculture University, they have to express their views. So over to the directors, and the first director in the queue is Dr. P.K. Chandrakar, who is 2 in 1. He is the director farm and director research also. So I will request him to express his views, maybe for 1 or 2 minutes. Dr. P.K. Chandrakar, please. हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसमें मेनली जो सीड, अपना जो सीड प्रोडक्शन से जुड़ सकते हैं, और सीड प्रोडक्शन से आपको भी मतलब डबल इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और सीड प्रोडक्शन के लिए आप अपना खुद का जो देसी लैंड एसेस किसमें है, उसका भी सीड प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। और उसका अपने इम्प्रूव वैरायटी है, वेजिटेबल सीड है, इसमें आप जुड़ के अपना व्यवसाय
कर सकते हैं, और ग्रुप में भी कर इंडिविजुअल कर सकते हैं, और ग्रुप में भी आप सोसाइटी बना के अपना 6% इन्वेस्टमेंट में आप जुड़ के अपना इनकम डबल आप कर सकते हैं। थैंक यू। साथियों, बहुत ही अच्छी बात अभी हमारे कलीग डायरेक्टर फार्म एंड रिसर्च ने कही कि यदि आपको इनकम डबल करना है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो सीड प्रोडक्शन कैन बी वन ऑफ द इंटरप्राइज. You can have the hybrid seed production, you can have the composite seed variety production, you can have the seeds of vegetable, and it has enormous potential. My dear students, if you target this activity, I tell you, you can earn and you can become lakpati and crorepati within no period of time. And the examples are before you. The Narayan Bhai Chawla is there, Bimal Chawla is there, and if you are really processing, marketing, branding, and exporting, then you will not going to benefit yourself. You are going to benefit the farming community. And thank you, Dr. Chandrakar, for expressing your views. I think the youth who are listening, Dr. Chandrakar, he has a lot of experience. And let me tell you, friends, 9.5 lakh tons of seed is produced. It is required in Chhattisgarh. And I think the demand is more than the seed is produced. Dr. Vivek Tripathi can correct me. As far as my knowledge goes, 9.5 lakh tons of seed is produced, and I think demand is more than this. So I will urge all the youths to kindly focus on this activity: seed production of vegetables, cereals, pulses, oil seeds, even medicinal plants can be one of the activity which can be targeted to enhance the income of the entrepreneurs and to enhance the income of the rural youth. Thank you so much. Now I will ask the Dr. Vinay Pandey, who is an agriculture engineer, who is the Dean Faculty of Agriculture Engineering, to say something about how agriculture engineering can enhance the income of the youth and how they should come to take up the agriculture engineering as a profession. मेरी कुछ दो चार बातें केवल उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके कुछ जो सेंटेंसेस जरा सुनने को मिले, ऐसा लगा है जैसे अंदर से कुछ वो निराश टाइप हैं। उनको ऐसा नहीं दिख रहा कि आगे एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। केवल मैं आज ज्यादा समय नहीं है, कभी मौका लगेगा तो हम विस्तृत में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग वर्सेस एग्रीकल्चर, उसको आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जोड़ सकते हैं, वो भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। एक समय जो लहर सॉफ्टवेयर की थी, चाहे लड़का मैकेनिकल पढ़ा हो, मेटलर्जी पढ़ा हो, इंजीनियरिंग कंप्यूटर पढ़ा हो, सिविल पढ़ा हो, लेकिन पहला टारगेट उसका सॉफ्टवेयर, और उनको मिलते थे जॉब इंडिया के बड़े शहरों में, यहाँ तक विदेशों में। करीब करीब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वही लहर एग्रीकल्चर के लिए पैदा हो रही है। इसलिए ये तो बिल्कुल निराशा आप निकाल दीजिए कि एग्रीकल्चर का स्कोप कम है, संभावनाएं नहीं है। दूसरे इंजीनियर्स एग्रीकल्चर की ओर देख रहे हैं। हर डिसिप्लिन का इंजीनियर उसको अपने आप में एग्रीकल्चर में वो अपनी इंजीनियरिंग अप्लाई करना चाहता है, वहां स्कोप ज्यादा दिख रहा है। तो जहां दूसरे डिसिप्लिन के लोग हमारे घर में स्कोप देख रहे हैं, वहां हम निराश क्यों हो? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये कैसे करना है, ये आप खुद सोचना है। कभी और दूसरा ओकेजन होगा, हम और चर्चा करेंगे। तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय जो भिलाई में है, उनके कुलपति सिविल इंजीनियर हैं। हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कई 15-20 साल से रिसर्च में हमने कोलैबोरेशन में काम करते हैं। उनने अपने यूनिवर्सिटी के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे ब्रांचेज के स्टूडेंट को गांव गोद दिलवाया है। हर इंजीनियरिंग का बच्चा एक ग्राम गोद लिया हुआ है। गांव में वो लोग काम करते हैं। अरे मेटलर्जी वाला गांव में क्या करेगा भाई? लेकिन उनको, उनके टीचर्स को, उनके कुलपति जी को एक स्कोप दिख रहा है एग्रीकल्चर की फील्ड में कि अगर हम कृषि से जुड़ेंगे, अपनी इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन वहां करेंगे, तो निश्चित है हमको, चाहे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का काम हो, चाहे हमारी सर्विस का काम हो, चाहे हमारे बिजनेस का काम हो, वहां देखेगा। एक नहीं, वी हैव एन नंबर ऑफ सच एग्जांपल्स। 4 दिन पहले
5 इंजीनियर्स थे। हमारे एक प्रोफेसर हेड दवे साहब उनके यहाँ कुछ चर्चा कर रहे थे, मुझको भी बुलाया। मैंने उनसे पूछा, भाई ये तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप क्या करोगे यहाँ के? यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स, यू आर कंप्यूटर। उनने कहा नहीं सर, हमने देख लिया, लेकिन जो एग्रीकल्चर में मजा है, जो एग्रीकल्चर में स्कोप है, वो हमारे कोर ब्रांच में नहीं है। तो एक बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा कि जितने हमारे बच्चे अगर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर में अद्भुत स्कोप है, और जब दूसरी ब्रांच का, दूसरे विषय का आदमी हमारे घर में स्कोप देख रहा है, तो हमें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे एक एक मिला के 11 करना है, वो सब हम मिलके करेंगे, सोचेंगे। कभी और मौका मिलेगा तो और इसके विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन इस उदाहरण को मैं बताना चाह रहा था कि कहीं कहीं कोई कमी है ही नहीं, चाहे वो एग्रीकल्चर की कोर ब्रांच हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो। जिस आदमी के साथ एग्रीकल्चर लगा है उसका अद्भुत स्कोप है और भविष्य में रहेगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर पांडे। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए एग्रीकल्चर को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, और नेचुरल कैलेमिटीज से कैसे लड़ने में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हेल्प कर सकता है, मेरे ख्याल से उस विषय में आप डॉक्टर पांडे के विचार सुन रहे थे। और निश्चित रूप से मैं भी ऐसा समझता हूँ कि मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और जितना मैकेनाइजेशन बढ़ेगा उतना ही मेरे को लगता है कि एग्रीकल्चर का भला होगा। और चाहे वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स की बात हो, आज जो है इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, तो मेरे ख्याल से कस्टम हायरिंग के माध्यम से भी हमारे जो युवा हैं वो ऐसे सेंटर्स का ख्याल रख सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाउ दे कैन बी यूजफुल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अभी उन्होंने बताया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो समन्वय है दूसरी इंजीनियरिंग से, और मैं तो कहूँगा और तीसरी इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, वो लोग भी एग्रीकल्चर को सरल बनाने में, आपने सुना होगा अभी ड्रोन का उपयोग जो है, इस बार पहली बार हिंदुस्तान में ड्रोन का उपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किया था और लोकस्ट मैनेजमेंट के लिए पहली बार यूज हुआ है। मेरे ख्याल से ऐसी अनेक विधाएं हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो, बायो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हो, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फार्म मशीनरी हो। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का इनॉर्मस पोटेंशियल है एग्रीकल्चर को सरल बनाने में और एग्रीकल्चर के यूथ को स्मार्ट बनाने में। और मेरे ख्याल से जब तक इन टूल्स को, इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को आप नहीं अपनाएंगे, तब तक शायद आज का यूथ जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित नहीं होगा, रिटेन नहीं होगा। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। अब मैं विचार जानना चाहूंगा हमारे दूसरे जो वाटर सॉइल इंजीनियर हैं डॉक्टर एम पी त्रिपाठी जी, वो भी अपनी बात रखें, क्योंकि हर बार बात होती है पानी के संरक्षण की, और मैं समझता हूँ कि ये जिस विषय के एक्सपर्ट हैं। अभी भी कोई बता रहा था कि नॉर्दर्न हिली रीजन में 14% इरीगेशन, छत्तीसगढ़ में 32% इरीगेशन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे कौन से सेंसर्स हैं जो पानी के मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, कौन से माइक्रो स्प्रिंकलर हैं, कौन से ड्रिप इरिगेशन है, और कौन से ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जिससे हम वर्तमान में जो हमारा पानी का हमारा जो पानी का एरिया है, जितना पानी है उसको इफेक्टिवली हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस विषय में अपने विचार रखेंगे डॉक्टर एम पी त्रिपाठी। धन्यवाद सर। पानी का विषय बहुत ही बृहद है। इस विषय में चर्चा अभी 1 मिनट 2 मिनट नहीं की जा सकती है। मैं कुछ बिंदुओं को बताना चाहूंगा जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, अथवा जो हमारे नए ग्रेजुएट्स आने वाले हैं या नहीं आ पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बताना जरूरी है। हमारे जो 12th के छात्र हैं या 11th 10th 11th 12th के छात्र हैं, उनको हमारे जो ग्रेजुएट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो अपने समझाइश दें। हम लोग भी जा जाकर हम समझाइश देंगे। जैसा अभी डॉक्टर विनय पांडे और ठाकुर साहब ने बोला कि कृषि का सरलीकरण किया जा रहा है। सरलीकरण तो हम कर ही रहे हैं। कृषि में सबसे बड़ी समस्या होती है, हम किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ किसानी होती है, खेती करते हैं, हम लोग किसानी से भागते हैं, क्योंकि किसानी का धंधा एश्योर नहीं है। कभी भी कुछ भी, कभी डाउट आ गया, कभी ओले पड़ गए, कभी कुछ पड़ गए, मतलब इतना बिजी वाला है, इतना उसका सरलीकरण तो हो रहा है, ट्रैक्टराइजेशन है, और उसके बाद वाटर इरिगेशन सिस्टम नहीं है अपने पास, तो उसका उस विषय में काम चल रहा है।
और यदि हम मार्केटिंग का जो है वो नहीं है, तो बहुत सारे ऐप के माध्यम से इरिगेशन की जो फैसिलिटी, सेंसर, ड्रोन और इसके माध्यम से सरलीकरण किया जा सकता है। और इसी प्रकार से हम लोग अभी वाटर में भी काम कर रहे हैं। वाटर सॉइल मास्टर बेस सेंसर वगैरह लोग बनाए गए हैं, जिससे हम इरिगेशन को चलते-फिरते हमारे में इरिगेशन होता रहेगा। हम कहीं से भी उसको स्टॉप कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, हमारा समय बचेगा। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम खेत में रहें ही। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सी समस्याएँ सॉल्व हो रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको बिज़नेस करना है, खेती को अधिक उद्योग बनाना है, तो आपको आगे आना ही पड़ेगा और कुछ जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करते हुए जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, उसकी मतलब जो उत्तम क्वालिटी है उसको अपना करके, उसकी उत्तम प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा करके, वैल्यूएशन करके और अच्छे मार्केट में हम जब तक नहीं ले जाएँगे उसको, तब तक हमको फ़ायदा नहीं होगा। इस विषय में हम ज्ञान दे रहे हैं, हमारा सिलेबस भी चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी कई दिनों से मंथन चल रहा है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों को सिखाएँगे अपने और हम उनको इस दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको इसका फ़ायदा होगा। आप इस विषय में ज़रूर सोचें और एग्रीकल्चर की तरफ रुझान हो। हम सबका आप अपने जूनियर्स को सबको समझाएँ और खुद भी इसमें आगे आएँ। निश्चित रूप से हमारा कृषि का क्षेत्र एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से बहुत आगे जाएगा और हम सब रोज़गार देने योग्य बनेंगे, ना कि रोज़गार माँगने वाले बनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर त्रिपाठी। आज का यूथ जो है, आज के किसान का बच्चा चाहता है कि वो मोबाइल पर उसका सारा कंट्रोल हो, और मोबाइल पर कंट्रोल होने के लिए मेरे ख्याल से डॉक्टर एम पी त्रिपाठी और डॉक्टर विनय पांडे जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, ताकि वो हमारी यूथ को ये सिखा सके कि मोबाइल पे हम कैसे खेती कर सकते हैं। मोबाइल से वो सारा कंट्रोल, वो राइट फ्रॉम सीडिंग टू हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ही वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग थ्रू मोबाइल. And I think you are the person from the technology field, you are the person who can facilitate our student. और मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी ने जो बातें रखी हैं, हमारे यूथ को हो सकता है कुछ समझ में आई हो, ना समझ में आई हो तो आप दोनों वैज्ञानिकों से जरूर मिलकर के अपनी बात रखें। अब मैं तीसरे सज्जन को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो कैरियर डेवलपमेंट सेंटर के इंचार्ज हैं, जिन्होंने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए हैं, इधर से जिन्होंने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए हैं और जो शायद बच्चों के वेलफेयर का ही काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारी अभी वेलफेयर एक्टिविटीज स्टूडेंट की रखी थी। डॉक्टर जी श्रीवास्तव, आई विल रिक्वेस्ट हिम टू मेक हिज कमेंट्स। डॉक्टर श्रीवास्तव प्लीज। 2 मिनट सर। मेजर साहब 2 मिनट। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने जब ये दूसरा सेशन सेकंड हाफ का रखा था कल मैंने कुछ छात्रों को इस संदर्भ में just I wanted their feedback because many of the students are known to me and I was surprised that in a couple of minutes I got so many views and more than pages and half and 1.5 page comments of the students. Some of the comments Mr. Dr. Hem Verma, Mr. Raju Paul, Vikas Runawat, he has been he's still PhD student and doing very wonderful entrepreneurship and earning a lot. And Dr. Jagdish Jena, Sir Pankaj, Pooja Sahu, Vivek Singhal, Raju Pal, Mohammad Nawaz, Khushbu Sharma, Ishant Sukhdev, Deepika Sahu. So many students send me how this can be done, their views, and many of the students they have presented very well here. But in a nutshell, as Dr. Thakur Sahab, Organizing Secretary, has told, one more important aspect I would like to focus here, that we need to strengthen alumni meet or alumni webinar or seminar every twice or thrice in a year. We have so many colleges, and our own college at Raipur is quite old, and we have we produce wonderful alumni who are just now Dr. Thakur Sahab has quoted Dr. Ravin Kumar. He is heading a very big institute, and many alumni I know, they are doing in different fields, not only in business but also heading. One of my students is also passed the BSc, IAS also, Dr. Gupta. So there are different fields, alumni are there who can very well guide to our young students, and this point is needed to be
regularized every twice or thrice in a year. And as another point I would like to focus that we just like Kisan Mela, we have in the due course of time in recent years we have developed a lot of entrepreneurship in three different KVKs. That needs to be, one student was telling, that needs to be popularized in the even the each semester level. So in each semester we can organize one job fair involving the students having their own innovative idea as well as the companies related to agriculture and other fields. In that way, the interactions will boost up the mind of the young generations, and they will develop interest and come up with more ideas that can be very beneficial, not only to the young generation but also to the seniors as well. So these two are points I wanted to focus. Many more points are there, and very good points have been suggested by students. And I hope this is all. Thank you very much. Thank you, Dr. Srivastava. Please hand over those 3 pages to Dr. G.P. Pali, who is the reporter of this session. Thank you for your very good suggestion. Now you talked about alumni meet. Who is preventing you to organize these meets? I think, sir, Honorable Vice Chancellor, sir, I attended one entrepreneurship meet in the year 2016 at Pune, and I tell you, all four agriculture university of Maharashtra, they invited all agricultural graduates who were involved in these agripreneurial skills, and I tell you, 3,000 students from four universities of the country, four universities of the Maharashtra. They came, they have a lot of debate, they offered very good comments, and they have interaction, and they have a diary directly of all those young graduates who is doing what. So they get a lot of interaction among themselves, and they help each other also. So I will request you, and I will request the Honorable Vice Chancellor also kindly look into these matters, so that our young graduates, young mind, they have different ideas, very good ideas, innovative ideas. And now the innovative, the man who is the encyclopedia of the innovative idea and the technology provider is Dr. Vivek Tripathi. And I will request him to make his comments about the innovative technology which our youth can adopt. They can adopt in making their own business, or they can adopt in transfer of the technology also in the farmers. थैंक यू सर. इस सेशन का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का जो टॉपिक है, अट्रैक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, तो पहले ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पहला मेरा बात हम लोगों की जो पॉलिसी मेकर्स की है या जो लोग हम लोग काम करते हैं बच्चों के साथ, उनके लिए है कि हमारे इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की गई. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पीछे मोटो यही था कि ऐसे क्रीम बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ में पैदा किए जाएं जो अपने पढ़ने के बाद में हाई लेवल के बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट कर सके. लेकिन पिछले 40-50 वर्षों के बाद भी जो IITs के बच्चे जिनसे ये एक्सपेक्टेशन था कि पढ़ने के बाद वो बिजनेस की ओर जाएंगे हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ में, केवल उनका परसेंट अभी 5%. IIT से जिनसे एक्सपेक्टेशन था, तो रूथ को एग्रीकल्चर में अट्रैक्ट करना. दूसरा पहलू ये बोलना चाहूँगा कि अभी जब इसके पहले वाले सेशन में मैं बोल रहा था कि अपनी जो टोटल वर्कफोर्स है इंडिया की, मीन्स 18 से लेके 60 साल की उम्र की, 33.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं. उस 33.5 करोड़ लोगों में से 16 करोड़ अकेले एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं. वो 16 करोड़ लोग मिलके 40 लाख करोड़ रुपए का, यानी 20% ऑफ द GDP ऑफ द इंडिया प्रोड्यूस. तो 60 मैं कहने जा रहा था 54%, 55% लोग मिलके केवल 20% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स इन द इंडिया. जैसे नीति आयोग में आप जाएंगे तो नीति आयोग क्या कहता है कि बहुत ज्यादा वर्क फोर्स एग्रीकल्चर के अंदर है, उसको बाहर निकालना है. और बात भी सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मानव बेगारी इतनी ज्यादा है
कि कई बार ये सोचना पड़ता है कि वो बेचारा किसान का दुर्भाग्य है या किसानी में जो लोग लगे हैं वो दुर्भाग्य से आगे क्या। तो इस बिंदु को भी सोचना पड़ेगा सर। पीछे भी कई बार अपने यहाँ पर बात हुई, अपनी यूनिवर्सिटी में बात हुई, आईसीआर की एक बार वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि साहब ऐसा कोर्स वर्क बना दिया जाए कि बिल्कुल बच्चा पढ़ के निकले और एग्रीकल्चर को अपना ले। तो मैं भी बहुत दिन देखते रहा, उसके बाद मैंने जाके बीएससी का कोर्स पूरा देखा। कोर्स देखने के बाद मैंने देखा कि इंडिया के किसी भी कोर्स का, ग्रेजुएशन कोर्स का इतना अच्छा प्रैक्टिकल 50% और 50% थ्योरी शायद ही कहीं पर होगा। तो उसके बाद भी जब हमारा यूथ एग्रीकल्चर में रिटेन नहीं हो पाता है तो उसको देखना पड़ेगा। अब बच्चों के लिए जो बात कहना चाह रहा था, ये तो अपने लेवल की बात होगी, बच्चों के लिए कहना चाह रहा था सर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर में अपने छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा संभावना है। अभी आत्मनिर्भर भारत जो कोविड के बाद शुरू हुआ, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेस का आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों में 6000 यूनिट माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की लगनी है। उसमें 10 लाख रुपए का अनुदान है और उसका सारा कारोबार अपने हाथ में दिया गया है, अपनी यूनिवर्सिटी को दिया गया है। यानी अपने लोग मास्टर ट्रेनर हैं, अपने लोग उसके डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स हैं जो प्रोजेक्ट बनवाएंगे और जो प्रोजेक्ट पास करेंगे। तो अपने सारे केवीकेएस के लोग भी जुड़े हुए हैं, कॉलेज के भी टीचर्स और डीन साहब लोग हैं कि जो बच्चे, और बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, हमेशा जब भी अपने स्टूडेंट्स या कोई भी नया यूथ या कोई भी बिजनेस वाला एग्रीकल्चर की ओर अट्रैक्ट होता है तो उसने, मैं देखता हूं कि वो किसान को एक साफ टारगेट करके किसान को एक कस्टमर समझ के भागता है, पकड़ता है। जितने भी आप रेबी में आएंगे उनका टारगेट कौन है? कस्टमर, किसान। वो किसान को पकड़ना चाहते हैं, किसान को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो मेरे अपने एग्रीकल्चर के बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो प्राइम एग्रीकल्चर, कोर एग्रीकल्चर, मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ फूड्स पे भी वो लोग ध्यान दें, क्योंकि वहां उनको दूसरों से ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Tripathi ji, for sharing your valuable ideas. और एक और मैं डाटा देना चाहता हूँ हमारे यूथ को कि the processing of vegetables, fruits and cereals, it is only 2.5% in the country. And Government of India and APIDA and processing, the Ministry of Processing is thinking a lot to uplift this 2.5 into 10%. And that's the reason why these 6,000 units, microprocessing units are given. And I tell you, in future to come, there will be the scope of this particular industry. So please carefully see and think in this direction, how to process the raw materials available locally, process it, and value add it, market it, and export it. There are many companies, many entrepreneurs are there. We have seen in the recent there was a exhibition also. Many entrepreneurs, they have their own companies, and I think a lot of enormous possibilities did exist if you go for these things. Now, the person who is responsible for the technology transfer, I think again a lot of possibilities did exist. You have already heard Dr. R.K. Bajpayee, who is the Director Extension, and I think, in my opinion, I worked as Director Extension, and I think that a lot of work is being done by Department of Horticulture, Department of Fishery, Department of Veterinary, Department of Agriculture, University. But still, friends, I very strongly feel that do we really need to transfer the technology at the farmer's field? Are our technology is eco-friendly? Are our technology is farmer-friendly? I think a lot of research data which is available, technology which is available, it is generated by the technologists only to generate the technology. It is not for the people to adopt, because it has a lot of ifs and buts, and that is the reason why the technology is not adopted. So I would like to request Dr. R.K. Bajpayee to throw some light on these. University has developed a lot of technology, it is being transferred also. So what are his experience? If somebody wants to come and transfer your technology, say your varieties, you have developed number of varieties. If somebody wants to have their own biofortified variety, they want to market them, they want to process them, then what kind of
possibilities you see as direct extension, I would like to urge your opinion, your views in this regard. Dr. Bajpayee, please. थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसा अभी आपने सुना भी बाकी लोगों को, मेरी 2-3 चीजें ही बस मैं कहना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारा जो एग्रीकल्चर यूथ जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिटेन नहीं होता, उसमें जो मुझे लगता है वो है अनऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे जो किसान हैं वो काम कर रहा है। आप देखते हैं कि किसी इंडस्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका ऊपर से नीचे तक एक नेटवर्क होता है, माने उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है और उसके नीचे के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। सबका परसेंटेज ऑफ शेयर जो है बटा होता है और उनको ऑर्गेनाइज वे में वो फंक्शनिंग होती है, उनको पर्टिकुलर शेयर उनका ट्रांसमिट होता है। लेकिन हमारा किसान जो है वो इस तरह की चीजें नहीं कर पाता क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जो सबसे बड़ा जो अभी मैं इस मामले में ये कहूंगा कि हमारी जो सरकार जो काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की खास करके विशेष रूप से जो गौठान का कॉन्सेप्ट उन्होंने जो लाया है, जिसमें ये एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गौठान को एक प्लेस के रूप में कर रहे हैं और आगे चल के इनके मार्केटिंग नेटवर्क को भी स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये हो जाता है तो आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को, जैसे किसी कमोडिटी को प्रोसेसिंग करना है, वैल्यू एडिशन करना है, तो वो सारी फैसिलिटी जो है गौठान में उनको अवेलेबल हो जाएंगी और उसके बाद उनका मार्केटिंग नेटवर्क भी वो स्टैब्लिश करने जा रही है गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है इससे एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। जो दूसरी चीज जो आपने कहा टेक्नोलॉजीज की और इसकी बात, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी तो हमने बहुत जनरेट कर ली, लेकिन उसका ट्रांसमिशन जो है उस लेवल पे नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो कुछ इंटरप्रेन्योर्स जो हमारे इस बीच में हमारे पास आए थे और उनकी भी जो चाहत थी, हमारी यूनिवर्सिटीज की या हमारी जो वेराइटीज हैं, इनका सीड का मल्टीप्लिकेशन, इनके सीड की मार्केटिंग, इसके लिए हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हैं। और अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट भी आए थे लास्ट टाइम जो चाहते थे कि जो सीड सेक्टर में आ चुके हैं वो चाहते हैं कि हमको इसकी लाइसेंसिंग मिल जाए और वो चाह रहे हैं कि अब हम छत्तीसगढ़ की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारे रिकमेंडेड वेराइटीज हैं उनको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में वो ग्रो करके और उनकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब हमारे जो यूथ है जिनको जो मैंने सीड सेक्टर में काम करना शुरू कर चुके हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी। तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी हम यूनिवर्सिटी पे उनको, जैसा हमने एमओयू किया भी है, कुछ एक छोटी मोटी जो उनकी डिमांड थी, जो कुछ टेस्टिंग और इनकी, उसमें मैं चाहूंगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको जो फी वगैरह जो थी वो 50% रिड्यूस कर दी गई है। तो इस तरह के एमओयू में भी वो चाह रहे थे कि अगर कुछ उनको इनिशियल पीरियड में अगर कुछ छूट मिल जाती है तो वो आगे उस इंटरप्रेन्योर को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और एटलीस्ट उनका जो मोटो है कि मैं छत्तीसगढ़ की जो भी हमारी वेरायटी इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सभी क्रॉप्स की, उसको वो मल्टीप्लाई कर फिर मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो मैं ये 2 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट। और जो फार्मर्स के लिए जैसा हमने कहा कि जो नेटवर्क अगर हम स्टैब्लिश कर देते हैं तो जो आज जहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात जो डॉक्टर त्रिपाठी ने कही है कि इसके लिए भी सरकार ने करती दिया और हमारे ही रिसोर्स पर्सन है जो उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जैसा आपने देखा कल हम लोगों ने एक मछली का आउटलेट जो है इनाग्रेट किया, जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी थी उससे, तो एक एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश हुआ है। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि जब गौठान लेवल पे स्टार्ट हो जाएगा और जब हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम का जो फोकस प्रोग्राम होगा तो उसमें जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती हैं, तो मुझे लगता है आगे चल के वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का नेटवर्क स्टैब्लिश होगा। तो ये यूथ जो अगर बाहर जा रहा है वो जॉब सीकर नहीं होगा, जॉब प्रोवाइडर होगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू। वाजपेयी साहब, जिस तरह से बहुत ही अच्छी बात आपने रखी है कि हमारी आज की जो फार्मिंग है वो रियली अनऑर्गेनाइज है, and how to make agriculture organized. And then I think that the government of India is putting a lot of emphasis on formation or formulation of the farmers' interest group, farmers' self-help group, farmer producer company, and ultimately I think what you have said that we are going to address those things. Now, Dr. G. Pali, who is, I think he wanted to make his comment. Dr. Pali, please. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। जैसे आज सेकंड सेशन का जो टॉपिक है हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू रिटेन दी यूथ इन एग्रीकल्चर, तो मेरे कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड में आइडियाज हैं, उसके बेस पे अपन एग्रीकल्चर में यूथ को रिटेन कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस
फिक्स करे कि उससे जो प्रोड्यूस है उससे कम में कोई नहीं लेगा। यदि कोई मिडिल मैन या थर्ड एजेंसी यदि सपोर्ट प्राइस से नीचे यदि किसी प्रोड्यूस को लेती है तो उसको पनिशमेंट का प्रावधान रखे, कि जिससे क्या होगा कि उस वो जो एग्रीकल्चर में यूज जो जाएगा वो एश्योर रहेगा कि इससे कम में हमारा प्रोड्यूस नहीं बिकेगा। दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट के लिए कि जो अगर उनको अपनी इनकम बढ़ाना है तो IFS इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर यूज का। तीसरा जो पॉइंट की बात जो त्रिपाठी साहब कह रहे थे पानी का, तो मैं ये कहूंगा, मैंने भी काफी काम किया है पानी पे और मेरा जो छत्तीसगढ़ के बारे में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया काफी अनुभव है। तो छत्तीसगढ़ में मैं ये कहूंगा पानी का नहीं, छत्तीसगढ़ में पानी का नहीं प्रबंधन का काम है। पानी बहुत गिरता है, उसको मैनेजमेंट करना है और उसको डबल क्रॉप के लिए यूटिलाइज करना है, और जरूरत पड़ी तो फर्स्ट क्रॉप को सेव करें और सेकंड क्रॉप। तो मेरा ये है कि माइक्रो लेवल वाटर सोर्स डेवलपमेंट करें, इससे हमारा एग्रीकल्चर यूथ जो है मोटिवेट होगा और रिटेन होगा। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, यदि इसको हम कंसीडर करें तो डेफिनेटली ये यूथ को एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी इनकम होगी और रिटेन करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि नरसिंहपुर में आज की डेट में नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द बेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट है। तो सभी किसान लगाते हैं, जब किसान लगाते हैं तो शुगर कैन फैक्ट्री वाले उसका रेट गिरा देते हैं। अब कोई यूथ जाएगा उसमें पढ़ने के बाद तो वो कहता है मैं शुगर कैन करूंगा, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो स्प्रिंकलर काफी पॉपुलर है वहाँ। जब वो शुगर कैन इंडस्ट्री वाले अपने मोनोपोली चलाते हैं और रेट कम कर देते हैं, पहले 150 रुपए पर क्विंटल लेंगे, फिर 200, 250, जब कम हो जाएगा। तो ये चीज है, तो मतलब एक गवर्नमेंट फिक्स जी, तो उसका मेरा यह है गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस करे, उससे नीचे यदि कोई खरीदता है, यही मेरा सजेशन था। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। नहीं किसान के यहाँ यही है। नहीं खरीदेगा तो हाँ गवर्नमेंट खरीदे। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती, गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती, इसीलिए मुद्दा है, नहीं कर सकती। चलिए, अब मैं हमारे जो इंफॉर्मेशन सोल्यूशन ऑफिसर हैं मिस्टर संजय नैयर, ये बड़े साइंटिस्ट भी हैं और मीडिया मैनेजर हैं। तो मेरे ख्याल से मीडिया इस विषय में क्या सोचता है, मीडिया मैनेजर, मेरे ख्याल से इनकी बात सुनना बहुत लाजमी होगी इस उपलक्ष्य में। ये खुद भी युवक हैं और ये क्या सोचते हैं। ये तय कर रहे हैं इससे कम में नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अगर चीनी 25 रुपए किलो में चाइना से यहाँ आ जाएगी तो आप यहाँ 40 रुपए किलो और प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, तो यहाँ का मार्केट, यहाँ की तो चीनी डंप हो जाएगी वो, क्योंकि व्यापारी तो वही लेगा जो उसको सस्ता पड़ेगा वो। तो वो वाला जो है मोदी और किसान गवर्नमेंट पूरी की पूरी फसल MSP में खरीद सके, ये भी संभव है, क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की उसमें कॉस्ट है, ये भी संभव है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आज का जो टॉपिक है मोटिवेटिंग और रिटेनिंग का, और सीड प्रोडक्शन, जैसा कि हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन में बहुत अच्छा स्कोप है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर हमारा यूथ इसमें सीड प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाए तो बहुत अच्छा जो है इसमें स्कोप है, और इसको हम आगे बढ़ा करके जो है एक स्टार्टअप बना करके जो है आगे कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उसको हम एक चेन लिंक बना करके उसको आगे इसमें जो है अच्छा स्कोप पैदा करके जो है जॉब जो है एक प्रोवाइडर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी। अब मैं सभी को धन्यवाद देते हुए और इनवाइट करने जा रहा हूँ माननीय
कुलपति महोदय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को कि वे अभी तक हमारे दोनों सेशन में जो भी हमारी चर्चाएं हुई हैं थीम 1 में और थीम 2 में, उस दोनों विषय में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है रखने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर सिंह साहब। सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की वजह से चूंकि हमारे माननीय मंत्री महोदय जुड़े हुए थे, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डीडीजी एक्सटेंशन कुछ देर पहले हमसे जुड़े हुए थे, डॉक्टर ए के सिंह साहब, डॉक्टर आर एस कुलीन साहब भी थे, हमारे सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, dear colleagues, students, faculty, staff, alumni and friends. It's really a matter of honor and immense pleasure that destiny has given me the opportunity to lead this great university. Today, this is the 20th January 2022. This is the foundation day of Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya. We are here and with rejoice for the IGK fraternity as we celebrate this 36th foundation day of our beloved university. We are beholden to all those who contributed directly or indirectly in the establishment of this university on 20th January 1987. I pay sincere regards to all of our former vice chancellors, deans, directors, officers, faculty, non-teaching and supporting staff for toiling hard over the year to make IGKV an institution of esteem. Here we celebrate the Foundation Day to retrospect what we did in past 1 year and what are our present deeds and what will be our way forward for another 1 year. My colleagues have already highlighted the prominence of IGKV and its constituent colleges, the farm activities, the KVK's activities, the agriculture education, the extension activities, the research activities, which has played a major role in progress made in agriculture sector of this state. We are modifying our courses as per the National Education Policy 2020 guidelines and accordingly focusing on entrepreneurship skills and motivating our students to have their own startups, as we believe that students should be job provider, not the job seeker. We believe in the holistic development of students with capacity building. We would like to build up the capacity of our staff also so that he can meet the demand of present days as it's required in the coming years. I am confident that the IGK fraternity will produce excellent scientists, visionary leaders, competent researchers, and teachers in the field of agriculture and allied science, who will not only bring laurels to the university, but also make the nation proud and this particular state too. We have achieved a lot in the past, but the challenges of future leave no room of complaints. We wish to make the IGK an institution of excellence to meet with the future challenges for which we need your cooperation and support. As we know that in the second session, we are also making the seminar on motivating
अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। जैसा कि अभी बताया जो हमारे लोगों ने, सर्विसेज ने, डीन फैकल्टी ने, डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने, तो ये स्थापना दिवस में जो हमारा मोटिवेटिंग अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर की बात है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट भी काफी चिंतित है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हो। जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट की है। अभी जैसा हमारे ठाकुर साहब ने बताया कि जो है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में 2-3 दिन पहले ही जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मिशन बनाया है, एम्प्लॉयमेंट मिशन, जिसमें जो है हर पर ईयर जो 3 लाख यूथ को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने की उन्होंने बात कही है। और ये इसका जो है जो सपना है या इसकी जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य की पूर्ति सिर्फ जो है एक ही सेक्टर है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसी से ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। कृषि जगत में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि युवा खेती नहीं करना चाहते, न ही वो गाँव में रहना चाह रहे हैं। अगर वो गाँव में रहते भी हैं तो खेती को हाथ नहीं लगाना चाहते। ऐसे में किसानों की अगली पीढ़ी कैसे तैयार होगी, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। वास्तव में युवा खेती किसानी में रुचि नहीं दिखाएंगे तो हमें आगे किसान कहाँ से लाएंगे और देश की खेती विरासत को कैसे बचा पाएंगे, ये भी एक सोचनीय पहलू है। गर्व का विषय है कि हमारा देश ये युवाओं का देश है। यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट जो 2014 की है, उसके मुताबिक जो है हमारे 10 वर्ष से 24 वर्ष के जो हमारे आयु के जो युवा हैं वो करीब 36 करोड़ के आसपास है। 36 करोड़ यानी 135 करोड़ की जनसंख्या, हमारे 36 करोड़ करीब युवा है। तो इनमें से देश में लगभग 20 करोड़ युवा गाँव में रहते हैं। अगर इनकी सक्रिय और पेशेवर भागीदारी कृषि और समृद्ध क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में चमत्कार हो सकता है, ये तो निश्चित। लेकिन गांव में रहने वाले मुश्किल से 5% युवा ही खेती से जुड़े हुए, और वो भी मजबूरी में, उनको कहीं कोई बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, वही वहां पर रिटेन कर रहे हैं, अदरवाइज रिटेन हो ही नहीं। जो उसमें से जो है जो हमारे 36 करोड़ युवाओं में से 20 करोड़ रह रहे हैं, उसमें से 20 करोड़ का भी 5% मजबूरी में वो रह रहे हैं। देश में ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं और स्कूल के छात्र छात्राओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से हम लोगों ने अपने पहला भी चालू की थी विश्वविद्यालय आपके द्वारा। यानी उसमें हमारा उद्देश्य यही था कि जो है हम स्कूलों में जाके, गाँव में जो है जाके स्कूलों में छात्रों को प्रेरित करें, एग्रीकल्चर की ओर वो आकर्षित हों। हमारे वैज्ञानिक अपने जिले के ग्रामीण विद्यालयों में जाकर शिक्षा में रोजगार और नवाचार कैसे हो, इसका व्यापक अवसर विषयों पर बच्चों को और ग्रामीण युवाओं को शिक्षित प्रशिक्षित कर प्रेरित करें, ताकि खेती, किसानी और कृषि व्यवसाय में उनकी रुचि पैदा हो। इसके अलावा हमने विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि वैज्ञानिक और किसान व्हाट्सएप ग्रुप की बात की है। वैसे तो हमारे यहाँ किसान हाट के माध्यम से या हमारे और जो दूसरे ऐप हैं, बहुत सारे ऐप हमारे विश्वविद्यालय ने बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से लाखों किसान जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हमने विश्वविद्यालय ने ये सोचा कि क्या हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक या हमारे केवीके के जो है जो SMS हैं, क्या सीधे तौर पर वो हमारे किसानों से जुड़ सकते हैं? क्या एक कोई ऐप बना के उनको कोई ई चौपाल टाइप का कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है क्या? इस हेतु जो है हमने ये आशा की है कि हमारे जो सभी जितने भी महाविद्यालय हैं या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उसमें एक ऐप बना के, ऐप के माध्यम से जो हर कृषि विज्ञान केंद्र या महाविद्यालय करीब 20 गाँव से जो है करीब 10-15 किसान लेगा, तो करीब हमारे करीब ऐसे 10 से 12 हजार किसानों से हमारा सीधा संपर्क हो जाएगा। और ये जो सीधा संपर्क होगा, इसमें से जो हम शनिवार के दिन या एक दिन कोई फिक्स कर सकते हैं जिसमें उनकी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का उनका निदान करें। इन्हीं सीधे साइंटिस्ट और जो कृषकों का है वो जो है हमारा जो टेक्नोलॉजी का है वो आदान प्रदान हो। आप जानते हैं कि देश में लगभग 54% आबादी जो है जिनका जीविकोपार्जन जो है, जीविका का साधन जो है, लाइवलीहुड है, वो उनका जो है कृषि से ही है, खेती से ही है। जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का क्षेत्र का योगदान मात्र 17% है, 17%। इसके अतिरिक्त जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। घटती कृषि योग्य भूमि, पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन, खेती में बढ़ती लागत जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जिससे कि किसानों की आय तो कम होती जा रही है, लेकिन उसमें लागत जो है वो बढ़ती चली जा रही है।
तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम लागत को कैसे कम करें और किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं। 2022 तक जैसे भी सभी हमारे वक्ताओं ने और सभी ने बात की कि 2022 तक जो किसानों की आय को दुगना करना है। इसके अलावा अभी बात यही हो रही थी 10,000 की 10,000 जो हमारे जो आर्या के माध्यम से जो प्रत्येक जो है उनका अभी डीडीजी साहब भी कह रहे थे, हमारे त्रिपाठी जी का भी कहना था कि 10,000 रुपए की इनकम तो है उनकी, लेकिन 10,000 रुपए में उसमें 45% तो जो है योगदान उनका मजदूरी का है, मात्र जो है जो कृषि से जो खेती से जो है वो बहुत कम उसका हिस्सा है। तो हम इसमें कैसे जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे हम बढ़ सकते हैं और कैसे उनकी आय में वृद्धि कर सकते हैं। और ये मतलब ये एक सुख की अनुभूति देने वाली बात है कि हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जितने भी जहाँ भी महाविद्यालय हैं उनका ये प्रयास है कि जो है उनकी एक्टिविटीज आप देखेंगे कि तो हर किसान हर किसान कृषि विज्ञान केंद्र की एक्टिविटी की अलग 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 खूबी है। उन्होंने अपने हर जिले के लिए जो अलग मॉडल बना रखा है, चाहे वो IFS मॉडल की बात करें हम, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करें हम दंतेवाड़ा की बात करें, हम सुकमा की बात करें, हम जो है जसपुर की बात करें, हम सीतापुर की बात करें, उन्होंने अपने अलग अलग जो है ऐसे मॉडल बना रखे हैं कि जिसमें जो है वेजिटेबल का प्रोडक्शन वेजिटेबल का भी हो रहा है, हमने जो है वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम जो है मिलेट प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम इमली की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम जो है काजू की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। यानी हमने उसको एंटरप्रेन्योरशिप को यदि एक से अगर घाटा होगा तो दूसरे से उसको कुछ ना कुछ मिल जाए, तो यानी आमदनी का साधन ऐसा मल्टीफेरस हो कि उसको अगर एक से नुकसान हो रहा है तो दूसरे से उसकी भरपाई हो जाए। तो हमारे लोगों ने ये ऐसा जो मॉडल बना के रखा हुआ है, ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि उससे जो है अगर हम और द्रुत गति से लग जाएं तो जो हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि अभी जैसा अभी ठाकुर साहब ने बताया था कि बीच में शुक्ला जी का मेरे पास फोन आया था कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कृषि में या कृषि के माध्यम से जो है लोगों में यानी छत्तीसगढ़ के लोगों में को रोजगार देने में ये कृषि विश्वविद्यालय एक अहम भूमिका निभा सकता है। और ये अहम भूमिका निभा सकता है उसी रूप में कि जब हम जॉब सीकर यानी जॉब प्रोवाइडर जॉब सीकर की बात करें, यानी जॉब सीकर तो तभी जॉब प्रोवाइडर हम तब बनेंगे जब हम खुद का जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे मॉडल हैं, इनक्यूबेशन सेंटर्स की भी हमने बात की, त्रिपाठी जी ने बताया 10-10 लाख रुपए जो है उनको जो देके और उनको हम स्टार्टअप देने की बात कही। अभी हमारे कुछ छात्रों ने बोला कि जो स्टार्टअप के माध्यम से या जो रफ्तार है उसके माध्यम से हमारे BSc के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, बिल्कुल उनका ठीक कहना है। अब आप देखेंगे जैसा जी त्रिपाठी जी हमारे बता रहे थे या ये नक्शा बता रहे थे हमारे पांडे जी कि जो है जो हमारे इंजीनियरिंग के लोग हैं वो आजकल जो है वहां पर खेती की तरफ जा रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि हमारे जो बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी चंद्राकर मैडम जो है सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट सी इज ए गुड एग्रीकल्चरिस्ट। वो जो है सब पूरा एक्सपोर्ट कर रही है, खेती कर रही है अपनी और एक्सपोर्ट कर रही है, बट सी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऐसे बहुत सारे IITians हैं जो अपना खुद का धंधा है, खुद का जो बिजनेस वो छोड़ के और वो जो इसमें जो है कृषि के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बहुत मतलब एक नहीं बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले हैं या जितने बड़े बड़े जो हमारे जो है जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो उनमें से आप पाएंगे कि वो सभी IITians या इंजीनियर्स है, उन्हीं में से हमारे लोग बहुत कम है, एग्रीकल्चर के लोग बहुत कम है। तो हम क्या अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट में और जो हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनमें ऐसी हम आभा या उसमें ऐसी प्रतिभा का हम उनमें बीज नहीं बो सकते हैं कि वो हमारे अच्छे एक्सपोर्टर बने। तो आप देखेंगे अगर निकालेंगे आप एसेस करेंगे तो ये मैक्सिमम जो है आपको पाएंगे कि आप IITians या एग्रीकल्चर या जो इंजीनियर्स या सब जो दूसरे फील्ड के लोग हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के लोग बहुत कम, आप उसमें काउंट करेंगे तो। आजादी के समय में जैसा बताया था कि जो है कि 50 करोड़ उसमें 50 मिलियन टन हमारे कुरील साहब बोले थे 50 मिलियन टन उसमें पैदा होता था। आज हम जो है 300-2500 मिलियन टन यानी 50 उसमें 50 करोड़ जनसंख्या थी, हमारा 50 उसका था 50 करोड़ जनसंख्या थी और 50 मिलियन टन हमारा उत्पादन था। आज हमारी 350 करोड़ जनसंख्या है, 325 करोड़ 325 मिलियन टन हमारी जो है उत्पादकता भी है। आप देखें उसको कोलेट करें अगर जनसंख्या से तो वैसे उसी अनुपात नहीं है। अब सवाल ये था कि उसमें जो है उसमें भुखमरी थी जिसमें जो है गेहूं का समय आया जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद में अब हम ये हुए कि हम जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। तो प्रगति में हमारी कोई कमी नहीं है चाहे हमारे किसान, लेकिन अब दिक्कत जो आ रही है वो ये कि हम कैसे हाउ टू रिटेन दी यूथ इन एग्रीकल्चर, दिस इज द बिग क्वेश्चन। जब अगर रिटेन नहीं होगा तो हो सकता है कि नेगेटिव नीचे की तरफ हो सकता है कि जाना पड़े। कई गुना जनसंख्या बढ़ने के बाद उत्पादन बढ़ाकर हम जनता का पेट भरने में सक्षम हैं। कई गुना जनसंख्या यानी आप देखेंगे तो कि ये प्राइमरी एग्रीकल्चर का हिस्सा। अब जरूरत है कि प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विधिकरण यानी हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो उसकी तरफ हमको जाने की जरूरत है। अभी हमारे जो उसमें तो जो हम सरप्लस है, लेकिन वहीं आप पल्सिस की बात करें या ऑलसीड की बात करें तो हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है।
तो हम क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाके गवर्नमेंट ने ऐसी योजनाएं भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई हुई है कि 10,000 रुपए यदि कोई क्रॉप डाइवर्सिफाई करता है तो उसको उसके आदान को यानी उसकी इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए 10,000 रुपए पर एकड़ दे रहे हैं, 10,000 रुपीज पर एकड़। ऐसी सुविधाएं पहले कभी नहीं थी। तो ये हमको इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। यानी यदि हम जो है अपना, ठीक है हम सेल्फ सफिशिएंट तो है, लेकिन कुछ चीजों में हमको इम्पोर्ट भी करना पड़ रहा है। हमने ब्लू यानी ग्रीन रेवोल्यूशन पा लिया, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन भी हो गया सब, लेकिन उसके बाद भी हमको जो है बहुत कुछ करने की आवश्यकताएं हैं। यानी सबसे बड़ा जो है प्रोसेसिंग की बात की थी अभी, जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2.5% ही हमारा जो प्रोसेसिंग का हुआ है, जबकि हमारा टारगेट जो 10% होना चाहिए। तो सबसे अधिक स्कोप है वो प्रोसेसिंग का है मेजर रोल। इसीलिए जो फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज एक की जगह दो किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे लगता है कि आगे चल के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को भी प्रोसेसिंग की तरफ ही जो है ज्यादा मेजर इंफोसिस देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग का आगे आने वाले समय में प्रोसेसिंग का ही रोल है। ये 5 रुपए जो 1 रुपए किलो का आलू जो है वो 20 रुपए का जो है वो जो उसका जो चिप्स मिलता है वो कितने का मिलता है। तो ये वाली बात है। तो वही यानी लाभदायक फसलों की खेती, फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग आदि गांव में ही प्रोसेसिंग हो। यानी हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग की। यानी जो अभी बात कर रहे थे ना कि जो है हमारे पाली जी बोल रहे थे, डॉक्टर साहब बोले थे, एमएसपी की बात कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए। अब भाई ये टीवी खरीदने के लिए ये तो ऐसा है एसेंशियल कमोडिटी है, इसके बिना जो है आदमी जो है जीवित नहीं रह सकता है। तो हम क्या ऐसा वैल्यू ऐसा चेन जो है चेन लिंक नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अभी प्रयास भी हो रहा है। अभी एक बताना फसल बाजार ये हमारा ऐप बना हुआ है। तो क्या हमारे यूथ अभी जो हम ठेकेदार में थे, तो मैं जो अपने खुद के लिए गांव में जाके और जो गेहूं में खरीद रहा था वो जो है किसानों का 800 से 900 रुपए क्विंटल में, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और यही जो है हम आप त्रिपाठी जी जाएंगे यहाँ पर जो है तेलीबांधा में, और जो है 30 रुपए किलो में खरीद के लाएंगे, और वो 800 रुपए में वो खरीद रहा है, और वही 800 रुपए में वो जो है वो करके, और फिर वो कितने में वहीं के वहीं ठेकेदार में वो जिसको तुरंत 1200-1300 में दे रहा है, और 1200-1300 से वो करके तुरंत यहाँ पर जो दूसरी बड़ी सिटी में आके वो जो है 1700-1800 में हो रहा है, और फिर वो तेलीबांधा में आके वो 30 रुपए किलो हो जा रहा है। तो कुल मिला के यही है कि गांव में प्रोसेसिंग हो, गांव में ही पैकेजिंग हो, वहीं पर सीधे मार्केट और उपभोक्ता तक कृषि उत्पाद पहुंचे। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमारे जो जितने भी गांव में रिटेन करने की तभी वहाँ रिटेन होंगे। यानी जो हमारे प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे ना 100 और 300, आप बता रहे थे कि मिल, आप पहले बता रहे थे, एक लड़की जो बोल रही थी ना बड़ा अच्छा बोल रही थी, पहले जो है घर में जो है गाँव में चक्कियां बात बहुत थी, चूल्हे में जो है हमारे 4 बजे हमारी मदर वगैरह जो 4 बजे उठती थी वो पिसाई करती थी, इसके नहीं वही खुद भी आटा जो वही बनता था, दाल जो धरतिया बोलते थे दाल वही घर पे ही बनाते थे। ये दूसरा जितना जो भी प्रोसेसिंग का काम था सब पूरा का पूरा वही होता था। तेल जो है तेल निकालने का काम वही गांव में जो है वही तेल निकलता है एक्सपेलर के माध्यम से, आज उसी पर लौट के वापस पूरा वहीं आ रहे हैं। अब देखिए ना आप, ये तो जो बाबा जी जो है क्या क्या नहीं कर रहे हैं अपने, रामदेव बाबा है, वो साबुन बनाने से लेके और जो आटा से लेके और जो है कच्ची घानी के तेल से लेके क्या क्या नहीं हो रहा है, और करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो बात पूछी कि कृषि क्षेत्र एक बहुत बड़ी समस्या है, कृषि का क्षेत्र जो है बहुत बड़ी समस्या भी है और इसका वो भी है। एक तरफ जो उत्पादन जो हो रहा है उसमें कृषि का उत्पाद का दाम कम मिल रहा है, जो आप एमएसपी की बात करें तो दाम हमको कम मिल रहा है, और लेकिन उपभोक्ता अधिक पैसा दे रहा है, यानी दोनों में वो है। यानी हमको किसान को मिल नहीं रहा है 5 रुपए किलो में, अभी टमाटर अब 10 रुपए किलो आ गया, कुछ दिन बाद 5 रुपए किलो आ जाएगा, ठीक है ना। ये लेकिन हम जब लेंगे किसान के पास जाएंगे तो उसके पास जो पैकिंग का जो कॉस्ट है वो भी नहीं निकल पा रही है तोड़ने की, लेकिन वो उसको जो ऐसे चला दे रहा है। लेकिन एक समय होगा जो केचप बना के वो करके, और कितना मतलब क्या नहीं किया जा सकता अगर सरप्लस है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। तो यदि ये समस्या जो एमएसपी की बात तभी खत्म, एमएसपी तभी होगा कि हमारा जो वहीं का यूथ वहीं को ही लेने लगेगा, वहीं पैकेजिंग करेगा वहीं गांव के गांव में, और फिर उसको आगे निकालेगा, तो एमएसपी से ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। और आप देखेंगे कि जहां पर जो है एमएसपी से ज्यादा, ये एमएसपी तो कुछ का है, लेकिन आप वहीं आप सरसों लेने जाएंगे तो एमएसपी से ज्यादा में आपको मिलेगा प्राइस उसकी, जो एमएसपी से ज्यादा, कुछ क्रॉप्स की एमएसपी से ज्यादा क्रॉप प्राइस क्यों रहती है। आप अगर एसेस करें तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनकी की कीमत जो है आप मार्केट में मंडी में भी जाएंगे तो एमएसपी से अधिक रहती है। तो हमको उसी उसमें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। हमको ये भी एक इकोनॉमिक्स भी निकालने की जरूरत है कि हमारे यहाँ किस चीज की जरूरत है, कितने एरिया में क्या हो। अब सरप्लस हो जाएगा सब तो रेट उसके डाउन हो ही जाना है। यानी हमको अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में जो, यानी जैसा डॉक्टर साहब ने हमारे बात की सामने कि हम ऑर्गेनाइज नहीं है, हमको एक गांव में ऑर्गेनाइज, एक गांव से हमको चालू करना पड़ेगा कि उस गांव में हमारे इतना एरिया है, उस गांव की रिक्वायरमेंट ये है, उस गांव में जो इतना तेल लगता है, इतना उसमें दाल लगती है, इसमें उतना आटा इतना लगता है, उसमें इतना चावल लगता है, ब्लॉक में उसका इतना लेवल है और जिले में उसका इतना है। तो उस जिले की हम क्या, उस जिले की पूर्ति के लिए हमको कैसे करना है, किस किस चीज कौन कौन सी क्रॉप हमको लगाना है। हम अगर इस पर विचार कर लें कि हमको हमारे जिले की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे जिले की रिक्वायरमेंट जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट
यानी हमारा हमको जो है उस डिस्ट्रिक्ट में कितना तेल लगेगा, उस तेल के लिए हमको कितना ऑयल, कितना एरिया में हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन होना चाहिए, पल्सेस में हमको उस जिले में कितनी पल्सेस की आवश्यकता है, कितना पल्स की रिक्वायरमेंट हमारी, तो उसके लिए उतना पल्स का एरिया हमारा उतना होना चाहिए। मूंग की क्रॉप की, मूंग का हमको इसमें मूंग की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, क्या हम उस मूंग को जो है उस मूंग को उतने एरिया को हम चिन्हित कर सकते हैं क्या? तो हमको ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि उस जिले की जो रिक्वायरमेंट हमको देखना होगी कि हमारे इस जिले की रिक्वायरमेंट इतनी है, हमारे इस जिले के पास जाएंगे तो फिर अपने डिवीजन की बात करेंगे, उस डिवीजन में हमारे इसकी तो ये इसकी वृहद एनालिसिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। एमएसपी हमको तभी मिलेगी, या एमएसपी से अधिक तभी मिलेगी अगर हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो अपने आप ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा, मतलब उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो हमको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है, जिस समय हमारा सरप्लस हो रहा है तो उसके लिए प्रोसेसिंग की बात हो रही है, हम उसको प्रोसेसिंग के लिए सभी चीजों की अब कर ही रहे हैं, चाहे मिलेट की बात करें हम, चाहे वो जो है अपने कैश्यू की बात करें, चाहे हम अपनी जो है दूसरी पल्सेस की बात करें, हम ऑयल पल्सेस की बात करें। अभी पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि पल्स के जो है मिल, छोटी छोटी मिल लगाई जाए। गांव की जो बात हो रही नहीं, गांव में मिल रहे हैं आटा की मिल, आटा के ये इसके स्पाइसेस के। अब स्पाइसेस में आपने देखा होगा नागपुर में वो कौन है, वो जो पल्स वाले दादाजी मूछ वाले आते हैं, वो पूरा है एमडीएच। अब एमडीएच का अब देखिए, इसमें जो एमडीएच का देखेंगे जो जगदल, सॉरी आपने सर, हाँ नहीं वो तो खत्म हो, सरगुजा में जो अग्रवाल जी हैं, आप जाइए उनके यहाँ घर में, उन्होंने नीचे जो बना के रखा हुआ है, और उसमें धनिया मिर्ची हल्दी सब पूरा करते हैं, खुद पैकेजिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ का यूथ हो उसमें, अब आगे हमारे जो केवीके इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके, क्योंकि ये तो इसकी रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी, जनसंख्या जैसे बढ़ती जाएगी तो पल्सेस की भी रिक्वायरमेंट है, ऑयल सीड की भी रिक्वायरमेंट है, आटे की भी है जरूरत है, दाल की भी जरूरत है, सरप्लस जो हो रहा है, तो हमको विस्तृत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जब करेंगे तभी हमको जो है और उसके माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें हमारे यूथ को अब अभी जो है ऐसा लगता है कि शर्म आती है हमारे बच्चों की, हम ये काम करेंगे क्या, तो इस झिझक को भी दूर करने की आवश्यकता है। एक झिझक है मन में, जो हमारे जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जाके फिर ये करेगा क्या, तो उसको जो हाई क्वालिटी वाली, जैसे जो आप बात करते हैं कि जो उसमें अब 2 एकड़ या 3 एकड़ वाले हाईटेक की बात करते हो, हाईटेक में तो उनका वो रहेगा कि वो कुछ करेंगे, लेकिन स्पाइस की और उसकी बात करें तो उनको जो है एक इंक्यूबेशन सेंटर देके, और फिर उनको जब जहाँ प्रॉफिट लगने लगेगा कि उनको आमदनी का साधन अगर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें मोटिवेट होगा। यानी हमको उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। यानी हमको हर जिले में अभी जो है गवर्नमेंट की जो 1700 करोड़ की योजना हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से है, उसमें जो है हमको 17 करोड़ रुपए 10% हमारा हुआ है, उसमें मेजर रोल हम लोगों का है। मतलब हम जब करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, तो करीब 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके तहत आए हुए हैं, चिराग के माध्यम से, चिराग में आने वाले, तो चिराग में भी ये इम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ही, यानी उसमें ही हमको किसानों की आय कैसे बढ़े, और किसानों की आय तब बढ़ेगी जब बिचौलिए कम होंगी। तो वही बात हो गई कि जो है दोनों में यानी जो ना किसान को मिल रहा है कुछ, और किसान को भी फायदा नहीं है, और जो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उसको भी फायदा नहीं, बीच वाला जो है कितना ज्यादा एसी में बैठ के जो मजे कर रहा है वो। तो उसमें जो है क्या, अब ये जैसा स्टूडेंट ने बताया कि फसल बाजार, ये आपका जो है ऐप, उसके माध्यम से ये हमारे जो कोरिया ने जो ऐप बनाया हुआ है, उसके बनाया हुआ है, कंपनी बनाई हुई है, और उसमें उन्होंने एक ऐप के माध्यम से उससे भी जुड़े लिंक किए हुए हैं, क्या नाम, उस अमेजन से जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे ऐप बना के शहरों में, उनके छोटे छोटे शहरों में, हम जो वहाँ के क्या कोरिया, जैसे कोरिया का है, कोरिया जिले का हुआ, कोरिया जिले की हम रिक्वायरमेंट देख लें, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, तो हम क्या ब्रेक कर सकते हैं कि उनको ऑर्गेनिक के माध्यम से, ये तो आप अपने अपनी चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप घर घर जाके, और उसमें ऐप के माध्यम से, आजकल लोग आप टीवी खूब देखते हैं, ऐप में भी खूब जो है सोशल का काफी अच्छा हो, तो इसके माध्यम से हम जो है हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप बना के बहुत कुछ काम उनके माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी का जो फायदा उठाते हुए हमारे कृषक कई स्नातक युवा 200 से 250 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप समूह बना के 50 किसान को जोड़ लें, 50 किसान से वो उनका जो कर लें, 50 किसानों से उनका जो हो जाए। जैसे अब उदाहरण के तौर पर हमारे जो है वो जो सीड प्रोडक्शन जो कर रहे हैं अपने, अरे वो अपने जो सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं ना बीज का, चावला जी नारायण भाई चावला, पहले उन्होंने हमारा फार्म लिया, फार्म से उन्होंने पहले वेजिटेबल प्रोडक्शन से उससे बात की, वो सीड प्रोडक्शन उन्होंने बाद में किया है, पहले उन्होंने उससे बात की, उन्होंने देखा कि पूरा कहाँ उनको देखते थे रेट कहाँ उनको ज्यादा मिल रहा है, वहां से वहां वो भेजते थे। तो ऐसे जो आप यूथ, ये तो जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो ये तो उनको आजकल तो सब सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, तो वो उसके माध्यम से बाद में उन्होंने जो किसान, इनके साथ किसान जो अकेले वो नहीं, उनका फार्म तो कितना है 250 एकड़ 300 एकड़ 400 एकड़, इससे ज्यादा बड़ा तो है नहीं,
लेकिन वो जो है करीब उनके साथ जो है जगदलपुर के करीब 2,500-3,000 किसान जुड़े हुए हैं, उनका एक पूरा जो है सोसाइटी बनी हुई है। उनसे वो जो है कॉन्टेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट करने के बाद में उनको देते हैं आपको ये उगाना हम इस रेट में लेंगे। तो ऐसे हमारे जो है छात्र उनको ये करके, तो क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे ग्रुप जैसा जो बताया कि जो है 50 जो है जो हमारे जो एक 8-10 ये ग्रुप इनका बच्चों का, उनको ऐसा ट्रेन करें, वो 50-60 किसानों से 100 किसानों से कॉन्टेक्ट करें, एफपीओ बनाए, एफपीओ बना के जो है उनके फिर उसके बाद वो उपभोक्ता, यानी उनको लिंक करना, एक चेन लिंक की आवश्यकता है कि फिर वो उपभोक्ता से जो वहाँ घर घर जाके जैसे बोलते हैं ना, आप आपके देखिए कि बीच बीच में जो हमारे जो डेयरी टेक्नोलॉजी के लोग जो उनका प्रोडक्ट बनता है ना, तो ये क्या बोलते हैं, ये मार्केट में उनको क्या बोला जाता है जो आते हैं बीच में, सेल्समैन जाते हैं, तो जगह जगह जाके भाई हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट है, ये है, इसकी ये क्वालिटी है, ये ऑर्गेनिक है, ये सब करके इसमें बढ़िया आप बताइए हमको, वो ये दीजिए, यानी आप हमको अगर रिक्वायरमेंट दे देंगे अपनी, तो हम आपको घर पहुंच सेवा देंगे और ये हमारा रेट रहेगा और मार्केट से हम आपको इतना सस्ता देंगे, 10% रिबेट, 15% रिबेट, हम आपको घर पहुंच सेवा देंगे। तो आप देखेंगे वैसे उनका ग्रुप बन जाएगा, यानी जाके उनसे कॉन्टेक्ट करें, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या हम क्वालिटी में एक बार आप लीजिए, एक बार नहीं, उनको जो है बिजनेस तक को सिखाने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब ये जो अपन जो बता रहे हैं ना, तो बिजनेस हमको जो है इसमें मतलब कि बनियागिरी वाली बात है ना, तो ये तो उसी में ही बिजनेस में जो उसी में जाना पड़ेगा। आप देखिए कि जो बिजनेस का जो देखिए हमारा जो है मास्टर कार्ड का मास्टर बनना चाहेगा, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पहले एक ही ना, और लेकिन बिजनेस वाला जो है, बिजनेस वाला आदमी जो है बिजनेस जो कर रहा है, वो अपने बच्चे को या तो आईएएस में, आईएफएस में, डॉक्टर में जो बढ़िया अच्छा होगा वहीं पर भेजेगा, अदरवाइज बोलेगा तो इतना तो मेरी दुकान में बैठ के कमा सकता है, क्यों जाएगा, नहीं आने देगा, तो उसका बिजनेस है वही। तो अब जो है आगे चल के हमको उसको ऐसे बिजनेस टेक्स्ट को जो है बताने की जरूरत है। हमको जो है यहाँ पर जो है जो एंटरप्रेन्योरशिप की रफ्तार ये बनी हुई है ना, तो सिर्फ हमको पढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, हमको उनको जो उनके अंदर की झिझक, या जो कोई काम छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, ना कोई काम छोटा है ना कोई काम बड़ा है, जो काम है वो काम है। इस देश अगर करेगा तो उसमें तो जो है मतलब वो एक साल में लाखों रुपए कमा सकता है। आप देखो तो इनको जो दुकान देखो 1 से 2 से 4, मोदी को देखिए आप, भीड़ लगी रहती, लाइन लगी रहती है उसके यहाँ, क्या उसमें क्वालिटी है, तो उसकी क्वालिटी देख के फिर वो हम अपने बच्चों में नहीं डाल सकते हैं क्या, तो उस टाइप से हमको करना होगा, तभी एमएसपी की बात करेंगे। एमएसपी से अधिक में आपका जो खरीदा जा सकता है। जो तुम्हारी जो 2/3 जो है किसान जो बात करते हैं, जो सभी लोग बोल रहे हैं कि पहले हमारे जो है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का दिया, उसके बाद अटल जी ने हमारे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का दिया, और अब इस समय जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय किसान, नहीं जय अनुसंधान, तो ये इसमें मतलब ये तीसरा वो है। तो हमको ये इसको ध्यान में रखते हुए अब देखेंगे अनुसंधान की इसकी क्या जरूरत, अभी बताया ना एक लड़के ने बिलासपुर वाले ने कि वो जो है यानी जोत हमारी 2/3 जो जोत है वो 5 हेक्टेयर से कम की है पूरे भारतवर्ष की। छत्तीसगढ़ की देखें तो 5 हेक्टेयर से कम, 5 एकड़ से कम वाले मेजोरिटी 2/3 किसान हमारे वही 75% वही है, कम जोत वाली है, क्यों डॉक्टर साहब 85%, दाऊ लोग तो बहुत कम है, चंद्रका साहब जैसे लोग। तो उसका कहना है अब उसके लिए जो तभी उसका जो है 2 एकड़ 2.5 एकड़ में अब कहेगा कि कैसे जो आमदनी कैसे अपने जो घर में गाँव में रिटेन होगा 2.5-3 एकड़ में, तो 2.5-3 एकड़ में रिटेन करने के लिए हमको अपने मॉड्यूल देना पड़ेंगे, उसको फिशरीज भी करना पड़ेगी, उसको पोल्ट्री प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, उसको सीड प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, उसको वेजिटेबल प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। लेकिन हमको उसको ऐसा मॉडल देना, अभी उसने एग्जाम्पल भी बताया कि जो है एक किसान जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 2 से 3 एकड़ में वो 1 करोड़ रुपए की बात कर रहा था, 1 करोड़ नहीं होगा तो कम से कम 10 लाख रुपए कमा सकता है, वो घर में रहेगा। अब आप उसको दूसरे ढंग से एंगल से समझाइए उसको, एंगल कैसा कि यदि हम जो है मैं यहाँ पर जो है आया था सन जो है 1988 में, 1987 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन किया, उसके बाद में मैं 4.5 साल में 5 उसमें जो है एसोसिएट प्रोफेसर भी हो गया, उसके बाद में 19 जो है उसमें 2000 में मैं प्रोफेसर भी बन गया, 2.5 लाख हमारी तनख्वाह हो गई। अब अभी आप हमारी सेविंग देख लो या आप अपनी सेविंग देखें तो कितनी सेविंग है आज, है कुछ सेविंग है। मकान जो है मकान भी बना लिया हुआ है तो लोन से लिया हुआ है, अगर कोई हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं उसमें सिर्फ जो है पेट, ये नौकरी जो है ना बोलते हैं ना, ये जो पेट भरने वाला है ये, तो ये लेकिन वही जो बिजनेस करेगा, बिजनेस का देखिए आप दिन दूनी रात चौगनी कितने कहाँ से कहाँ फ्रेश होकर चले जा रहे हैं, तो हमको ये भी उसको बताना पड़ेगा। आप नौकरी की तरफ जा रहे हैं वहीं आप बिजनेस करेंगे तो आपको लेकिन उसको जो है ढंग से हमको गाइड करने की जरूरत है। यानी ये कहाँ से होगा, जो हमारा जो बीच का है, यानी उपभोक्ता किसान और जो उपभोक्ता है जो कंज्यूमर है, उसके बीच में जो बीच में है, उसमें जो उस कड़ी को हमको तोड़ने की आवश्यकता है। जब उस कड़ी को तोड़ेंगे तो किसान को भी फायदा होगा, डायरेक्ट होगा, और किसान को फायदा होगा तो उसके बाद में बीच में हमको भी मिल रहा है और उसमें उसको मतलब उसकी ठीक है, उसका चलेगा ही चलेगा, लेकिन हमको इसको जो है कहीं ना कहीं करके ब्रेक करवाने की आवश्यकता है अपने यूथ के माध्यम से, तभी वो यूथ जो है गांव में रिटेन हो सकता है।
जो उसको वो गांव में रह के गांव में उसको उस गांव में उसको बताना पड़ेगा आपके गांव में किस किस चीज की पैदावार होती है, उसके बारे में उसको एनालिसिस करना होगा। ये होते हैं ना FPR है, वो करेगा। करने के बाद में फिर उसको अब किसकी पैकेजिंग करे और आसपास उसका मार्केट कहाँ है, उसको ये भी देख, सबसे पहले मार्केट उसको देखना होगा। तो इस ढंग से बात करेंगे तब कहीं कुछ होने की करने की आवश्यकता है। जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती तो कितनी हो सकती है, जैविक खेती से तो बनने वाला नहीं, लेकिन फिर भी जैविक खेती में आप जो बोलेंगे कि इसमें भी कहीं कोई वो नहीं है, पढ़े लिखे की बात नहीं है। जैविक खेती का जो अभी शायद कुछ पाठ्यक्रम जो है सिलेबस तैयार किया जा रहा है, और उसमें हमारे अनुपम मिश्रा जी उसके जो चेयरमैन है, जो उसके इम्फाल यूनिवर्सिटी में, हाँ वो ही इज द चेयरमैन। और उसमें एक मेंबर कौन है, राजस्थान का एक पाटीदार करके जो है, आप हंस रहे हैं कैसे, पेपर में है ना, तो वो जो है एक पाटीदार जो 10वीं पढ़ा हुआ है, वो इज द मेंबर ऑफ दैट कमेटी, कि जो है जैविक खेती के लिए कोर्स बना रहा है। तो ये तो स्किल डेवलपमेंट वाली बात है, BSc जी करा रहे हैं वो सब। तो वो कहावत है ना कि अगर ज्यादा पढ़े तो घर से गए और कम पढ़े तो ज्यादा पढ़े तो घर से गए, कम पढ़े तो हर से गए, वैसे है ना, वही ना। इसलिए 10वीं और 12वीं की बात है, BSc जी करने के बाद में उसको ये लगता है कि हम क्यों जो है, हम तो नौकरी करने के उद्देश्य, तो नौकरी से आप बोले नौकरी से तो उतना ही है, पेट भर पाएंगे आप प्राइवेट वाले देखिए कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, 10 साल 12,000 आप अभी अपनी इन्हीं की बात करें, जो अपने जो कॉलेजेस हैं उनमें कितना पैसा देते हैं, मुश्किल से जो है वो दे रहे हैं। तो वही अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से इसको ब्रेक करेंगे, उनको बताएंगे, तो ऑटोमेटिक अपना जो यूथ अट्रैक्ट होगा। तो हमको इस लाइन पर बृहद स्केल पर केवीके के माध्यम से, महाविद्यालयों के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है। हर समय कुछ खेती में कुछ ना कुछ नवाचार करते रहें, ऐसा कुछ करने की निरंतर आवश्यकता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कहा गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो हमको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब यही हुआ है। अब मोदी जी तो हमेशा कह रहे, बार बार कह रहे हो कि आप जो है सभी जो किसान जो अकेले किसान सिर्फ एग्रीकल्चर की भरोसे नहीं है, किसान के पास जाएंगे तो उसको आपको एग्रीकल्चर भी बताना है, उसको हॉर्टिकल्चर भी बताना है, उसको वेटनरी भी बताना है, उसको जो है फिशरीज भी बताना है। तो ये हमारा जो वैज्ञानिक, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, हमारा जो है या महाविद्यालय जो है एक साइंटिस्ट जो एक्सटेंशन वर्कर है, वो एक्सटेंशन वर्कर इसमें सक्षम होना चाहिए कि उसको जो है एग्रीकल्चर भी आ रही है, उसको हॉर्टिकल्चर भी आ रही है, उसको फ्लोरिकल्चर भी आ रही है, उसको पोमोलॉजी भी आ रही है, उसको फिशरीज भी आ रही है। हमको तो सब चीजों में जो होगा तभी हम किसान को एडवाइस कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। तो इससे इसकी जो नितांत जो हमको आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली का जो है मल्टी डिसिप्लिन की बात इसीलिए की जा रही है कि धीरे धीरे जो है जो स्पेसिफाइड होते जा रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन की तरफ से ये कुछ फिर मल्टी फैकल्टी या मल्टी डिसिप्लिनरी काम के लिए इसीलिए उस तरफ मानी, तो ये विजन तो उन्हीं का ही है, मोदी जी का ही, कि मल्टी डिसिप्लिन की तरफ हमको आना है। अदरवाइज सब तो अलग अलग बिल्कुल स्पेसिफाइड होते चले जा रहे थे। तो उसमें जो है हमको फोकस करना है कि हमारे जो है आने वाले समय में युवाओं का जो करियर जो किस रूप में हम जो उनका आगे करियर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। करियर, हमारे करियर काउंसलिंग आप कर ही रहे हैं, तो इस करियर काउंसलिंग में आपका मेजर रोल है। करियर काउंसिल में जो आपको ये सब जो बताया, चूंकि बीच में अभी कुछ छात्र आए थे कि बिलासपुर वाली जैसे बोले थे, तो क्या वो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जोड़िए, उन लोग जोड़ने की आवश्यकता है, वहां पर भी बताइए आप। तो कैरियर काउंसिल की, जो कैरियर काउंसलिंग की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब कैरियर काउंसलिंग में हमारे पास स्कोप, बहुत बृहद स्कोप है। तो यही सब चीजें थी। आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय कृषि मंत्री जी ने भी समय दिया था, वो जुड़े भी रहे बात बीच में, उन्होंने पूरा प्रोग्राम मुझे लगता है देखा होगा। हमारे आदरणीय कुलीन साहब ने पूरा समय दिया आपको, हमको उनका मार्गदर्शन भी मिला। हमारे डीडीजी एक्सटेंशन आदरणीय डॉक्टर AK सिंह साहब का भी जो है हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने भी अपना जो मैसेज दिया और हमको जो हम लोगों को प्रेरणा दी। आप सभी लोगों के माध्यम से जो है सभी फैकल्टीज को और सबको प्रेरणा मिली। और जो हमारे यूथ जितने भी एलुमनाई, जैसे आपने बताया एलुमनाई का बिल्कुल होना चाहिए, एलुमनाई मीट का जो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, और जो आपने इतना बढ़िया जो है जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और इधर ऑफलाइन बैठे हुए ऑनलाइन जितने भी छात्र हमारे जुड़े हुए हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं या मिशनरी स्टाफ है, मैं सभी को आज अपने इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग हम सभी लोग मिलकर आपस में एक ऐसे जो है विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे जो आगे चल के, अभी तो 16वें स्थान पर था, 16वें से जो हमारे 10वें मतलब ऊपर आने की कोशिश करें। और अधिक से अधिक जो है हम अपने ऐसे छात्रों को ऐसी शिक्षा दें जिससे जो हमारे छात्र जो है अधिक से अधिक और अच्छी जो पोजीशंस में जाएं, उनको ऐसा जो है ज्ञान दें या ऐसी उनको हम शिक्षा दें। इसी कामना के साथ में आप सभी का पुनः हमारे माननीय मंत्री जी का, आदरणीय कुलीन जी का,
हमारे सभी डायरेक्टर्स का, सिंह साहब का, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर एम पी ठाकुर साहब का, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित कुलपति महोदय, आपने बहुत विस्तार से अपने आज के जो दोनों विषय हैं उनके विषय में अपनी बात रखी और हमारे 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर सारे हमारे प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सभी को आश्वस्त किया कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सब लोग आपकी लीडरशिप में इस विश्वविद्यालय को और ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां तक दूसरे विषय में जो आपने काफी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखी, उसके लिए मैं विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। और आज के हमारे आखिरी वक्ता जो कि हमारे उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.एस. कुरिल साहब को उनके विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। वो संक्षिप्त में कृपया अपने विचार रखें। प्रोफेसर आर.एस. कुरिल साहब। सेकंड का कोई बात तो रिटेनिंग क्या नाम, मोटिवेटिंग, अट्रैक्टिंग काइंड ऑफ आर्यापद। What could I perceive for retaining the youth in rural areas? Number one, I feel we should have a very good mechanized system in the field. Without mechanization, see even in the cold countries, they have air conditioned tractors. Here we are working in 42 degree, 45 degree. It is not possible for the present youths to work in that kind of thing. Number one. And mechanization also, it should be most of the crops are vegetables, horticultural crops, even agricultural crops are being cultivated, are being worked by the women. So we have to develop women friendly equipment. So that is also one thing that third aspect, I feel that this post-harvest management process at cottage industries level need to be developed. And this fourth one is, I feel skill development programs need to be initiated for, like you have mentioned, like this rice flour mills, rice mills, and then that another one, this you have mentioned that beekeeping and poultry farming, particularly that Kadaknath you have mentioned there, mushroom cultivation, mushroom production, mushroom marketing, value addition. So that kind of agricultural oriented entrepreneurial programs need to be promoted for retaining the youths in the rural areas. Other thing that until and unless we will not be able to create the economic models like in diversification or integrated farming system, or in the many farming system, I have seen that duckery, fishery, poultry, simultaneously. Somewhere I have seen that piggery also they have added. So that kind of models which are really economically viable model for the rural use, that can banking collaboration banking system should also come forward. Of course, the NABARD has been created for this purpose, but it has become bankers banking. So ultimately they are depending upon the lead bank, and lead bank are not providing the bank loan to the rural youth. So that kind of facilities are need to be dovetailed and created in collaboration with. We have to provide them a kind of entrepreneurial certificate diploma courses also, and that should be linked with industry. Raw material, of course, it is available, but marketing is to be created. So as BC Saab was mentioning that this need to be linked with the major like organizations like Reliance Group or Amazon or Big Boss, like that kind of organization, that kind of a linkage need to be created by the institutions like universities. So that kind of efforts are, if we could be able to make that, I think we will succeed in retaining the rural youth in the rural areas. Another aspect is also there that the real agriculturists, they don't have land in their hand. Landholders are someone different, and cultivators are somebody else.
So that is also another problem in our country. Unequal distribution of lands, or we have to create that kind of things also. They should be provided some resources to cultivate as well for the processing. Thank you very much, Dr. Saab, again giving me the opportunity for sharing the opinion about the retaining rural youths in the rural areas. And thank you, Dean Saab, also. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request Dr. Thakur sir to kindly give the vote of thanks. सर, आज के इस 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति माननीय सुश्री उइके जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर और हमें जो समय दिया, कुछ कारणवश वो जुड़ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपना संदेश देने का पूरा प्रयास किया था। और आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय कृषि मंत्री, जिनके पास हम कल गए थे, तो उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज जो है हम काफी इंतजार करते रहे। शायद हो सकता है कुछ आवश्यक कार्य आ गया हो जिस कारण वो ज्वाइन ना कर पाए हों। हम दोनों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर उनके संदेश देने के लिए उनके बहुत उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि उनका सहयोग इस विश्वविद्यालय के उत्थान में हमेशा होता रहेगा। इस कार्यक्रम में हमारे कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस सेंगर साहब, जिन्होंने आज सुबह 11 बजे से, मेरे ख्याल से आज 10 बजे से वो जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्यक्रम में थे और अभी 6 बज चुका है। इतने लंबे समय तक एक कुलपति के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। बावजूद इसके उन्होंने आज पूरा दिन इस 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिया। उन्होंने प्रथम सेशन को बड़ी जागरूकता से, बड़ी शालीनता से पूरे लोगों को सुना। दूसरे सेशन में सारे विद्यार्थियों को सुना, कर्मचारियों को सुना, हमारे शिक्षकों को सुना, उनकी समस्याएं जानी और उस पर काफी विस्तार से अपने विचार रखे। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी अपने विचार रखे हैं और जो भी यहाँ डिस्कशन हुआ है दोनों सेशन में, उन डिस्कशंस को प्रोसीडिंग के रूप में और मैं समझता हूँ कि सिफारिश के रूप में संकलित करके और हम निश्चित रूप से माननीय महोदया राज्यपाल को, जो कि कुलाधिपति हैं, उनको और राज्य शासन को देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति सुबह से हमारे बीच, उन्होंने काफी अपना समय दिया और अपनी बात रखी। मैं उन्हें भी तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके उद्बोधन के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सारे डायरेक्टर्स जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, सारे डीन्स, सारे केवीकेस के हेड्स, मैं और हमारे सारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर रूप से जो अपना सहयोग प्रदान किया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर गुड इवनिंग सर। मैं बात बोलना चाहता हूँ।